documentation of gaps in the real scenarios. And it is precisely this intersection of opportunity and complexity that we seek to explore in this conference. We are privileged to have with us today an esteemed panel of scientists, engineers, researchers, industry leaders, and young innovators who will be sharing their insights, experience, and vision for the future of AI in mining. In Indian tradition, we begin every auspicious occasion or ceremony by evoking the blessing of the divine through the lighting of the ceremonial lamp, a symbol of knowledge, enlightenment, and hope. A ray of light is a ray of hope. Light means brightness. It stands for goodness, purity, spirituality, and ultimate reality. The presence of light ensures our success. Lighting a lamp symbolizes the spread of divine grace and the dispelling of darkness. For lighting the lamp, I would request our chief guest, Prof. Arvind Kumar Mishra, sir, escorted by Manish Verma, sir. Our presiding guest, Piyush Narayan Sharma, sir, escorted by MC Tated, sir. Our guest of honor, Deepak Tawaser, escorted by Jai Singh, sir. Professor Sushil Bandari, sir, A.K. Jaiswal, sir, to light the lamp. Thank you, dignitaries, for gracing the occasion and lighting the path ahead. Let the flame of knowledge ignite the ideas, illuminate minds, and guide us toward innovation and excellence in the mining industry. I would request our chief guest, presiding guest, guest of honor, Professor Sushil Bhandari, sir, and A.K. Jaiswal, sir, to grace the dais. Good morning, everyone. As we commence today's program, I would like to request Professor Bhandari sir and Sahiwal sir to felicitate our chief guest, Professor Arvind Kumar Mishra sir, with Safa, shawl, and plant. Professor Bhandari sir and Sahiwal sir.
Thank you, sir. Now I request Rakesh Purohit, sir, and Mahesh Mathur, sir, to felicitate our presiding guest, Engineer Piyush Narayan Sharma, sir. Thank you, sir. Now I request Professor R.P. Chaudhary, sir, and Sehwal, sir, to felicitate our guest of honor, Engineer Deepak Tawaser. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Sushil Bhandari, sir, President of MBM Alumni Association, to kindly come forward and deliver the welcome address. सर आप सबका स्वागत इस प्यारे से शहर में, हमारे कॉलेज में। हम बहुत सारे एलुमनाई यहाँ पर हैं और आप सबका सब मिलके स्वागत करना चाहते हैं। आप बहुत दूर से आए, बहुत लोग दूर से आए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और आप सबका स्वागत। We thought we should have a conference on AI. Everybody talks about this, everybody uses this, and many things are happening without our knowledge. लेकिन माइनिंग में ये बला क्या है अभी पूरी समझ में आई नहीं, और दिस इज द फ्यूचर। Whether we like it or not, like other industries, like other aspects of our life, AI is going to take over. We may like it or not. And it is, many things positive will happen: automation, environment improvement, efficiency, and so on. But we have to be careful in applications, in checking misuse. And we have number of people who are experts in this, who are going to talk about this. We thought we should have some lectures about AI who are not mining people, who have no knowledge of mining, but what AI is. So that is one part. Another objective is that mining industry should know that people are applying so many places in prediction of things, in improving efficiency, in exploring mineral deposits, and so on. So we have to learn from each other. For myself personally, I want to learn what it is. I am a person who started with card punching era and have gradually come to this stage. 1975, I used to punch card and I used to get answer from the computer after 2.5 days. So I used to do finite element, and continuously
all my students have been doing projects on computer software and they are the leaders. Mining graduates are leaders in AI and network security. So, and many are heading big companies in AI and of course, uh, development of software, technology, all are involved. So, AI is not only for mining, it is for all aspects and software development or technology development, all will need. And AI will need sensors, just like Tesla. So our trucks are now collision-less in the mines. Similarly, automatic drill machines, automatic trucks, everything is happening in very few places in India, but extensively abroad for last many years. So that is what we have to learn, we have to use it, and you are coming to a college which is 75 years old and association is 50 years old. And 75 is one thing we always remembered from that time is punctuality. We have started late, so I have to shorten my speech so that rest of the program does not get disturbed so much. This is what when we were students, 8 o'clock gates used to close. And for next generation of alumni, it is surprising, but we are from that Professor Garde, 75 years ago it started and that practice continued for many years, and that is the culture of hard work, sincerity, which is making mining engineers or other engineers successful in life. They are doing very well. Many, Ashwini Vaishnavji is our alumni, and similarly in many fields, people are doing very well, whether it is politics, whether it is industry, whether it's academic, throughout the world. And we meet regularly every 25 years, 50 years, 60 years, and throughout the world, some people are gathering. So Jodhpur has a thing like Apnayat, and MBA has further closeness. Jodhpur has certain feeling. Wherever, if you meet a Jodhpur fellow, we'll just have a friendship. And many things are famous, historical place, खाने की बहुत लजीज चीज़ें आपको मिलेगी. हम कोशिश करेंगे आप सबको कुछ न कुछ स्वाद मिले. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आए लोग, उनके लिए जोधपुर घूमना चाहिए, देखना चाहिए. कल्चर है, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, और इस प्रोग्राम में हमारे विद्यार्थी बहुत सहयोग कर रहे हैं. आप सबको वाइट टी शर्ट में देख रहे हैं, वॉलंटियर्स. दे आर मैनेजिंग थिंग्स फॉर लास्ट सो मेनी डेज. सो आई एम थैंकफुल. एंड मैं अपनी टीम, जो कि एक बड़ी टीम है, हमारी एस्टेब्लिश टीम है, उनकी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ. स्पेशली हमारे डायस पे बैठे हुए विद्वान सज्जनों का, जिनका जो तो होस्ट ही हैं, ये तो कहते हैं हम तो होस्ट हैं. सिर्फ मिश्रा साहब बाहर से हैं, बाकी सब तो होस्ट हैं. सो host come guest, and actually they are leading this conference. अभी आप इनकी विद्वता देखेंगे, सुनेंगे, इन्होंने क्या किया है अपने कार्यकाल में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में. And many, they are classmates, many others are classmates here of their batch. And मेरे तो शायद एक या दो ही हैं यहाँ पर. हम तो वृद्ध, सबसे वृद्ध लोगों में हैं यहाँ पर. फिर भी हम आपका सबका स्वागत करते हैं. एंड होप you will enjoy professionally, and definitely go back and use some knowledge which you are going to acquire. And this has been possible because of all these people who are sponsored. उनके बिना होता नहीं था. और authors, they have traveled,
they have prepared, and thankful to all the authors. Short period की conference थी, लेकिन इतने अच्छे पेपर आए, 40 पेपर्स हैं, and hopefully we'll gain something out of that. फिर सबका आपका स्वागत, और आप दूर से आए, मिश्रा साहब, तंवर साहब, पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत। अब पीयूष कह रहा हूँ यार, मैं कंट्रोलर जनरल कहता है तो मना कर देते, नहीं पीयूष बोलो। अच्छा भाई, हुक्म मानना पड़ता है, छोटों का माननी पड़ती है। तो बहुत बहुत स्वागत, अब स्टेज आप लोगों का है। धन्यवाद। Thank you, sir. Or as may I say, CDS of MBM, as entitled by Deepak, sir. As we move forward, it is my privilege to introduce the distinguished dignitaries gracing this occasion. To begin with, we are honored to have with us the chief guest, Professor Arvind Kumar Mishra, sir. Okay, I would like to introduce our guest of honor, Engineer Deepak Tawaser, who is currently serving as Director, DMG, overseeing state-level mineral administration. With over 30 years of exemplary service in the mining sector, Sir has led significant advancements in mining administration, regulatory compliances, and sustainable practices. As Additional Director of Mines, he has driven key reforms in mineral concessions, environmental governance, and revenue collection, earning recognition for his contribution to Rajasthan's mining sector. Few of his great contributions include 2011's Mineral Policy, authored by Sir, modernization of minor mineral concession rules. Sir recovered 6,000 million in royalty evasion within 10 months and saved 1,600 million by reversing environmental clearance decisions. I request Sir to grace us with his words. मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, मेरे गुरु, मेरे मेंटर प्रोफेसर भंडारी साहब, विभाग में जिनके पद चिन्हों पे मैं चला हूँ, माननीय कोठारी साहब और पटेल साहब जो यहाँ विराजे हुए हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके सिखाने के कारण ही आज मैं आप सब लोगों के सामने मुखातिब हो सकता हूं। आज मुझे बड़े कहते हुए हर्ष का विषय हो रहा है कि जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और एमएई जो राजस्थान चैप्टर है, उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे ये सेमिनार आयोजित करके देश के अंदर जो अलग जगह है, उसके निश्चित परिणाम हमें आने वाले भविष्य में दिखेंगे। ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है और ये इसकी नेसेसिटी है। आज की तारीख में ये किसी ज़माने में जैसे अपन सोचते थे कि कूलर भी एक लग्जरी होता था, आज एसी भी एक नेसेसिटी हो गया है। तो वैसे ही कि वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना हम खनन कार्य करना संभव नहीं है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी आप सारे ही जो आ रहे हैं, हमारे एक से एक विद्वान गण हैं। मैं तो माइनिंग का हूँ और टेक्नोलॉजिकली और आईटी में इतना हस्तक्षेप नहीं रखता हूँ, पर कुछ वर्ड मैंने भी उनसे साथ में रह के सीख लिए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जियो फेंसिंग, जियो रेफरेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, जीपीएस, आरएफआईडी। तो ये क्या है कि ये एक टेक्निकल भाषा है। अपन डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो उनकी भी एक टेक्निकल भाषा है। वो स्टार्टिंग में आरएक्स लिखेगा, फिर 2 टाइम टैबलेट लेंगे बीडी लिख देगा, 1 टाइम है तो ओडी लिख देगा। तो आम जन ये नहीं समझ सकता है। या मुझे पता है कि सारे विद्वान हैं, उनको मुझे इस चीज़ का अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका यूज़ क्या होगा। लेकिन मेरे साथ में भाई लोग और जो दूसरे हैं
जिनको इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं है, उनको मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि उनको एक कॉमन सेंस की भाषा में या एक लेमैन की भाषा में उनको समझाने की प्रयास करूंगा कि ये वास्तव में है क्या। मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार कोई एक बंधु आया मेरे पास, नवयुवक आया, उसने कहा साहब मेरी कोई नौकरी कहीं लगा दो। मैंने कहा भाई तेरा बायोडेटा दे दे, वहाँ अगर मैं कहीं बात करूँगा पोस्ट होगी तो लगा देंगे। बायोडेटा में देखा तो उसकी शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ था MABS। मेरे डिक्शनरी में ये वर्ड मिला नहीं। मैंने गूगल बाबा को पूछा, गूगल बाबा भी हैरान, गूगल बाबा भी नहीं बता सका। हार के मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा भाई ये कौन सी डिग्री करके और कहाँ से करके आए? तो उसने बताया कि साहब मैं MABS मतलब मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। तो वो वाली स्थिति हो रही है। मैं जब गोटन में था तो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे वहाँ पे और बहुत ही विद्वत थे, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ एक कंपाउंडर था, उसका तो क्लिनिक या घर पे जो एक था वो चलता रहता था, और डॉक्टर साहब जो इतने विद्वत थे, जो इतनी एक्सपर्टीज रखते थे, वो खाली बैठे रहते थे। मैंने इसकी थोड़ी खोज की, नहीं था उस समय, तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो मेडिकल के एक्सपर्ट थे, उनकी एथिक्स थी, तो जितनी ज़रूरत थी उतना ही केमिकल या उतने डोज देते थे। तो बीमारी है अपने, जैसे कहते हैं जुकाम, अगर आप टैबलेट लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं लोगे तो 1 वीक में हो जाएगा, तो वही वाली बात है। लेकिन वो कंपाउंडर क्या करता है कि उसको एक प्लेसबो इफेक्ट के हिसाब से डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन ऐसा टेढ़ा लगाता कि उससे दर्द होता। तो जो गांव वाले होते थे गोटन के अंदर, उनको ये लगता है कि यार कंपाउंडर साहब ठीक है, इन्होंने बहुत भारी डोज दिया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो साइकोलॉजिकली ठीक हो जाते थे। तो ये हमारे गॉड साहब है, इनकी डॉटर वो साइकोलॉजी में, वो साइकेट्रिस्ट में कर रही है MD, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये प्लेसबो इफेक्ट है। तो कंप्यूटर क्या है, सिंपली जिसे हम उसको ज्ञान देते हैं वही ज्ञान बाहर आ रहा है। हम जब पढ़ते थे प्रोफेसर भंडारी साहब में, पहला ब्रह्म वाक्य यही होता था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप अंदर डालोगे वही बाहर आएगा। तो कंप्यूटर को अपने को ट्रेंड करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मशीन की या कंप्यूटर की या उनकी नहीं है, ये इंटेलिजेंस अपनी है जिसको अपन ने उस मशीन को समझा दी गई है, और उस मशीन ने उसको समझ लिया, उसको अपन ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका एक नाम दे दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है। तो जो मशीन इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और निर्णय ले सके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन उस मशीन को ट्रेन करने वाले अपन ही हैं। आफ्टर ऑल बुद्धि ह्यूमन की काम में आएगी। अपन ने उसको बहुत सारे सेट ऑफ डेटा दे दिए, उसमें वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो सकता है। जैसे गूगल असिस्टेंट आ गया आजकल, या आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो एप्पल वाला आ गया, तो अपन कहते हैं हे सिरी या हे गूगल व्हाट इज़ द टाइम बाय नाउ, या व्हाट विल बी द वेदर टुमारो। तो वो उसमें करके, क्योंकि उसके पास रिपोजिटरी में इतना डेटा है, वो बता देगा आपको। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है। आपके पास गूगल फोटो में बहुत सारे चेहरे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड के अंदर वो हैं, उसमें प्रोफेसर भंडारी साहब का भी एक चेहरा है। एक फोटो में मैंने देखा भंडारी साहब नहीं दिख रहे हैं, फिर मैंने जूम करके देखा कि इनकी एक आंख और चश्मा देख रहा है, उससे भी उसने पकड़ लिया कि ये प्रोफेसर भंडारी साहब है उस ग्रुप के अंदर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अमेजन की सिफारिश, आप अमेजन पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, सपोज करो आपको ट्रैक सूट ढूंढना है, वो आपको 50 ट्रैक सूट की वो लिस्ट दे देगा कि ये भी है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट हो जाता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। आपने जस्ट डायल पे कोई फ़ोन किया कारपेंटर के लिए, आपके पास 10 फ़ोन आ जाएंगे कारपेंटर के लिए कि सब आपको कारपेंटर की आवश्यकता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। फिर ये गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश में जो करते हो या कोई भी भाषा में, ये भी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अब मैं एक प्लेन उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज करो मेरे घर में कोई एक डोमेस्टिक हेल्प है, और उस डोमेस्टिक हेल्प को ये पता है कि ये अपना वो पता है, उठते ही मेरे को कॉफ़ी चाहिए, इस मात्रा की चाहिए और ये चाहिए, वो कॉफ़ी ले आएगा। ऑफिस जाऊँगा, उसको पता है आज ये कौन सी ड्रेस पहनेंगे, वो ड्रेस ले आए। और अगर बाहर बारिश हो रही है तो वो छाता लेके आ जाए। तो इसका मतलब है कि मेरा वो डोमेस्टिक हेल्प है वो AI ट्रेंड है। अब आ गया मशीन लर्निंग। तो मशीन को कई डेटा अपन
डाल देते हैं, उसमें वेरियस परमुटेशन कम्बिनेशन से वो देख लेता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये हुआ, इस सिचुएशन में ये हुआ। तो एक डेटाओं का जाल है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मशीन को अपने को सिखाना पड़ता है, और उस सिखाने के बाद में वो समझ के उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार वो निर्णय ले लेती है, उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में या सादे शब्दों में समझाऊँ तो एक छोटा बच्चा होता है, अपन ने उसको रोज़ आम खिलाया, 4-5 दिन 7 दिन आम खाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये आम है, अमरूद नहीं है। तो ये इट इज़ एज सिंपल एज लाइक दैट। आपको उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। आपकी जो ईमेल में आती है, स्पैम मेल आती है, आपको पता है, तो वो स्पैम मेल कहाँ से ढूंढता है? किसी ने एक बार लिख दिया उसको कि ये स्पैम है, ये फर्जी है, तो आपके उसमें आ जाएगा ये स्पैम मेल है, आप उसको देखोगे ही नहीं। ये सब मशीन लर्निंग के है। अब आ गए अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको कहते हैं। ये IoT क्या है? शुरू से लेके एंड तक एक जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस है। आपके पास टीवी है, फ्रिज है, लाइटें हैं घर पे, दरवाज़ा है, आप ऑफिस से चले कार में और आपने उन सबको ट्रेंड कर दिया। मोबाइल पे आपने ये कर दिया कि भाई मैं जाऊँ जब मेरा फ्रिज का टेम्परेचर ये मिलना चाहिए, मेरा पंखा और AC ऑन मिलना चाहिए। जो ही मैं जाते ही आपके पास में वो न्यूमेरिकल लॉक होगा, आप उसको लॉक को खोल देंगे, घर में एंटर कर जाएंगे और आपको सारी चीज़ें आपको तैयार मिलेगी। दैट इज़ योर IoT। अब इसको अपन प्रयोग कैसे करेंगे माइनिंग में? इसका प्रयोग अलग है, लेकिन ये एक सीधी भाषा में ये है RFID। अब वर्ड बहुत अच्छा लगता है और सुनने में जो नए कमर्स हैं या जो लेमैन है उनको लगता है कि RFID क्या पता क्या टेक्नोलॉजी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका सिंपली अगर मैं भाषा में कहूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड है। जैसे आपका आधार कार्ड है, उससे आपकी पहचान होती है। आप चाहे एयरपोर्ट पे जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाओ, चाहे और कहीं जाओ, आपको आधार कार्ड, आधार नंबर बताना पड़ेगा। वैसे की वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड है, इसके अंदर चिप लगी हुई होती है। उस चिप को वो कैमरा रीड करके उसकी पूरी जन्मपत्री बता देता है कि भाई ये चीज़ ही है। अगर आपने उसके ट्रक के आगे लगा दिया तो पता चल जाएगा ये ट्रक उसकी है, उस मालिक की है, वहाँ से आई है, मिनरल की भर के आई है, तो कौन से लीज से भर के आई है, ये आ गया। उसको और किसी से जोड़ोगे तो वो उससे आ जाएगा। तो ये RFID हो गया। अब आ गया आपका GPS। तो GPS में अपन पहले तो कंपास से नॉट और वो उसको दिशा देखते थे, लेकिन GPS में अब अपन रोज़ ही गूगल मैप में देख रहे हैं। तो गूगल मैप में आपको देखेंगे कि CNG भरवानी है, नज़दीक में CNG स्टेशन कहाँ है, वो बता देगा आपको 2 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर के लिए जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट ये है, इस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये GPS का कमाल है सारा। तो इट इज़ नथिंग बट ये सैटेलाइट इमेजरी। ऊपर से आपको पूरे पृथ्वी का एक लार्ज स्केल का एरिया दिखेगा, उसके रिजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा। अलग अलग आगे हैं, कार्टोसैट है, 4 है, ये जो भी है। तो उसका जितना आप हाई एंड पे लोगे उसका रिजोल्यूशन क्लियर होगा। आपको नीचे पड़ा एक 20 पैसे का सिक्का भी दिख जाएगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मैंने ये लीज दी है, इसके अंदर इतना तो जंगल है या फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, इतना खातेदारी का लैंड आ रहा है, इतना ये आ रहा है, यहाँ पे आपका मिनरल ऑकरेंस की संभावना है, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ रास्ता है। तो वो एक ब्रॉड पिक्चर दिखाता है। और ड्रोन उसका एक छोटा रूप हो गया। ड्रोन से आप देखेंगे तो एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर करेंगे। जैसे अभी शाम का खाना होगा और ड्रोन उड़ रहा है, तो शादियों में भी आजकल ड्रोन उड़ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि राकेश जी बैठे हैं कि इन्होंने प्लेट में 3 गुलाब जामुन लिए, तो वो ड्रोन कैप्चर कर लेगा। तो वैसे ही ये जस्ट फॉर जॉकिंग, राकेश जी गुलाब जामुन नहीं खाते हैं वो डायबिटीज़ के कारण। तो ये जो कुछ टेक्निक्स थे, अब इनका मेन चीज़ है कि आप इनका माइनिंग के अंदर प्रयोग कैसे करेंगे। तो माइनिंग में इनका प्रयोग एंड टू एंड हो सकता है। माइनिंग कहाँ से चालू होगी? प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग करके आप उसको मिनरल को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसका डिमार्केशन करेंगे। डिमार्केशन करने के बाद आप उसकी लीज देंगे। लीज देने के बाद में उसमें माइनिंग प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के बाद डिस्पैच होगा। अब वो डिस्पैच उसने सही किया या नहीं किया तो वो आप चेक करेंगे। और डिस्पैच के बाद में उसका आप रॉयल्टी असेसमेंट्स करेंगे कि उसने पूरी रॉयल्टी चुकाई या नहीं चुकाई। उसके बाद में आप उसके जो मंथली और एनुअल रिटर्न्स है उनको चेक करेंगे। और जब माइन ख़त्म हो जाएगी तो आप रिक्लेमेशन एंड रिस्टोरेशन में इन टेक्नोलॉजी को काम में लेंगे। तो जैसे प्रोस्पेक्टिंग में है तो सैटेलाइट इमेजरी, उससे बाद में आप जो डेटा आएंगे उनको जियोकेमिकल जियोफिजिकल एनालिसिस करके और 3D मॉडलिंग बना के एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि मिनरल कहाँ पे है। माइनिंग के अंदर
आप मशीन ने काम में लेंगे तो ऑटोमेशन हो जाएगा, और हमारी अगर भाषा में बोले तो हम जियो रेफरेंस कर देंगे, तो उसके अंदर जब तक व्हीकल उस एरिया में नहीं होगा उसका रवाना ही नहीं कटेगा, मतलब रॉयल्टी के पास जो है वो नहीं कटेगा उससे, तो वो हम कर देंगे। उसके बाद में वो चल के आया वे ब्रिज पे, वे ब्रिज में 2 चक्के बाहर निकाल के 2 चक्के अंदर कर दिए, आधा वेट कम कर दिया, गवर्नमेंट को नुकसान दे दिया। तो हम ये चाहेंगे कि उसको ऐसा एआई से बांध दें कि वो जब तक सेंट्रलाइज बिल्कुल पोजीशन नहीं होगा उसका वेट ही नहीं आएगा। तो ये एक सुविधा है। फिर ड्रोन का है, तो ड्रोन में जो बेसलाइन डेटा ले लिया, उसके बाद में उसने कितना वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम की हम गणना कर सकते हैं। फिर प्लांट के अंदर उसने एयर, वाटर, साउंड या आपके सेस्मिक वेव्स के लिए क्या किया है, तो ये सेंसर्स और आईओटी के द्वारा ये पता कर सकता है कि एनवायरनमेंट को इसने कितना प्रदूषित किया या नहीं किया, वो उसके ऊपर चेक लग जाती है। और लास्ट में रिक्लेमेशन एंड रिस्टोरेशन की ओरिजिनल धरती किस शेप में थी, इसको किस शेप में लाया जा सकता है, ये एआई और सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी से अपन करके तय कर सकते हैं। अंत में मैं यहाँ के आयोजकों का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना एक सफल आयोजन किया। और इसमें हर आयोजन में जैसे हमने कहानी पढ़ी है कि कुछ कंगूरे होते हैं, कुछ नींव के पत्थर होते हैं। तो कंगूरे तो दिखते हैं और सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि समय के साथ कंगूरे तो गिर जाते हैं, लेकिन नींव के पत्थर वहीं के वहीं रहते हैं। उसमें सबसे प्रमुख नाम हमारे यहाँ जायसवाल जी का है, हमारे साहिवाल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो भी नींव के पत्थर हैं। मनीष वर्मा जी भी हैं, और भी जो पूरी आयोजन मंडल की टीम है जिनका मैं नाम अभी लूँगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। मैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं, और इतने सफल और बड़े आयोजन के लिए उनको हृदय की अंतरिम गहराइयों से बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I would like to introduce our esteemed presiding guest, Engineer Piyush Narayan Sharma, sir. Sir began his illustrious journey with IBM in 1997, taking charge as Assistant Controller of Mines. Throughout his career, he has demonstrated exceptional technical acumen and strategic foresights, contributing to a wide array of impactful projects at IBM. Some of his noticeable contributions include technical consultancy assignments, the implementation of the Sustainable Development Framework, and initiatives with futuristic visions in the field, such as developing star rating templates, promoting sustainable mining practices, creating user-friendly online portals, designing digital templates for efficient processing of mining plans, etc. As a true mining professional, Sir also conceptualized and championed the integration of space technology in mining. Under his visionary leadership, IBM took a giant leap by partnering with National Remote Sensing Center, Hyderabad, enabling satellite-based monitoring of mining activities. I would request Sir to enlighten us with his gracious words. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन आप सभी का जो आज यहाँ हैं हम सब लोगों के साथ। मेरा सौभाग्य है मंच पर मैं मौजूद हूँ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ में, जिनमें सर्वप्रथम मेरे गुरु माननीय भंडारी साहब, मेरे साथी दीपक तंवर साहब। अभी पिछले कुछ समय में वो टेक्नोक्रेट बहुत अच्छे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ये कहना चाहूँगा एक बड़े अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हुई, मिश्रा साहब। जायसवाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं एक बार पुनः और बार बार लौटना चाहता हूँ उस धरती पर, उस धरा पे, उस माटी पर जहाँ से मैं कभी अंकुरित हुआ था। कुल मिला के यदि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो एक बड़े अलग से अंदाज में मैं चीज़ों की शुरुआत करना चाहूँगा। अब हम आगे की बात करते हैं एआई की। कभी सोचिए अपने बारे में,
हमारी अपनी विरासत के बारे में, हमारी अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी अपनी जीवन शैली के बारे में, हमारी अपनी सोच के बारे में। शायद बहुत कुछ भुला दिया है हमने। मुझे याद है जब मैं कहानियाँ अपने माता पिता से सुना करता था, और विशेष रूप से सभी बच्चों को रामायण सुनाई जाती। कहते थे कि असुरों के पास वो शक्तियां होती थीं कि वो पल में अदृश्य हो जाया करते थे। असुरों के पास में वो शक्तियां होती थी। रावण जब भगवान राम से युद्ध करता था तो अदृश्य हो जाता था, फिर कहीं और से प्रकट होता था। उसके पश्चात बहुत से असुर कई प्रतिरूपों में प्रकट होते थे। बड़ा आश्चर्य लगता था कि कैसी विद्याएं थी, कैसी शक्तियां थी। मैस्मराइज रहते थे। बड़ा रहस्यात्मक था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा क्या कहना चाहिए, अजब अनुभूति के साथ में सुना करते थे। फिर सोचिए, बहुत बाद में साइंटिस्ट हुए जिनको हम आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जब सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज कही कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से तेज चल सकता है तो अदृश्य हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद में जो चीज हमारे यहां होती थी उसको विज्ञान ने सिर्फ साबित किया, प्रतिपादित किया। कभी नहीं सोचा। उस वक्त भगवान राम विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते थे। कोई अग्निबाण था तो कोई ब्रह्मास्त्र था, न जाने कितने तरह के अस्त्र थे। वो एक धनुष के द्वारा उसको लॉन्च किया करते थे। बहुत बरस हुए, अभी हाल में या कुछ बरस पहले हमारी जिंदगी में मिसाइल्स का पदार्पण हुआ। वो मिसाइल ऐसी थी जो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से सटीकता से भेद सकती थी। हमें लगा हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन शायद भूल गए थे कि शब्द भेदी बाण उस समय चलाया करते थे, जो एकूस्टिक्स के साथ में अपने लक्ष्य को हिट किया करते थे। वो क्या था? वो मिसाइल्स थी जो हैंड लॉन्चर्स के साथ में लॉन्च किया जा सकती थी। ऐसी कितनी मिसाइल्स हैं आज की दुनिया में, बहुत कम जिनको हम कंधे से रख के कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद में महाभारत का दौर आया। विभिन्न प्रतिरूपों के अंदर जिस प्रकार से प्रकट होते थे वो क्या था? हम लोग, शायद बहुत से लोगों ने हमारे से यहाँ कॉमिक्स पढ़ी होंगी, जिसके अंदर शायद मैंड्रिक की भी कॉमिक्स हुआ करती थी, जो उसके पिता थेरॉन थे, जो एक साथ कभी जनाडू से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन 20 देशों में एक साथ एक समय में रह सकते थे और बता सकते थे यहाँ क्या चल रहा। वो क्या था? उसको कहते हैं 3D प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन एंटायर बॉडी। अभी हम 2D तक तो पहुँच गए हैं। हम सब लोग मोबाइल लेके घूमते हैं, अमेरिका में बैठा है बच्चा या इंग्लैंड में बैठा है, 2D में तो तुरंत बात कर लेते हैं, 3D भी हो जाएगा। हम उस वक्त जो अदृश्य होते थे और कई रूपों में प्रकट होते थे, वो 3D प्रोजेक्शन ऑफ देयर बॉडीज था, जो हमारे पास उस समय था। भगवान कृष्ण के पास में वो अस्त्र था, वो मदरशिप थी, जो अपना काम करके, आप बोलते हैं ना रीयूजेबल सैटेलाइट व्हीकल्स, कई तरह की थ्योरीज हैं, कई तरह की बात होती हैं। उनके पास एक सुदर्शन चक्र था, जिसके लिए आपको मिसाइल लॉन्चर्स की या किसी बहुत बड़े उसकी आवश्यकता नहीं थी। एक उंगली के साथ रहता था, वो अपना पूरा काम करके वापस उनके पास में आ जाता था। है क्या कोई अस्त्र आज? नहीं है। वो अस्त्र ऐसे थे कि जो पूरा संहार करता था, मगर उसकी तीक्ष्णता, उसकी मारक क्षमता खत्म नहीं होती थी। आखिर कौन सी एनर्जी थी? आखिर कौन सा मेटल था, कौन सा अलॉय था? हम उसकी तलाश में जुटे हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, एनर्जी बेस्ड मटेरियल्स की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। भगवान राम
पुष्पक विमान में आए थे। 7 मंजिलों का पुष्पक विमान था और बिना आवाज के वहां से यहां तक आया था। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? एनर्जी की जरूरत नहीं थी उसके लिए, लेकिन आया था। आज हम बात करते हैं कि हमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, सस्टेनेबल माइनिंग चाहिए, हम लोगों को ऐसे अलॉयज और उनके लिए रिसर्च करनी है जो कि हम लोगों को अनवरत काम में आ सकें। आज हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम लोग बात कर सकें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकें कि हमारे आने से पहले सारी चीज़ें तय हो जाएं। सो परशुराम की वो कौन सी परंपरा थी कि वो भगवान राम के समय भी आए और उसके बाद में भीष्म पितामह के गुरु भी कहलाए? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिन्होंने एजिंग को समाप्त कर दिया था, जिसके लिए आज साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं? लगता है पीछे जाके बहुत कुछ याद करने की या पहचानने की ज़रूरत है। सिर्फ छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस विधा को हम भुला चुके हैं, आज उसी विधा को हम खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं थी, लेकिन भूलने की कीमत बहुत बड़ी चुकाई है हमने। किंतु फिर भी हमारे डीएनएज वही हैं और निश्चित रूप से हमें इन चीज़ों को संवारने में, खोजने में, संभालने में और दुनिया के लिए उपलब्ध कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सो कुल मिला के अगर आप ये कहें कि जिस प्रकार से पांडु का और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, आज बहुत सी चीज़ें आप मेडिसिन में लीजिए, जो हीलिंग होती थी, ये सारी चीज़ें उस समय हमारे यहाँ पे मौजूद थी, इसी धरा पे थी, इसी धरती से उन चीज़ों को प्राप्त किया गया था और पूरी दुनिया के अंदर इन चीज़ों का प्रचार प्रसार और विस्तार हुआ था। इसी प्रकार से आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से फिर से एक बार हमें अपने आप को खोजना है, री इन्वेंट करना है। और जब हम ऐसे किसी प्रकार के सम्मेलन करते हैं, इस प्रकार से एकत्रित होते हैं, तो हम एक और कदम उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ अभी तक हुआ, किया या कहा गया, विशेष रूप से मैं बाकी किसी के लिए नहीं कहता हूं, अपने बारे में कहता हूं। मेरे गुरु यहाँ विद्यमान हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे बहुत से क्लास फेलोज, हम 4 यहाँ पे हैं, छोटे से 21 लोगों में से 4 यहाँ हैं। अनुपम भटनागर है, जगदीश महनोत है, तंवर जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, बैचमेट हैं ये भी हमारे, और जगदीश चंद्र जवाहर। मेरे बहुत से सीनियर यहाँ हैं। माथुर साहब हमेशा मुस्कुराते हैं, बोले तेरे कान खींचूंगा नीचे उतर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, हमारी प्रेरणा रहे हैं। अगर कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है तो लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आई एम एब्सोल्युटली नोबडी। आई एम just a simple person who was nurtured by my gurus, by my seniors, and by the very soil of Rajasthan. Only thing is that I dared to bloom in a full-grown tree because of the great affection and the ashirwads of my own people. I was provided with certain wonderful people, those who joined me. I could find them, I could connect with them, and whatever efforts or value we could add wherever we were, it was done. वो एक कहावत है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं झोंक सकता, बहुत सत्य है। लेकिन एक बात और सत्य है कि अपने सपने संजोए, अपने विश्वास को जगाए और अपनी सद्बुद्धि को साथ लिए अगर आप अकेले भी चलेंगे तो एक एक करके कुछ अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, एक कारवां बनेगा और आप इस तरह बढ़ते रहेंगे। सौभाग्यशाली था कि
कुछ बहुत खूबसूरत लोगों का मुझे साथ मिला, कुछ बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े और मैं उनके सहयोग से इस लायक हुआ कि मैं आप लोगों के सामने अपने आप को रख पाया हूं। मैं आज भी मूल रूप से बीकानेर की धरती पर पैदा हुआ एक टिपिकल सा बीकानेरी हूं। बीकानेर और जोधपुर का बहुत पुराना साथ है हिस्टोरिकली। उस पौधे को वहां से प्रत्यारोपित किया गया यहां, और आज तक इसी प्रकार से अपनी जिंदगी जी रहा हूं और आगे भी जीता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो ये सम्मेलन है, हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि टेक्निकली चीज़ों को अगर मैं बताने जाऊं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको कि इसी तकनीक का सहारा लेके, जो कि इनएविटेबल है हमारी ज़िंदगी में, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और जैसा उन्होंने बताया, मुझे अभी तक याद है कि साफा पहने हुए पुराने बुजुर्ग हमारे यहाँ बीकानेर में ऐसे करके आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे कि आज तो बारिश होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता था, यहाँ पे बादल का एक कतरा नहीं है, बारिश कहाँ से होगी। शाम को बारिश हुआ करती थी अक्सर। तो ये क्या है? कहते हैं अनुभव। अनुभव किससे आता है? जब आप विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को एहसास करते हैं। यानी क्या है? आप डेटा गैदर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एक करके। ये परिस्थिति तो ऐसा हुआ, ये था तो ये हुआ, ये कॉम्प्लेक्स थी, इसमें ये भी हुआ और ये भी हुआ। उन सारी चीज़ों को गैदर करने के बाद में वो खाली इस तरह से एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे। और यही आपकी मशीन लर्निंग है। सेट ऑफ डेटा से वो किसी चीज़ को डिड्यूस करती है, द बेस्ट रिजल्ट को। और इसलिए जब आप किसी से पूछते हैं, हमारे गुरु कहा करते थे, मैं आज भी मानता हूँ, इफ यू वॉन्ट एन आंसर विच यू विश टू, you need to ask a very right question. और यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की। इफ यू नीड अ राइट आंसर, यू नीड टू पुट ए राइट क्वेरी। कुल मिला के सारी चीजें अल्टीमेटली लॉजिकली थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। हाउ लॉजिकली यू कैन बाइंड द एंटायर मैट्रिक्स विच इज अराउंड यू is what the intelligence is all about. Human intelligence and whatever you call artificial intelligence. And yet I do believe human intelligence is always supreme to the artificial intelligence. It is only a subset of our own mindset, which we have created, which we are going to create to quickly dispose of the work without consuming the time and energy, because these two factors are very important. And of course, we should not forget, with the minimum of the expenditure. And these three things are the key for the successful survival of the generations, of the industry, whatsoever industry it is, and our own nation. We are striving to do that. So that is the thing. आप सभी लोग यहाँ आए हैं, प्रबुद्ध लोगों का पुनः आभार, अभिनंदन। और इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ों का सृजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. This was really mesmerizing. Now, this is my immense pleasure to introduce our Honorable Chief Guest, Professor Arvind Kumar Mishra, sir, who is currently serving as the Director of SIMFA. With a remarkable career spanning over 30 years, he has contributed across academia at IIT Dhanbad, industry through Coal India, and research leadership at premier institutions. He is noted expert in open cast as well as underground mining, drilling and blasting, rock mechanics, tunnel engineering, and geotechnology. He has played a pivotal role in the adoption of electronic detonators, multi-strata blasting, and controlled blasting technologies in Indian mines. With over 200 research publications, his contribution to mining safety and environmental sustainability are both impactful and widely acknowledged. In recognition of his outstanding work,
He has been honored with the National Geoscience Award. He also serves as a strategic advisor to the several government bodies under the Ministry of Coal Mines and Science, influencing the key national policies. A true champion of sustainable and safer mining practices, he continues to lead innovation at the intersection of research, technology, and policies. थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। जो ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं सोच रहा था मेरे बारे में कह रहे हैं या किसी और के बारे में। मंचासीन अति विशिष्ट अतिथि, हमारे लिए अतिथि हैं सभी, और गुरु प्रोफेसर भंडारी जी। प्रोफेसर भंडारी साहब जो हैं वो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई वो NIT रायपुर से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स एंड PhD IIT ISM धनबाद से किया। परंतु जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था IIT ISM धनबाद में, और मैं अपनी PhD ब्लास्टिंग के ऊपर कर रहा था, तो उनका मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, जो कई बार उनसे थीसिस में किस दिशा में जाना है इस बारे में, और उसके बाद अनेक ओकेशंस रहे जहां उन्होंने मुझे गाइड किया है। चूँकि उन्होंने मुझे गाइड किया तो उनका गुरु का स्थान है मेरे लिए। श्री दीपक तनवर जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मोस्ट रेस्पेक्टेड कंट्रोलर जनरल, Indian Bureau of Mines, Government of India, the regulator to whom everybody, the whole industry seeks in help, as well as Government of India time to time when they do come up with the policy framework. ये मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ कल कुछ पल बिताने का मौका मिला, and he is one of the finest gentlemen I had ever known. और श्री जायसवाल साहब तथा इस सभागार में उपस्थित सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डॉक्टर राजमणि जी हैं, और मैं सभी को नहीं जानता हूँ, आई एम सॉरी। और दो हमारे सुपर एनवेटेड साथी हैं यहाँ, डॉक्टर झंवर जी और डॉक्टर महनोत। ये हमारी ही संस्थान में एज चीफ साइंटिस्ट थे और अभी यहाँ पर हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड एकेडमिशियंस, फैकल्टी मेंबर्स, respected and distinguished industry leaders, and regulators, researchers, research scholars, students, and friends from press and media. आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार, अभिनंदन, आभार, बहुत आभार जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। आई एम deeply honored and privileged to be part of this function. इस गैदरिंग में जो कल कुछ मुलाकात हुई, I could understand the kind of expertise do exist in here. This is first time I have ever come to Jodhpur. So the first feeling was it's really, really great. And when we look at Rajasthan, so far as mining industry is concerned, the second largest mineral producing state, and its contribution to the country, as we all know, the contribution of mining or mineral industry as to the overall GDP of the country is marginally 2.5%, overall GDP when we look up. But when we look up the downstream processes, we cannot think of the energy sector, we cannot think of agriculture, we cannot think of steel, we cannot think of automobile, we cannot think of transports, logistics. So none of the industry can survive without mining industry, and that is the kind of contribution wherein Rajasthan alone has a major role it is playing in. And MBM College, as Professor Bandari sir was talking about, 75 years they have completed. So 75 long years in the service of the nation.
wherein the stalwarts have been produced like Professor Bandari and others. Professor Tatia was also from Jodhpur. So there are number of stalwarts who have been produced from MBM College, from the soil of Rajasthan. And the topic which has been picked up, which is applications, promises and challenges of artificial intelligence in mining industry. In fact, elaborately, it has been discussed by other speakers regarding artificial intelligence and machine learning, which is a buzzword. And another one is generative AI, which has also come up nowadays. Everybody listens, hears about it. This is the most pivotal moment for the mining industry because a lot of changes are happening in the mining industry. And mining industry per se is very, very capital intensive, as well as highly risky industry. Risk in terms of its profit, its sustainability, and other issues in terms of this is the industry which is the most lavish, this is the industry which experience most taxes by different agencies. So tax regimes, taxes are there. You have to operate against Mother Nature, whether you are doing open cut mining, underground mining, whatsoever it may be, or solution mining, you are working against Mother Nature. So a lot of uncertainty is there, as well as risk is involved. So when we look up artificial intelligence, before further getting in, like जब UPI आया था, जब हम लोग फोन पे या पेटीएम और व्हाट्सएवर इट मे बी, तब लोग जेब में कैश लेकर जाते थे, कैश से ही सामान खरीदते थे. उसके बाद जब UPI आया तो लोगों में थोड़ी सी झिझक थी कि क्या हम इसको यूज़ करें या ना करें, क्योंकि उसके साथ में फ्रॉडलेंट्स, एज सुन एज एनी टेक्नोलॉजी कम्स अप इमीडिएटली the negative forces also come up and they do try to use it to exploit you. And that is true for all the technologies. But आज UPI, without UPI, you cannot think of. That is what is the scenario. If you are, आप यदि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं और आपका एक शहर से दूसरे शहर, यदि आप एक रिमोट विलेज में हैं, प्रोबेबली यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर communities or societies, probably you may survive, otherwise it is impossible. Similarly, अब AI जो है, वैसे ही जैसे हम लोग अभी स्टेज पर बैठे हुए थे और यहाँ पर जब कोई कह रहा था तो आपका मोबाइल, there are Google Assistant is there, Gemini is there, Siri is there. There are so many Google assistants available on your app, on your mobile. वो जैसे ही सुन लेती है या सुन लेता है, वो immediately respond करता. So that is one application of AI. Another very simple example, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप Google Map ऑन किए हुए हैं या Apple Map, either one, आपको immediately पहले से अलर्ट आ जाता है कि सामने में रेड कलर आ जाता है या येलो कलर, आप जान जाते हैं कि सामने में जाम है. दिस रोड इज जैम एंड यू नीड टू टेक एन अनदर रूट. इट ट्राइज टू फाइंड आउट, एक अल्टरनेट रूट बता देता है विद द एप्लीकेशन ऑफ AI, एंड इट इज़ कंटिन्यूस ऑनलाइन मोड इट इज़ डूइंग. चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए एक आप सभी को पता है कि ये गूगल मैप जो हम बात कर रहे हैं और उसमें AI का जो इन्फ्लुएंस है, गूगल मैप की इजाद कैसे हुई थी और इसका इनोवेशन कैसे हुआ था, आप सभी जानते हैं कि सुंदर पिचाई. दिस इज मोर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स हियर, दोज हु आर सिटिंग इन हियर.
सुंदर पिचाई वॉज बीइंग आस्क्ड इन बाय अंजलि पिचाई, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने एक डिनर होस्ट किया। उस समय वो यूएस में थे, ही डिड हिज मास्टर्स एंड आफ्टर दैट ही वाज इन यूएस एंड दे हैड स्टार्टेड ए स्टार्टअप। और शी टोल्ड दैट इस फला फला जगह पर, स्थान पर डिनर होस्ट किया है और आपको समय से पहुंच जाना है। एंड ही एश्योर्ड, डेफिनेटली आई विल बी देयर, you need not to bother, I have got some work in my office, let me complete my office work and you please go ahead and I will be joining you for the dinner. अब वो गए वहाँ, it was a new place and he tried to look up, and in US जोधपुर में यदि आपको कहीं जाना हो और आपके पास कोई ऐप नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, किसी सज्जन से आप पूछ लीजिए कि साहब मुझे फला फला जगह जाना है, वो आपको उस घर तक छोड़ कर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएस में वैसी कोई व्यवस्था है नहीं। यूएस में इंसान दिख जा, उस वक्त रोड पर इंसान भी नहीं दिखते थे, कुछ दिख जाए वो भी बड़ी बात है। एंड इफ़ यू आस्क इन प्रोबेबली नोबडी विल लेट यू नो। तो वो बहुत देर तक ढूंढे ढांडे, लेकिन उनको डिनर का वेन्यू नहीं मिला सुंदर पिचाई जी को, and he missed the dinner. He could not reach to the dinner. When he reached finally, by that time everybody had left. कोई नहीं था। उन्होंने डिनर होस्ट किया, वहाँ पर कोई नहीं था, उनकी वाइफ थी। उन्होंने उनको बुरा भला कहा, जो भी कहा, चूँकि आप सभी जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी एक सजेशन दिया कि तुम लोग जब ये काम कर रहे हो, स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, why don't you think of something, a technology which will provide solution to the common person like you. Then he started thinking about that we should have something wherein a map, a digital map, online and on real time, मतलब जिस मूवमेंट में है आप उसी मूवमेंट में वो मैप अपडेट होना चाहिए। जैसे आप जब आप गूगल मैप यूज़ करते हैं आज की डेट में, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो किस स्पीड से जा रहे हैं यू कैन सी ऑन इट। सो इट्स अ रियल, यू नो, ऑन रियल। सो रियल में वो आप कैसे दिखे वो भी होना चाहिए। सो उन्होंने उन लोग अपने फिनेंसर, उनके पास उतना पैसा नहीं था, स्टार्टअप कंपनी थी। दे इनिशियली वेंट टू द फिनेंसर सेड ये क्या फालतू बात कर रहे हो यार, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, why do you require this, and this happened with you only once, so why do you require this? Finally they kept on, again and again they kept on persisting on that particular project, and finally it was approved in 2005, not very long back, 2005 की बात है, जब इसमें बोले ठीक है साहब ये किया जाए। अब आज के समय में सोचिए, क्या हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है? पहले ज़रूर थी, आज से 10 साल पहले जो यहाँ पर ड्राइवर्स होंगे या जहाँ के लोग होंगे, यहाँ के जो एलुमनाई है, वो यहाँ के हर एक कोने को जानते होंगे, हर एक सड़क को जानते होंगे, यहाँ की बात होगी। बट यदि वो उनको भेज दिया जाए दिल्ली तो वहाँ तो नहीं जानेंगे। सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ विदाउट गूगल मैप यू विल बी ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री और इन वर्ल्ड, जब आप विदेश में भी जानते हैं गूगल मैप कितना यूजफुल होता है। वेरी रिसेंटली लास्ट वीक ओनली आई वॉज इन उज़्बेकिस्तान, आई एम ए वेजिटेरियन, और उज़्बेकिस्तान में वेजिटेरियन मिलता नहीं है। आज आई वॉज एट ताशकंद, तो गूगल मैप में केवल इतना सर्च किया कि वेजिटेरियन इंडियन खाना कहाँ मिलेगा, और उसने लोकेट किया, वहाँ पहुँचे, वहाँ इंडियन कोई नहीं था, जो सर्व करने वाला था वो भी उज़्बेकी था, खाना बनाने वाला भी उज़्बेकी था, बट शुद्ध वेजिटेरियन भोजन मिला और इंडिया जैसे ही था, एकदम स्वाद। सो दैट इज द एप्लीकेशन। सो AI, व्हेन वी टॉक अबाउट AI, सिमिलरली जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन में हम सभी जानते हैं जियोफिजिकल प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं, बट एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ी जो समस्या है आज की डेट में कि इन्वेजिव एक्सप्लोरेशन, जहाँ हम ड्रिलिंग करते हैं, द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग इज़ टू एक्सपेंसिव,
एंड द मेटलीफेरस सेक्टर पर्टिकुलरली, कोल में तो फिर भी है कि हमको पता है कि कोल सीम कंटिन्यूटी है, वी नो द स्ट्राइक, वी नो द डिप, एंड समटाइम्स कोल में एक ही इशू आता है, माइनर फॉल्ट्स, मेजर फॉल्ट्स, मेजर फॉल्ट्स फिर भी पता चल जाते हैं, माइनर फॉल्ट्स बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. But in metalliferous deposit, like in uranium deposit at UCIL or any other deposit, even gold deposit, lead zinc deposit, so the deposit, the way it behaves, you do not know. And at the time of exploration, when you are preparing the geological report, because जब आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको इन एडवांस यू शुड नो कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ इन्वेस्टिंग है भी या नहीं. सो हम जो पहले था, जैसा कि साहब ने बताया, पीयूष साहब ने, कि पहले जो डाटा था वो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड था, कि साहब हवा की आर्द्रता क्या होगी, उसका रुख क्या होगा, और ऊपर देखकर वो बता देते थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. दैट वाज प्योरली पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड, ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस्ड. But unfortunately, sometimes it may so happen कि वो जो सज्जन हैं जिनके पास वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनकी तबीयत खराब होगी तो फिर आपको कौन बताएगा. Similarly, so it was purely personal experience based. और आप क्या कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी. So AI, जहाँ पर AI application based, it is also based on the data which has been gathered in. और अब जो generative AI हुआ है, उसमें एक तो है, हमने एक algorithm develop किया जो based on the data which we acquired in, and then with the data which is available on the internet. अभी जो एक्सप्लोरेशन में इसलिए क्या है कि जो हमारा इंट्यूशन यूज होता है, एक एक्सपीरियंस है, दूसरा है इंट्यूशन. इंट्यूशन इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट आस्पेक्ट. तो हमारा इंट्यूशन कहता है कि साहब यहाँ मिनरल होना चाहिए, डिपॉजिट. आप लोग गांव में भी सुनते होंगे, देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं वो जाके बता देते हैं साहब यहाँ ड्रिलिंग करने से पानी मिलेगा. सो इंट्यूशन इज अनदर आस्पेक्ट. एंड आप एक जगह का एक्सपीरियंस जो है, मान लीजिए जोधपुर में जिनको पर्सनल एक्सपीरियंस है और इंट्यूशन है, उनको यदि दिल्ली में बैठा दिया जाए या कानपुर में, तो प्रोबेबली उनका प्रेडिक्शन may not be matching. So AI that way becomes very helpful. जहाँ irregular deposit है और हमको predict करना है. So in exploration, the that identification of the ore becomes very, very helpful by using the AI. So there it becomes very useful tool. Without invasive exploration, you can get in. That is how the research is going on. अब exploration, जैसे अभी recently young, चूँकि यहाँ students हैं, they can correlate. हमारे जैसे लोग शायद मूवी के लिए मूवी देखते ना हो, इंटरेस्ट ना हो, या समय ना मिलता हो, दोनों हो सकता है. बट अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 2023 में, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, एंड 2025 में फाइनल रेकनिंग, मिशन इम्पॉसिबल. आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, यंग स्टूडेंट्स तो पक्का देखे होंगे, टॉम क्रूज की. उस मूवी में दिखाया गया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो रशियंस ने बनाया, सेवास्तोपोल, एंड वो एक सबमरीन में है, एंड देन इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग एवरीथिंग. इट इज़ ए फिक्शियस मूवी. ये है उसका थ्रेट और रिस्क. जो एआई है, हम लोग बाद में बात करेंगे, एआई का बहुत हाई पोटेंशियल है, बट उसके साथ में एथिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो इट कैन बी वेरी वेरी डिसास्ट्रस एंड डेंजरस. एक वो तो मूवी थी, चूंकि फिक्सियस था, बट इन रियल सेंस आप ये समझिए कि जो शायद दीपक साहब ने बोला था, जो फेस रिकग्निशन है, somebody told about it, कि आप जो फोटोग्राफ खींचते हैं ना,
और उसमें AI एप्लीकेशन से, जैसे एप्पल में है, एप्पल का तो मुझे पता है, एंड्रॉयड में भी ज़रूर होगा, कि आप जितने भी फ़ोटो खींचते हैं वो किस लोकेशन पे का है, किस जगह पे खींचा गया है, और उस फ्रेम में कौन कौन प्रोमिनेंट पीपल हैं उनके फ़ोटो के साथ में दे देता है। नाम आपको डालना पड़ेगा बट फ़ोटो के साथ में वो आ जाता है। आप क्लिक करिएगा तो जितने भी फोटोग्राफ हैं आपके पास, 5,000 10,000 फोटोग्राफ्स हैं, उसमें यदि उन सज्जन का अपीयरेंस है कहीं पर भी, वो एक साथ कोलेट करके दे देता है। ये सबके मोबाइल में है आज की डेट में। तो इसका मिसयूज जो हो सकता है, पर्टिकुलरली इन डिफेंस, इट कैन बी वेरी डेडली यूज्ड। आप छोटा सा माइक्रो रोबोटिक्स भी बहुत एडवांस लेवल में चले गया है। माइक्रो रोबोटिक्स, ये रिस्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्क एंड थ्रेट, उसको यदि हमने आइडेंटिफाई कर लिया और वॉइस दे दिया, विद वॉइस कमांड भी होता है। सो विथ वॉइस और विद द फेस रिकग्निशन एंड ए स्वार्म ऑफ दिस माइक्रो रोबोट्स, कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए 1 मिलियन रोबोट, इट्स नथिंग, सो स्मॉल नंबर, आई मीन नंबर इज लार्ज बट क्वांटिटी विल बी टू स्मॉल। मक्खी की तरह वो घूम रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो रोबोट है कि वास्तव में मक्खी है, और उसमें करना कुछ नहीं है। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर एक्सप्लोजिव और हाई स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव, वो आपने आइडेंटिफाई करिए कि वो 1 मिलियन कौन लोग होंगे। If you have fed in the data, और it will sit on your skull, सिर के ऊपर बैठा मक्खी बैठी, आपको क्या पता, and it explodes, you are dead. So 1 million people die fraction of seconds, जैसे कि अभी इजराइल में, फिलिस्तीन में हुआ था ना इजरायली पेजर्स से। So इसके थ्रेट्स भी बहुत हैं, बट इसके साथ में इसका पोटेंशियल बहुत हाई है, और यदि हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। एज ए कंट्री वी हैव टू कम अप and we have to be abreast with technology in all aspects so that we can compete with the world. And as we 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 4थी पे पहुंच गए हैं, हमको 3री पर पहुंचना है। By 2030 we have certain targets, by 2047 we have certain targets, by 2050 we have got target, by 2070 we have got certain targets. तो वो जो टारगेट्स हम लोगों ने एज देश, एज ए कंट्री जो हमने एनविजन किया है, उसको अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकली हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे और हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसमें एज इंडस्ट्री, एज एकेडमिक इंस्टीट्यूट, एज स्टूडेंट्स, एज फैकल्टी मेंबर्स, एज पॉलिसी मेकर्स, एवरीबडी हैज़ टू कम फॉरवर्ड। सो हम बात कर रहे थे एक्सप्लोरेशन की। मान लीजिए ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जब हम उसके बाद जब ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ड्रिलिंग में आपको डाटा, इफ़ यू कैन एक्वायर इन डाटा कंटिन्यूसली विच इज़ ऑलरेडी देयर, मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग इज ए टेक्नोलॉजी, भंडारी साहब जो कई बार बता चुके हैं, बोलते हैं हमेशा। सो यू आर एक्वायरिंग द डेटा एंड यू नो व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द स्ट्राटा। छोटे डिपॉजिट में, स्मॉलर बेंचेस में इट्स नॉट बिग डील, बट फॉर द डीपर एंड द प्रीशियस मेटल, लाइक गोल्ड माइन में आप जब कर रहे हैं, लेड जिंक, जहाँ पर सिल्वर है, जहाँ पर वैल्यू ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई। सो आप यदि जानते हैं कि पूरा प्रोफाइल आपका बेस्ड ऑन द डाटा विच यू हैव एक्वायर्ड इन, इट विल लेट यू नो कि दिस इज व्हाट इज द स्ट्राटा, हाई ये स्ट्राटा बिलोंग्स टू दिस। सो इट विल प्रोफाइल द होल बोर होल, ब्लास्ट होल, एंड बेस्ड ऑन द डाटा एक्वायर्ड, अब आपके पास में एक्सप्लोजिव्स भी ऐसे आ गए हैं जो आप टेलरिंग कर सकते हैं ऑटोमेटेड मोड में, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल राइट नाउ। और आप उतना ही एनर्जी दीजिएगा जितनी आपको आवश्यकता है उस स्ट्राटा के लिए। सो दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ AI यूजिंग ऑल अदर, प्रीवियसली व्हाट वी हैड IoT, नाउ इट इज मूविंग टू AI ऑटोनोमसली, और इट विल बी डिसाइडिंग ऑफ इट्स ओन। फिर आपको माइन में किस डंप ट्रक को किस एक्सकेवेटर के पास जाना है, द फ्लीट मैनेजमेंट, you need not to intervene. The cut-off grade control, and while getting the data itself, you know what grade will be available. And
while blasting also you can design in for underground, like what will be the dilution. यदि dilution मान लीजिए आपका 5% है या 10% है, its influence on the concentrate, the cost which you get in is humongous. It's very large. So AI application in mining, globally it is happening, and in India also it has started happening. And the small operators need to adopt. They have already started adopting in isolation, in island forms. कि एक particular operation को in an island or in a silo, they have automated, they have developed, then not necessarily the other is required to be automated. And complete automation probably, is a problem because हमको employment भी देना है. जैसे अभी recently हम एक function में थे, वहाँ पर political party के एक सज्जन थे, तो उनका कहना था, साहब ये जो सोलर प्लांट लग रहे हैं बहुत अच्छे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है बहुत अच्छी है, बट वहाँ एम्प्लॉयमेंट कहाँ है. थर्मल पावर प्लांट में इतना एम्प्लॉयमेंट होता है, बट इट नीड टू बी बैलेंस्ड, इट नीड टू गो इन बैलेंस, हैंड इन हैंड. एंड मतलब हम चूंकि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, अब समय भी हो रहा होगा. इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइनिंग, AI, ML एंड जनरेटिव AI जिसमें ये खुद से मॉडल एक्वायर करके डाटा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है. इट डजेंट रिक्वायर द इन्वेंटर टू इंटरवीन एंड लेट इट नो. सो वो अपने से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है. जैसे हम इम्प्रूव करते हैं, आम इंसान इम्प्रूव करता है, जैसे उसको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो खुद इम्प्रूव करने लगता है. उसी तरह से वो मॉडल खुद से अपने आप को जब ट्रेन करके इम्प्रूव करने लगता है, तब आपके कंट्रोल के बाहर. सो जो वो मूवीज़ हम जो बात कर रहे थे वो उसमें दिखाया गया है. एंड द मेजर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ, अच्छा और एक चीज़ है, इन सस्टेन, जब हम आप रिक्लेमिनेशन की बात करते हैं या माइन क्लोजर की बात करते हैं, तो उस जगह पर नेटिव माइक्रोब क्या है और वो नेटिव माइक्रोब का इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेटिव स्पीसीज, और उसका हम जब डाटा बैंक करके AI एप्लीकेशन करेंगे, तो हम एक तो होगा कि उसका कल्चर करना और उसका एप्लीकेशन करना, और दूसरा एस्पेक्ट है विद द एप्लीकेशन ऑफ AI, हाउ कैन वी इम्प्रूव द एफॉरेस्टेशन ऑन द डिग्रेडेड लैंड. वो भी एक एप्लीकेशन आज की डेट में आ गया है. सो सस्टेनेबिलिटी, कंप्लीट चैन from prospecting to the final closure, the AI is being used globally, and in India also we have started using it. And there is no way we can say कि साहब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप नहीं करिएगा तो पिछड़ जाइएगा, वो भी एक समस्या है. बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो उसमें भी मेंशन्ड है. प्रॉमिसेस तो हैं, challenges, the major challenge is you need to have a very strong digital infrastructure. डाटा इनफ्लो है, डिजिटल फॉर्मेट में है. यदि आपके पास में, यदि कहीं चले जाइए, आपके पास मोबाइल में ऐप है, सब कुछ है, बट डाटा वहाँ पर नहीं मिल, मतलब कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो आपका कोई ऐप चलेगा नहीं. सिमिलरली, इफ यू डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क, then it will not function. And for creating that, it's capital intensive. Lot of capital is required to be infused in. But at the same time, the skill need to be developed. आपने capital भी infuse कर दिया, skill development जो उनको operate करेंगे उसके लिए हमको चाहिए, तो academic institutions will come into picture. और एक बहुत बड़ा sorry, जो समस्या है वो है a threat of unemployment. भाई यदि complete autonomous mine हो गई तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? So these are few challenges which need to be addressed. And another is cyber security, cyber attacks. Cyber attack हमारे देश में per week लगभग 4000 अटैक होते हैं on major installments, on all government institutions. मुझे पक्का
IBM के ऊपर होता होगा, CSIR में होता है, मिनिस्ट्री में होती है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, मेजर हमारे इंस्टॉलेशंस है, एवरी वीक वी गेट इन सो मेनी cyber attacks by the neighboring countries. I don't want to name anyone. अब जब आप AI एप्लीकेशन पे चले गए तो आपको साइबर सिक्योरिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच नीड टू बी लुक डाउन. सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस. तो ये मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा MEI का, राजस्थान चैप्टर का और MBM कॉलेज अलुमनाई एसोसिएशन का, जो उन्होंने इतना पर्टिनेंट टॉपिक चूज़ किया है जो माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और यहाँ पर सभी एकेडमिशियंस, सभी रिसर्चर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टॉलवर्ड्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस and the students who are the future is everyone, all stakeholders are involved in. जहाँ 2 दिन के लिए इस विषय पर चर्चा होगी और इन चर्चा के बाद में जहाँ अलग अलग केस स्टडीज़ के बारे में बातें होंगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस विषय में बातचीत होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है. सो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा. आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हैं और मुझे आमंत्रित किया गया. आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir, for sharing your perspective. We deeply appreciate your presence and your encouraging words. We extend our deepest gratitude to our esteemed mining engineers, Shri S.S. Patel sir, Professor P.C. Purohit sir, Shri P.R. Dave sir, Shri S.P. Goyal sir, Professor Sushil Bhandari sir, for 75 plus years of unwavering commitment and passion for the field of mining. Your tireless efforts, innovative spirit, and pursuit of safety has shaped the industry-driven progress and ensured the well-being of countless communities. Thank you for your incredible service and contribution to the mining. May we kindly request you all to join on the dais. S.S. Patel, sir. Professor P.C. Purohit, sir. Shri P.R. Dave, sir. I would request Shri Arun Kothari, sir, previous National President, MEAI, and Professor S.S. Stark, sir, to present our honorable mining engineers with a small token of our gratitude for their exemplary services. Shri Sharan Bihari, sir, please come to the dais. S.S. Dhariwal, sir. Sorry, P.C. Dhariwal, sir.
इसको आगे करो पहले, थोड़ी सीढ़ी नहीं है। अच्छा, एक सेकंड छोड़ो, एक सेकंड में सोलर का भी करा लो, उसके लिए बाद में टाइम लगेगा। अरे नहीं, आप करो, ये करते पहले Now we have our souvenir presentation. Unfurling of the souvenir by our dignitaries. Sir, most welcome. We are sorry the physical mode of the souvenir could not be ready, but still, due to voluminous contents of the souvenir, we are unfurled today by the dignitaries. The work behind this souvenir, Manish Verma ji, Rakesh Purohit ji, they work very hard, and technical support by Professor Bandari sahab, Rajneesh Purohit ji, Dr. Rajmani ji. We are all thankful to them. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. P.C. Purohit, sir, to present the memento to our chief guest.
Now I request P.R. Tawaser to present the memento to our guest of honor. I request Vipul Kocha sir to present the memento to presiding guest. खम्मागणी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सूर्य नगरी जोधपुर में आपका तहे दिल से स्वागत। ऑन बिहाफ ऑफ माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान जोधपुर चैप्टर and MBM Engineering College and University Alumni Association, it is my honor and privilege to give a vote of thanks on the inaugural ceremony of this national conference on the theme which holds great significance for the future of the mining industries. Sir, I am very thankful to the dais, dignitaries on the dais, Engineer Deepak Sharma साहब, Deepak तमर साहब, sorry, दोनों मिक्स हो गए सर 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 Deepak Tamar Saab, Director DMG. We are grateful to him and his team. Throughout the Rajasthan, they have given the full support to the organizing this event in the befitted manner, sir. Without his support, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं शायद पॉसिबल नहीं होता जिस रूप में हम यहाँ पर हैं। हम तहे दिल से तंवर साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम बहुत शुक्रगुजार है। साधुवाद तंवर साहब। पीयूष शर्मा साहब जो हर दिल अजीज हैं, बहुत सुंदर उन्होंने अपने उद्गार इस सभा में व्यक्त किए हैं। माइनिंग इंजीनियर तो बहुत टेक्निकली वेरी साउंड है ही हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन्होंने काफ़ी आयाम IBM के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में माइनिंग सेक्टर के लिए जो किए हैं, वो आने वाले समय में और भी बेटरमेंट होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार। ये नागपुर से चलकर यहाँ पधारे हैं, लंबी जर्नी करके आए हैं, हम सभी इनके कृतज्ञ हैं। CMFIR के डायरेक्टर साहब AK मिश्रा साहब, डॉक्टर AK मिश्रा साहब, तहे दिल से इनका आभार। धनबाद से ये पधारे हैं और प्रोफेसर भंडारी साहब के एक बुलावे पर यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार सर। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट के रूप में आपने इस समारोह के 4 चांद लगा दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायस के सामने विराजमान सभी उपस्थितिगण, डेलीगेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन का, जिन्होंने इस इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड करके और यादगार बना दिया है।
ख़ास तौर से जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने दिल से इसको सफल बनाने के लिए सहयोग दिया है, उसमें जोधपुर डीएमजी के सभी पदाधिकारी, इंजीनियर्स, आरएसएमएम और फैगमिल की टीम, इन्होंने दिन रात एक करके इसको सफल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। उनका साधुवाद। बाहर से पधारे हुए स्पीकर और ऑथर्स जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको हम ऑनलाइन हाइब्रिड मोड पे आने वाले टेक्निकल सेशंस में प्रेजेंट करेंगे और उनको सुनने का आप सभी को मौका मिलेगा। उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डेलीगेट्स और स्पॉन्सर्स जो आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर की, इन सब का तहे दिल से आभार, क्योंकि धन के अभाव में किसी भी आयोजन को सफल बनाने में बड़ा परिश्रम लगता है, इसलिए इनका तहे दिल से आभार। इससे साथ ही उपस्थित हमारे एमईआई और एमबीएम के जो भी मेंटर्स आए हुए हैं और यहाँ उपस्थित होकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, उन सभी का तहे दिल से आभार, उनका साधुवाद। और डेलीगेट्स एंड एमबीएम माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स जो दिन रात एक करके एक आवाज़ में आगे आके उन्होंने परिश्रम करके इसको सफल बनाने के लिए कोशिश की है, जिसका परिणाम आने वाले 2 दिन में आप देखेंगे और आप निश्चित रूप से यहाँ से सुखद यादें लेके जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अंत में मैं ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं कर, मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद कहते हुए हाई टी के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। Request everyone to please reassemble by 15 minutes. नहीं, शाम को देंगे ना तंवर साहब का मेटल वाला, कल मेटल देंगे ना, तो उनको चेंज करा दो, मेटल वाला तो 3 लाएंगे ना, अपन इनको चेंज कर देंगे, खाली अभी मेटल वाला दे देंगे। इतना सिस्टमेटिक ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, अभी वो मेटल वाला चेंज कर दूँगा। नहीं यार, वो लिखने की गलती है। अरे नहीं लिखने की भी नहीं है, एक प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, उसमें भी वो लिखा हुआ है। All those who have not registered yet,
And I'm sure we all will be enlightened by their expertise. We have four keynote speakers in the session. Professor Arvind Mishra, Director CSIR, CIMFR Dhanbad. Okay. Application of large scale, large database AI ML tools for solving practical problems of the mining industries. Then we have Deepak Tamar, Director Mines, DMG Rajasthan, who will be giving keynote address on harnessing artificial intelligence for mine surveillance applications, promises and challenges.
and Piyush Narayan, Controller General, Indian Bureau of Mines, GL Nagpur, on AI and IoT in mining sector, and Professor Sushil Bandari, sir, Dean, former Dean, MBM Engineering College, and the President, MBM Alumni Association. Though order given is starting with Professor Arvind Mishra, but I have been told that since Engineer Deepak Tamar has to move because of some urgent commitments, so I'll request first of all Engineer Deepak Tamar, Director Mines, DMG Rajasthan, to kindly address the audience. Will be speaking on harnessing artificial intelligence for mine surveillance applications, promises and challenges. So let us welcome Deepak Tamar Sahab. PPT, and I have framed PPT along with my partners of the department so that it looks like a real cinema, as our chairman sir said and exemplified the picture about Mission Impossible. So I want to convey him that here we made a foolproof system by which mission is possible to curb illegal mining. Artificial intelligence is a vast subject, and to cover in a 10 to 20 minutes, it's very hard. But my main focus is how to curb illegal mining in the state, to check the evasion of the royalty and haphazard mining, unscientific mining, and threat to sustainable mining, for which our whole department team put together, and we had a brainstorming session, and everyone's contribution is in this paper, which is incorporated, and I want you to have all suggestions or any questions. In the particular case, illegal mining can be happen and the vehicle can be moved, which will be not in the eyes of the department. So prior to starting the movie, I would like to sum up my idea so that you can, when you can see the PPT, you will correlate and visualize what I meant. So our departmental officers have prepared a foolproof software in which we check at the start of the mines, at the mining lease, there will be geofencing and georeference will be there. Then the mineral carrying vehicles will be having GPS and RFID, and the person who will be in the lease area can only tear the royalty receipt. Once it is out, the AI camera will be integrated with our control system at the directorate level, which is round the clock. And at the wave bridge, as we find now that the wave, there are 14 to 15 softwares and they manipulate. Rather it's a 80 ton and they manually put 40 tons, so it's direct loss to state exchequer. And even we have found that the revenue of the Jodhpur is being tear at
Tonk or even Bharatpur Ravana is tier at the nearby district, state Haryana. So to curb this, the foolproof payment system is there. Then there will be a query in your mind, then how the illegal mining will be curbed, because the person who wanted to carry out illegal mineral will neither deploy GPS or RFID in his vehicle, rather and never go to the departmental way bridge. So how we will caught them? So the third stage is we will have AI cameras at every police station, because en route to the mineral movement we have tackled and we have collected the data and analyzed that at least 2 to 3 police stations are in between the roads. And lastly, at the interstate boundaries or the cities where mineral flow is too much, we will install additional eye check gate, which you have seen. The install is just outside the hall. So that part will be our fourth. So it will be a 4-layered security, by which our department is sure that without having any human intervention or facelessly, we will cover the whole state and entire 5,000 kilometers of rivers. Now start. Yes, next. This is for general. My main emphasis will be on the illegal mining, because our department's main role is of guiding, facilitator or regulator. So as a regulator and custodian of the mineral, so as a custodian, if royalty is evaded, it is a national loss. So main theme will be that. But in start, I have just mentioned for decades manual mining. You see that by initial way, people used to bring these putties by way of chisel and hammer, and there were rampant illegal mining, chronic revenue leakage, your silicosis problem, ecological transgressions. So this paper explores the multidimensional impact of AI on the Indian mining ecosystem, for reconnaissance and lease administration to excavation. That is end-to-end solution. This is integrated AI control command center, which will be established at directorate and at our regional offices, in which active mining leases and ongoing mineral transport will be governed. Real-time violations of pre-approved transport routes will be checked. Mismatched and anomalies detected at way bridges and behavioral red flags such as unusual timing and patterns, it will be checked. This is a lease module. After prior e-auction, we have to judge the lease, and this is the existing lease system in which the demarcation was age-old by technology by way of compass and tape, and by the passage of the time, now the FRBs are not located. So this is a mine survey software. By using this software, the coordinates can directly be integrated with the LIS module of the department, and from them it can be taken in any of the form which we want, light.txt,
.kml, PDF or AutoCAD pattern, so that if KML file will be clicked, the exact position of the lease will be found, and we can assess by the way of the lease. It is the AutoCAD plotting of the lease, and even by use of this preliminary software, we can construct the ArcGIS map of the lease, and the demarcation report will be auto-generated. There will be no human intervention. You can see this is the live example which we have exemplified and which we have tested. So this live report will be there. This is integrated lease management, where we will see the dues of the estate at any point of time. At any point of time, you can see the dues, CTO permit. Someone have exceeded permit. Recently, we have found that so many lessees have evaded 70 crore rupees by expanding, by putting or by having royalty more than CTO permit. That is the environmental degradation. We have lease coordinate system. We have lease period. And in that, the detail of the lease, the location of the lease, and the leaseholder detail, all will be in integrated lease management system. Then this is the geofencing of a mineral lease. This is a mining lease of Chittorgarh area near Jodhpura Khola, and we have done it in a geo-reference so that where is the exact lease boundary is, it is the as per demarcation. Then this is the what I was saying, the lease, the truck is loading just inside the lease as we see. This is a real program which we will materialize. Now the person sitting in this will generate the Ravana. You see it's in mobile, unconfirmed Ravana is there, and the number and status is there. Then only a vehicle can be moved after the lease. That is, illegal miners cannot do this. Now it has reached to our payment at Weybridge, and this is a AI-based Weybridge in which the real-time integration of the payment will be at the control system. So it is the right, someone has rightly said, technology is best when it brings people together and protects shares resources. Now it has gone. This is the whole system. If the particular truck is on the center and it is actual weighing, then its AI camera will judge it's the mineral, plate recognition, it will be transport departmentation, department integration, and Weybridge control room, direct weighment will be reached at department, so there will be no leakage of the weight and no manipulation can be done here. So accurate mineral weighment, mineral identification, and correct vehicle. Sometime when I was in Jaipur, I found that a truck bearing the number of Alwar 02 number, and when I went further, I found that it was the number of a scooter. So we have integrated our website with the transport department to sort out such type of problem. This is GIS-based end-to-end tracking from mines to Weybridge and to destination. Rather you can say IoT or end-to-end transportation. This is possible, and our team, I should thank my team of the DMG that they did so much labor to visualize and to implement and to depict that this can be happen, because we had a trial run of this. Now a common question will be raised in your mind. As I told earlier, the person who want to do illegal mining
why he will enable his GPS, or why he will install GPS RFID in his truck, and why he will reach to the Wayman Bridge. He will just dig from outside and have a shortcut. So, in general, we have studied whole of the data, like it is a matter of data analysis, and mining is generally done in the remote area, but the users of the mineral are in the city, and en route we found that at least 2 to 3 police stations are there. So we have third check for those who are coming illegally or legally, both will be checked at police station. As soon as a vehicle will be entered, will pass through the police station, a surveillance camera will be there. I particularly, our department chosen that police station because if it will be put in the remote, the illegal miners will take camera also. So to take care of, it is that, and AI camera will be trained in all the minerals in the state, so it will identify which mineral is taking care, and by number plate, by the time the vehicle will reach from mines to Way Bridge, it will indicate automatically that this vehicle is coming from this lease, and this is having this mineral, and its weight will be there. But suppose if it is illegal mineral and this vehicle is not entered, then it will be checked here. And not only checked here, the AI camera will capture its number plate. If number plate will not match, we will seize the vehicle, and we will also have integrated the chassis number and engine number of the vehicle. And it will go to the transport department, and a online challan will be generated. You have evaded such a royalty and the penalty cost is this. You have exceeded the overweight, and you have you did the losses of GST. So a automatic challan, like in our common days, we see that a fast moving vehicle is coming and police jeep or transport jeep is hiding some side, and he will show that you are over speeding, and your challan reaches at the home. On the same basis, we have devised that a challan will be reached to the owner of the truck holder with details, photographs, and mentioning the total challan and facility to deposit online. So we will provide him the access to deposit the amount, and if anybody will evade this 2 times, then the registration of the truck will be cancelled by the transport department. This we are going to implement, and if it is taking mineral reverse hand, then by NGT order the vehicle will be confiscated. So this is our third tier where we will check. And now, by the way, some person unloads hereafter and take another mineral or goes to other route, then at the juncture of the interstate borders and at the major cities, we will have check gates. These smart check gates will, as you see, AI camera that will read the mineral, ANPR camera, automatic number plate recognition to identify the vehicle number, and RFID reader, so that will show, and that is directly integrated to our departmental control room. So we will locate this, and there is also a system that in the road they have devices that may tell the weight, total weight, tier weight,
and capacity of the vehicle and overload. So everything will be possible at this check gate. Finally, it will be controlled here. And now I will show you the brief movie how this check gate will operate. ये नहीं चल रही क्या मूवी प्ले करना क्लिक क्लिक नहीं हो रहा है क्या आपका ओके लेट इट बी आई चेक इट fellows are there they will show you in detail then sustainable mining is the need of the time and for sustainability we have sensor based pollution surveillance and NDVI. Now these two guiding principles must drive in a country with vast mineral wealth. Technology is not an option, it is a responsibility. And technology alone may not eliminate crime, but it ensures that every crime is seen, recorded and acted upon without prejudice of delay. Thank you. Any query, any doubt by this integration way we can't curb illegal mining, I am ready to answer. Yes. Rajmani. Just actually compliment your work. Yeah. Instead of involving local police and RTO, can we have a mineral specific monitoring station whose command is lies with you? So in case there is a discrepancy, then they can contact the police or RTO. But I think it should be in the hand of the. You are absolutely right. But my view is not percolated to you as I wanted to percolate it. Actually, police checkpost is only for the security of the AI camera. Otherwise, AI camera will be directly integrated with our website and transport website will be integrated with our site. No Inspector Raj, no any position. Any question? Okay. Thank you, sir. I have one question. Yes. Yeah. You mentioned that people may take away the camera also. Pardon? People may take away the camera also. Yeah. We come across the situation where ATM machine is taken over Exactly. by the thieves. Exactly. So how you think that can be stopped? Because once people can take away the ATM machine, camera is small. Yes, that is why we have put it on the police station. If a camera is taken at the front of the police station, then there is no law and order, then we are not in Rajasthan. And secondly, at Way Bridge, there are 3 to 4 persons. They have personally, we have having toll gates. You see any vehicles or any person take the cameras or toll gates because there are the security persons of the Way Bridge. And at police station, especially located only for safety of the camera. Otherwise, directly it will be interlinked, interconnected with our website in real time. Any question? Yes. The mineral industries encompass in this criteria. Exactly. I saw in third slide that it is end-to-end usage. By GPS tracking, you can check the movement of the vehicle, where it was originally assigned and where it is delivering its matter. So it will be checked. And that formula is also to upload the Ravana. He received the material from the mines. It will be integrated with our system directly. He can't manipulate. It will be at the site of transport department. It will be at the site of GST. How one can change? Even some influential people is there, and if you find that a notice is coming on your mobile that you have evaded this and this, he has to definitely deposit the amount. He can't say, can't excuse, can't telephone, or can't create a pressure on anybody. So our officer will be free.
Yes, yes, sure, Rajmani ji. While transporting the mineral, the owner basically covers the truck with some tarpaulin, then AI camera cannot see what the truck is carrying basically, sand or something. This is some limitations on which we are doing work, but for the sake of clarification, I am again quoting the system which I narrate in the opening session, that if anyone's a slight picture is there, you see a eye and specs, you will identify. So we see the banana trucks are there going here, and it is covered with the tarpaulin, and some bananas are looking behind. So if a small amount of mineral will be out, it will be curved and checked. Sir, this is totally indigenous, and it is a contribution of all our departmental fraternity and expertise of the department, and I am here to present on behalf of them. So this is our solution. Thank you, thank you, thank you, thank you, Deepak, thank you, Tawaser, thank you for a very interesting talk. Yes, yes, I am ready. Okay, this is the last question. Yeah. And in Good fact, afternoon the to all. audience can discuss later on with Tawaser later on for any doubts they have. हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ चांदना फ्रॉम बीकानेर. एक छोटा सा सवाल था. आप बीकानेर में तो आपकी जिप्सम और Clay. बजरी की बहुत हो रही है यार. 20-20 टन के वाहन हमने पकड़े हैं, 80-80 टन के, अब वो नहीं जा पाएंगे. फॉर्चुनेटली मैं क्ले से संबंध रखता हूँ, बजरी और जिप्सम से दूर दूर तक वास्ता नहीं. चलो, अच्छा सर, है. इसमें आपने एक वॉल्यूम इंटीग्रेट किया है कि एआई कैमरा ट्रक की वॉल्यूम बेस से उसका वेट निकाल लेगा. हाँ, सारी क्ले का डेंसिटी एक नहीं होती है, रॉयल्टी तो एक ही है. वो बात सही है. वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वो इंटीग्रेट ऐसे करेंगे कि जैसे मिनरल को हम उसको रीड करवाएंगे, 74 टाइप्स के मिनरल्स है, तो उसको आपने रीड करवा दिए, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इट इज रिवर सैंड. रिवर सैंड को हमने उसके अंदर बता दिया कि इसकी जो लूज की है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो उससे चेक कर लेगा. नहीं सर, आपने तो एक बेंचमार्क डाल दिया कि फॉर एग्जांपल 25 क्यूबिक फीट इज 1 टन. कोई क्ले 25 फीट की 1 टन होती है, कोई 20 की होती है, कोई 17 की होती है, कोई 28 की होती है. हर माइंस टू माइंस, ग्रेड टू ग्रेड वेरी होता है. माइंस के अंदर ग्रेड अलग हो सकता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट स्टेज में होती है. दैट इज बल्क. नहीं, फर्क है. हियर इट इज अ लूज डेंसिटी, बट एट द मोस्ट आप यू विल गेट 90% रेवेन्यू. नहीं, रेवेन्यू ठीक है. मेरा कहने का मतलब है कि जो वेब्रिज का असेसमेंट है, दैट शुड बी नॉट ओवर राइटन. वो नहीं बंद करना चाहिए. वेब्रिज, you know, it is not volumetric. Weighbridge is tonnage basis. Yes. Weighbridge is not volumetric. It is the tear weight and carrying capacity and actual weight. ठीक है, लेकिन आपके इसमें जो एआई कैमरा है वो उसकी वॉल्यूम निकाल के उसका मिनरल वेट भी निकाल रहा है, जो मैंने समझा है. नहीं, हमने वेब्रिज को इंटीग्रेट किया है खाली इसलिए कि उसका जो वेट है, हाँ जी, वो कितना वेट ले जा रहा है, 20 टन में 70 ले जा रहा है या 50 ले जा रहा है. एआई कैमरा उसकी वॉल्यूम से उसका एआई कैमरा आइडेंटिफाई करेगा कि वो मिनरल है या नहीं है, कौन सा मिनरल है, और उस लीज से आया. जिस लीज से जब तक वो पहुंचेगा वेब्रिज में, वो उसको एडवांस में बता देगा कि ये इस लीज से आया, इसमें ये मिनरल है, और इसका रवाना इतना कटा हुआ है. तो इट इज नॉट वॉल्यूमेट्रिक. तो डाउट क्लियर हो गया सर. थैंक यू. Thank you, thank you. Anybody? Other, of course, there may be lot many interesting questions they can discuss later on with Okay. Tawaser. Thank you, sir. Because Thank of you very time much. limitation. We have next talk by Professor Arvind Mishra, Director CSIR, Dhanbad, on precisely the topic of the conference, AI ML tools. Okay, thank you. Thank you, Professor Chaudhary, sir. Thanks to the will try to cover up very quickly what AI applications are there and what we have done as CSIR's Central Institute of Mining and Field Research. So when we look up the mining operation, all starting from underground mining or open cut mining,
than its hoisting, than its crushing, grinding, beneficiation, getting the concentrate, than transportation, and finally the end user. In all aspects, AI is playing its role. And in terms of when we talk about ventilation on demand, everybody has heard about it. So when we look up the overall mining entity or mining operation, at the end of the day, what an mining entity looks for is the final product being made available at the lowest or optimized cost, at the lowest cost, in less time. So time is one factor, the time, the cost, and safety. There shouldn't be any incidents, and it should be sustainable. It means looking up the conservation of the mineral, the percentage extraction of the mineral, percentage recovery of the mineral, and finally keeping your society or your neighborhood happy. That is what is a mining enterprise looks for. And AI is playing its role in all the aspects. And traditionally, mining industry is not new. Probably the mining industry is the oldest industry. It started when the civilization started happening. It is that old. So it is the oldest industry. It has evolved over the time. We have gained in enough of experience, and till now we have been doing with human experience as I discussed. And when we look up the AI, it all starts with the data flow. And when we look up at it, the exploration, designing, then operations, your planning, drill and blast, loading, crushing, processing, and transportation, and finally reaching to the... So it's all data traditionally which flows in downstream. And AI, wherein AI has come into picture, wherein the optimization, the scope for optimization and areas of improvement, so that you can improve as mining entity and the final product is being made available at the least price. That is what is AI being used in the industry, looking up all other aspects. And it requires unfortunately, another important aspect with the mining industry, this is not the alone or one discipline industry, wherein the mining industry is there and the mining expert is there, but if you do not have enough of idea, so about other, like you do deal with the heavy earth moving machineries, we are dealing with the processing, so wherein the chemical engineering do come into picture. So with AI getting into its place, it is becoming more so interdisciplinary approach, wherein the various other disciplines need to be integrated together and come forward collaboratively. This is what traditionally we have been doing, manual operations, and from manual, this is what is mining is happening globally. In India also, at some of the locations we have come up with this kind of controls wherein the mining is happening around. In the inaugural session, we have talked about it. Right now, people-governed mines. By 2030, semi-self-governing mining industry will be there. That is what is expected. And by 2040, self-governing mines, wherein by using of the app. But this is not this global I'm talking about. But not necessarily all the mines in the country will be following this path. They will be following different path. And all will be pertinent to the conditions and geological settings of that particular site. Mining is another industry which is so dynamic in nature. In a steel factory,
wherein we produce steel or an automobile, it's preset, everything is controlled. But mining is an industry wherein there is no shop floor which is fixed and the process can be, it is dynamic. Today the bench is here, tomorrow it moves up. Things do change, geology do change. So it's very, very dynamic. And that is how. So when we look at the future smart mining, basically all integrated technologies, because in AI ML, the integration of various technologies do need to. As a mining engineer, not necessarily I really know how will I be extracting or recovery of either uranium or lead or zinc or silver from the ore. How best the recovery will be done. So for that, a specialized person is there. So similarly, we need to have a complete integrated technology which will be the truly smart connected mines, wherein all operations are being connected together, data flows in seamlessly between the various operations, and then that information is being made available to the decision maker, that this is what the dashboard decision is, the data is available to him, and then he can make a final call, which will be helpful in improving the productivity of the mine. So data and another predictive intelligence and AI application is another very important aspect of it is predictive, one which we cannot predict, or some of us who have got the enough of experience, tool and intuition can do the prediction. But with the AI across the table, across the operations, the predictive, like that you have got a heavy earth moving machinery, and then it's when by acquiring in the data, the various sensors are there, and then you can have the predictive maintenance being forecasted that you please do it so that it doesn't create trouble. Downtime can be reduced and the uptime will be enhanced. So that is what it's coming up in a big way. And so fully integrated system and ultimately self-learning operation right now we do not have, but in future definitely it will come up, wherein your intervention will be reduced to the extent possible and it will start self-learning models, algorithms, and which will remove in the uncertainties. We have talked about it, Industry 4.0, so I'll just skip. Everybody knows about what Industry 4.0 is there. I have talked about this as well, so just I will quickly skip it. This is now being implemented in the country. The drill rigs, underground drill jumbos as well as surface drill rig. Tata Steel has implemented. Drill jumbos have been implemented, remotely operated, wherein at a remote location from a remote operation, that is from the operator's cabin, you are operating the drill rigs. So the human safety has enhanced, productivity has enhanced. That is what is happening. It's happening in the country as well. So basically fleet management and then the user-friendly dashboards wherein all data is available to you as and when you feel like. So you need not to bother about reporting of the various in charges or managers. So you do have all the information available with you, and then you make a final call. I briefly talked about it with the drilling. Professor Bandari is definitely, he might be talking about it again, wherein all the advancements have come up, in advance, and then you can predict the fragmentation in advance before executing your blast. So you are fully aware what energy need to get in, what fragment size you will be getting in, because fragment size has got its own importance in mineral industry. And another aspect, one study was being taken up recently wherein we found that because explosive energy is the cheapest energy available. So by using the explosive energy, and in a metalliferous deposit, it is the beneficiation industry which consumes in 40%. For the operating mine, it is the ventilation system
which consumes large chunk of your energy. So by increasing your explosive consumption, you are reducing the cost of beneficiation. So because ultimately what matters to a mine operator or a mine owner is the final product. So these are some of the glimpses what at CSIR Simfer we have been doing. With the help of AI, these are some of the operations which we did at Navi Mumbai International Airport, wherein about more than 100 villages were being displaced in, and we had to conduct the blast, ensuring that your blasting is being done at a distance of about 10 meters away where the green pouring of concrete is going on. So it requires in prediction and uncertainties need to go off. So that we did and very, very efficiently and effectively we did it. Similarly, demolition of Twin Tower was being done. A small video is there wherein we were involved in. It plays in. Then demolition of the railway bridge. Then at Konkan Railways, we did some works for stabilization of the slopes so that it doesn't create trouble on the movement of the trains. And for metro, wherein we used our data, we applied in AI applications, and the predictions what we made and actually what we measured in was matching in. These are some of the tools which we have been using in for underground coal, high wall mining, for stope designing. In high wall mining, percentage recovery of coal, which is somewhere around 40%, with our intervention, probably we are in the process to get it implemented so that we can enhance it from 40 to 80 or 85%, which is ultimately at the bottom of the technology, whatsoever we are doing in. The bottom line is we have to increase the percentage recovery of ore so that the conservation point of view, because ultimately the mineral resource is the national resource and we cannot afford to lose it in mine. So we have to have all the technologies, whatsoever we think of, to increase the recovery or the conservation so that the maximum can be recovered. If you are losing in anything, forever we are losing in. So these are some of the work which we have done in at CSIR Simfer, improving mine productivity, prediction of hazards using IoT-based sensors, hazards warning and control, 3D digital mine information system and wireless communication, and miners tracking system. We have developed the biometric-based exploders, and then the miners tracking system wherein the miners can be tracked inside the underground mine. This is what Deepak Saab was talking about very extensively and very brilliantly they are working. I really applaud the way the department is working on. And this is similar to that, but it's at a lower scale. We did it for exclusively NMDC mine, wherein they had certain issues, and then we came up with that weighbridge automation system wherein the infrared cameras are there so that if you don't place in, it will not be weighed in. In-motion weighbridge, GPS RFID based tracking mine periphery surveillance was also being done in so that in the mine periphery nobody intrudes. So we have put in the radar and cameras, and then with that we can identify if anybody gets in, because you cannot put in the guards all across. And this proposal we had submitted to BSF and they have accepted that. So we'll be doing it for BSF as well. Then wireless networking, CCTV surveillance, proximity warning devices, and centralized monitoring and surveillance. Illegal already has been done in Rajasthan. The dry fog dust suppression system, by acquiring the data, you know that this is what is the dust production and accordingly it will be sprinkling in. So
that has been implemented at one of the mine. This vision enhancement during foggy weather we have implemented at one of the mine, wherein visually you cannot see, but with the help of technology, with the help of AI, you can increase your vision up to 40 to 50 meters, which we are further working on so that it can be further increased, so that your production doesn't hamper during your rainy season, because a lot of clouds they do, particularly it is applicable for hilly terrain deposits. Virtual fencing of the boundaries, already Saab has talked about. We also did it, as I was talking about, and we are working for other clients as well. So this is some of the facilities what we do have. Very recently, we have inaugurated 1,000-ton horizontal tensile rope testing facility. It's nothing to do with AI, but it's a facility being made available in the country. Otherwise, it was not there. We had to send our ropes outside, but now we can do it in the country itself. And then electron scanning microscope and blah blah, a lot of activities are there. You can go to our website, you can further know. These are some of the other although this audience may not be of much interest to you, but hot stamp charging is one which we are trying to promote in the country, wherein the indigenous coal can be made available for making coke for the steel industry. And that can be done up to 35%. So you can think of 35% reduction in the imported coke, and that will help in the steel industry. And then these are some of briquettes for coal and coke from the waste. We have been doing it, so that is being collected and being made. So these are some of the technologies. Way forward, when we look up, it's basically digital transformation in mind, technology innovation, connected equipments, and the other emphasis on the mining industry is you need to become net zero by 2070. So all mine operators, very recently, Ministry of Mines came up with a report on greening of mining and refining industry, and Ministry of Coal, greening of coal industry, coal mining, and greening of steel sector. So, that initiative, because as a country we have given a commitment to the global community regarding our commitment in terms of the climate change, and to achieve that all industries need to come forward, and mining is equally working hard to come for that. So roadmap is basically situational awareness, quality data. When we look up AI, when we talk about AI, the first thing is the data being fed in to create that algorithm. What is the quality of that data? What is the reliability of that data? That becomes very, very important. Then integrated speed, that's the roadmap, maturity and complexity. So initially, we need to have that, move up to the integration, then automation, then optimization, and the cognitive decision-making autonomy. That is the final roadmap, which will happen after some time. Right now, it's not happening, but definitely with the path as we move up. And if you look up at the bottom row, that is what is the various operations. So all operations being integrated together and then making up the final decision. So with this, I do come to the end. I'm really thankful to the organizers and everyone. Thank you very much. Yes, are there questions from the audience? Yes, please. Thank you, sir. Excellent presentation. Myself, Dr. Manoj Gaur. Sir, the second last slide which you mentioned from beginning of the presentation, this question was coming to my mind, and you finally covered this one, the quality of the data. So all algorithms are based on the quality of the data. And specifically, as you also stated rightly,
that natural resource belongs to the country and the community, and I would add one more line, that companies are the custodian of that natural resources. So if something is left, is left for forever. So, sir, based on your experience, what do you feel that the quality of data which we are feeding in a current scenario, where you think our quality of data, one of the fellow rightly said, I think Mr. Chandana, about the clay, that as Tawaser said, we will pick from some particular portion. So every deposit, every mine, in exploration stage or in a mining stage of one bench, second bench, third bench, it may have a little bit, the variation. So the person who is collecting the data and feeding, what do you think, sir, how far we have to go in that line? It's a very good question, very, very pertinent. But probably I will not be the right person to answer that. It will be Deepak ji, who will be the best person to respond. But I believe the data which they are feeding in must be the genuine data, because they are equally educated enough to understand the variation in the data, number one. Number two, the implementation, as he mentioned in, I think he talked about 4 stages. So this is the first stage, wherein it is being implemented and which will evolve with time. So the question or the doubt what you do have, I am 100% sure will be taken care of. Can I add something to your question regarding the reliability of data? Just question, your question. Previous question. Regarding I would like to add something. Yeah. See, of course, as it was rightly clarified by Professor Mishra, that you have to consider that data are correct. And because in machine learning, unless the data is correct, you cannot rely on that. So you have to consider and you have to make all the efforts that the data is correct. This is problem in all the fields. But a lot of research is going on that how you can work with unreliable data also. You can do the data filtering. Let us imagine there is a lot of data and somebody has inducted the wrong data in that. The entire decision will be different. Correct. Like, for example, a rocket is leading to moon and there is a lot of data of the previous trips, and somebody introduces inside some wrong data. One example, 2 example, it may go somewhere else. So just saying that you just rely on the data is not a sufficient argument. But however, a lot of the research is going on in the field of generative AI, in the field of deep learning. And the deep learning method, they have capability to filter the data and they can identify, and lot of algorithms have come, but still lot is to be done, that how you can work with the unreliable data also. Right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I think a very simple example for a layman's language. मान लीजिए उनको एक मॉडल डेवलप करना है किसी को, और उन्होंने मॉडल डेवलप किया कि MBM कॉलेज के जो illustrious distinguished alumni हैं, their visit to the campus, शर्मा साहब आए नागपुर से all the way, and वो जब आ रहे हैं तब बारिश हो रही है कि नहीं, और उसके बाद वो जब AI मॉडल डेवलप करेगा तो उसमें भी कुछ आएगा पैटर्न कि जब शर्मा साहब आते हैं तब यहाँ बारिश होती है, या जब XYZ. So it is non-related. So, picking up parameters and data, it's very important, and it's a relationship. Thank you. One question, sir. Summarizing excellent
we are importing from, say, from abroad, Australia, South Korea, all that. So can we go with this AI and all that, some simplified method by which we can go with the real-time monitoring at a cost-effective manner? Thank you, Rajmani sir. I fully agree and endorse your views. Reason being, slope stability radar system, जो SSR हम कहते हैं, it's not only too costly, it has got limitations as well. It has got limitation that it can do scanning for a limited. The domain is limited, and then somebody has to be there, which need to be educated enough to understand what data it is acquiring in. So definitely an indigenous system need to come up which is cost effective and at the same time is reliable. So lot of research is going on. Hopefully in future we will be having such systems. Thank you. Sir, I like to ask one simple question. Thank you. Myself is Dharmendra Loha. I am SME in DMG. Sir, can you give one example where AI is used for making decision independently without human interference, and what is the logic used behind that at the SIMFER? At CSIR SIMFER? Yeah, any example Yes. where AI is used in making decision without human interference, Yes. and what is the logic used behind or coming to that decision? Okay. Okay. Basically, what we did, regarding the surveillance of the periphery, what we did is by various intrusions. It can be human, it can be animal, it can be anything. So any kind of intrusion which is there need to be identified, and then it need to be identified as well that it was the legitimate, the one a person who was authorized, unauthorized. So with the camera you are identifying it, AI algorithms being put on, and then immediately it is alarming you that yes, this is what is non-approved intrusion. So that is what we have done. That is one. Second one, while picking up the data from in the foggy, that vision enhancement in the foggy weather, when you are picking up the data, because from the two cameras we are picking it, overlapping of that, and then after that, what exactly it is, because image processing, therein we used AI. So both the applications were good, but AI application as whole is improving, and a lot of applications are upcoming. That's what I can say. Thank you. About your question regarding without human intervention, the AI is identifying. Every one of us is witnessing every day. Nowadays, in most of the mobile, once you focus someone on for taking a snap, you'll find that the mobile, it marks that this is the head. It will make the rectangular area identifying this is a head. So we are not doing any intervention. That the photograph, from the photograph, it identifies, yes, this is the head. It does not say, even if the head you make a different way, it identifies. This kind of the image processing has become possible after 2005 only. AI came much before that. But it becomes possible from the deep learning to some extent which exists in the mobiles and neural networks. Thank you. Last question, please. All the models can be spoofed, especially, for example, when you depend on image recognition models for face recognition and so on. The models can be spoofed very easily. What kind of tests have you performed on the models for the security, especially for security concerns, model security concerns? Yeah, basically, we, not our lab, another lab which was doing some work for security purpose. And then when we developed the AI model, and what we did, after that we tried to put up the face of a person on a 2D, that is taking out the printout on face of the person, and then it gave the wrong, output. Then the depth
was also being involved in, and it is the real face. Like, very simple example, Digiyatra. Everybody uses, or most of us do use in Digiyatra, wherein you might give in the best picture, but your live, the real picture need to be uploaded. It's for that reason, so that your face can be recognized. So depth can also be brought into, so that really you are taking up the picture of that person, because and then because it's related to the security. So it's, without that person, probably you can't do that till now. Sir, but if in future something comes up, model will So improve. what I really meant was the adversarial attacks, and there are a lot of algorithms that perform a lot of different types of adversarial attacks, where a random pixel, apparently random pixel pattern, when you put it, for example, on your t-shirt and you walk in, the camera actually fails to recognize you as you, but recognizes you as something else and so on. So has that kind of testing been performed, both black box and white box attacks of various types? That was one. Second, the kind of AI cameras that are using, what make are they? Are they made in India? Are they made in China? Because if you do that, then the compromise of security has already happened. Definitely, as the concern of security, number one. Number two, the indigenous independence, Atmanirbhar Bharat, जो हमारा मोटो है, उसमें now we have started giving due importance to that. I will give you a simple information. At one of the server, which most of the government institutions do use in, a hacker was, one fine day we identified, not me, I mean our IT team, and NIC was also involved in, they identified that there is something wrong, and then immediately they came up with the patch and everything they did. And later on it was realized that since last 2 months, the hacker was sitting in your system. So, you are also evolving. So that happens, and it's a continuous process. So thank you. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जमान साहब ने दिया, और मेन मुद्दा यही था कि डेटा की इंटीग्रिटी और डेटा की जेन्युइननेस कैसी होनी चाहिए. जब तक डेटा सही नहीं होगा, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा. आपके पास डेटा ऑथेंटिक नहीं हुए तो आपके पास कुछ नहीं होगा. तो मैं आपको अपने जो जोधपुर के हिसाब से देसी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि पहले अपने जो मानसून जो रेवेन्यू के डेटा होते हैं वो टॉप लेवल तक, जो पटवारी ने एक बार कह दिया वो फाइनल हो गया वर्ड. तो पटवारी ने जिस हिसाब से डेटा थे, अपने पास भी सुपर कंप्यूटर थे, लेकिन जब ये वेदर फोरकास्टिंग होता, ये बताता है कि आज हैवी रेन्स होगी, उस दिन एक बूंद भी नहीं आती, और जब जिस दिन था कि ये बूंद नहीं आएगी उस दिन हैवी रेन्स हो जाती. जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्रिकेट के मैच में कि इतने इंटेंसिटी की इतने मिनट में होगा. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको. एक पटवारी वहाँ से थे, उन्होंने वो रिपोर्ट भेजी आगे जयपुर में कि साहब इस गांव के अंदर 100 इंच बारिश हो गई है, तो उसमें तो गांव में फ्लडिंग आ जानी चाहिए. वहाँ एक इरिगेशन के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा साहब ये 6 इंच बारिश भी नहीं हुई है. तो कहते नहीं हमारा पटवारी सही कह रहा है. फिर उस पता किया कि पटवारी ने भाई तूने नापा कैसे है, तो उसने क्या किया कि जो ऊपर के छत का नाला आता है उसके नीचे रेन गेज लगा दिया. तो ये वाली क्वेश्चन. Bandari sir, okay. Thank you. Thank you all. We had very interesting keynote addresses by our two eminent speakers, and there were interesting questions also. Thank you. I give a big applause to speakers and audience also. Now we want to have full advantage of the knowledge of the speakers they have prepared. In fact, it is a tradition in the conferences that keynote speakers should not be intervened, should not be told that your time is over. They are free to speak.
So we would try to follow that also, and with the Professor Sushil Bandari Sahab, will we take his turn after the break, lunch break, and will join as soon as possible after how much time? Half an hour it is. So we try to finish the lunch part, half an hour, and join back to listen from the Professor Sushil Bandari. Thank you all. Thank you, Deepak sir. And चाहता हूँ कि इस मोमेंट में आप सभी की प्रेजेंस रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कृपया सारे मेरे विभाग के अधिकारी पधारें। सर ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पॉन्सर्स को अभी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे दीपक तंवर साहब के साथ, तो प्लीज़ अभी ऑडियंस यहीं बैठे रहें। लंच आपके लिए वेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम और इंतज़ार करें प्लीज़ सर। now I request K.I. Chaudhary sir to please give an insight on his valuable book. प्रोफेसर के.आर. चौधरी की एक खूबसूरत बुक एआई इन माइनिंग, अच्छा इट इज़ ऑन एआई सब्जेक्ट, तो उसका आज विमोचन करने जा रहे हैं। भंडारी साहब से रिक्वेस्ट है कि उस किताब का अनावरण करें, और वी आर ग्रेटफुल टू दी भंडारी साहब एंड प्रोफेसर चौधरी साहब। पीयूष सर पधारें ऊपर। ये किताब आर्टिफिशियल फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्प्रिंगर जर्मनी से पब्लिश्ड है, और ऑलरेडी ऑनलाइन 3000 किताबें बिक चुकी है, बट ऑफिशियली इसका कभी विमोचन नहीं हुआ, इसलिए आज एक ही कॉपी।
Okay. Sponsors. Oh. We would like to extend our heartfelt gratitude to our valued sponsors for their generous support. Your partnership has been instrumental in making this event possible. We truly appreciate your trust and confidence in our conference. Thank you for believing in our mission and helping us bring this initiative to life. I would request one representative from each sponsor company to come to the dais. Our gold sponsors are Galaxy Mining and Royalty Private Limited, Hindustan Zinc Limited, Shri Sahadev Chemical Allied Products, Ultratech Cement Limited, Wonder Cement. Silver sponsors JK Lakshmi Cement, Kamlesh Metacast Private Limited, Neveli Lignite Corporation, Gujarat Mineral Development Corporation. स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट है, गोल्ड स्पॉन्सर्स हमारे हैं, कृपया एक एक करके मंच पे आए, डायरेक्टर साहब से सम्मानित करना है उनको. गोल्ड स्पॉन्सर वंडर सीमेंट से Hindustan Zinc Limited. हिंदुस्तान जिंक से कोई सीनियर अधिकारी आए हैं तो प्लीज. ला दे. Shri Sahadev Chemical and Elite Products. Sahadev Chemicals, please. Next. Ultratech Cement Limited. Ultratech Cement. Anybody from Ultratech Cement? Yeah. Wonder Cement. हो गया Wonder. Next please. Silver sponsors. 9. One more is there. Metacast. Kamlesh Metacast. Kamlesh Metacast Private Limited. कमलेश मेटाकास्ट से कोई आए हैं तो प्लीज. ओके. नाउ वी हैव सिल्वर स्पॉन्सर्स. Kamlesh Metacast Private Limited. सिल्वर स्पॉन्सर. So silver sponsor. JK Lakshmi Cement. चटर्जी साहब प्लीज. Neveli ये बेटा लिए. नेक्स्ट प्लीज. Leveni Lignite Corporation. नेवेली से प्लीज. मीणा जी आइए. Pioneer Builders Limited. Pioneers Builder Limited. पायोनियर से कौन है? Marwar Cement. हाँ, मारवाड़ सीमेंट इज देयर. Gujarat Mineral Development Corporation Limited. जीएमडीसी से अगर कोई आए हैं तो आई थिंक दे आर नॉट हियर. यस यस सर.
Arcade sponsor, Rajasthan State Mines and Mineral Limited. हाँ. B.S. Patrawat sir. जिंगोनिया जी हो क्या हैं? चलो जो यस कमलेश दिनेश प्लीज प्लीज मनोज जी आ जाएं. जावा जी पधारो. हाँ. आ जाओ. Our dinner sponsor, EF Mining and Construction Private Limited. Next. Yes, please. Our lunch sponsors, Khetan Business Corporation Limited. हलाल का साहब प्लीज. VS Lignite Power Private Limited. जोधपुर लाइमस्टोन से कोई है तो प्लीज बता रहे हैं. आगे हाँ प्लीज. हो गया जोधपुर लाइमस्टोन. हाँ हाँ. हो गया सब हो गया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू तमर साहब, भंडारी साहब. Thank you very much for the support from the sponsors. Now we join the lunch, 30 minutes break, and we will reassemble for the first technical session. It is 2:30. By 3 o'clock, we will be here, sir. Thank you once again. डिस्प्ले सेटिंग्स उसमें दिख ही नहीं रहा है. अब आया होगा. नहीं ये तो मेरा नहीं है पर ये यहाँ पे दिखा तो यहाँ है. Good afternoon, everyone. ये बोल रहे हैं आगे तो बस बात. हाँ बिल्कुल ठीक. परफेक्ट. चश्मा आ गया. इसको एक बार कर लेते हैं बाद में सर को दे देंगे. सर बिना आपके पहले
I would like to request Sri Chandan Kumar and Sri N.K. Berwa to co-chair the session. We will start our session, please. Good afternoon to all. Now, post lunch session, we start with Sri Akhilesh Tuteja Sahab, Global Head Cyber Security and TMT KPMG. He will present on will the next mining engineer be an algorithm as a keynote speaker in hybrid mode. He is just joining us, so be patient. Akhilesh is mining graduate and he is world leader in network security, and mostly he goes to Davos for AI and other activities. So we are trying to get him. He has joined, but he's not showing there. क्या हुआ? He's online. Hi, good afternoon. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you now. Yep. Yeah, we can hear you. Right. So let me know when we are good to start. Yeah. Is it about my session? I'm fine. Okay, looks like we are both here to present. Hi, I'm Akhilesh. Okay. Okay.
Akhilesh ji? Yes, I can hear you. It appears you cannot hear me. Can you hear me, sir, now? I could hear Dr. Srinivas and we could chat. So, okay, let me try speaking again. Good afternoon, everyone. Hi, can you hear me? Okay. Okay. All right. Good afternoon, everyone. My name is Akhilesh. Pleased to be here today with all of you. I do hope you can hear me and I'm not talking to just myself in this room, but hopefully if any of you can hear me, just give me a thumbs up on the reaction and I'll be okay. But if you can't, that's fine too. Dr. Srinivas, I think, hope you can hear me. So then we can go with that assumption that if you can hear me. Yes, very much, very much. Okay, all right. So I will talk about a topic which is something I would say I'm not the deepest expert on, but I'll try and share my perspective. I'm here primarily for the love of and the respect for Dr. Sushil Bandari. He is the professor who taught us, and also not only he made me slightly more intelligent about mining, but also about life. So here I am talking for that respect I have for Professor Bandari. So the topic of my conversation today is, will the next mining engineer be an algorithm? That could be one hypothetical question we could start with. And but before I go any further, I do want to tell you about this story. This is one of my favorite story whenever I come to a conference like this. This is a story of course, you can all see Albert Einstein. But there was a time when Albert Einstein was a genius and he already had received Nobel Prize, but a lot of people didn't know how he looked. And those days, there wasn't an internet, there wasn't a LinkedIn profile.
sir, the topic which you cover is really not difficult. I have sat through maybe 100 times you've told, and you use exactly the same for every time you talk about it. I have memorized every single thing which you talk about the theory of relativity. A little bit reluctant, but Albert Einstein said, fine, why don't you run the lectures today and I'll sit at the back of the class. And his driver actually came and presented the theory of relativity. And everybody just loved it because his driver had memorized everything about the theory of relativity. In fact, the room finished with the thunderous applause. While he finished and he was just about to get off the podium, somebody asked a question saying, sir, I have a question for you. And the person asked a very difficult question. At that point in time, Albert Einstein driver, of course, he didn't know the answer. He says, thank you so much. This is such a simple question that even my driver can answer. And then he pointed it to Albert Einstein. And of course, the story goes on from there. So for those of you who are listening to me, I can tell you, I'm actually not the mining expert. I am the mining expert's driver. I'm not the person who knows all the answers. So if you ask me a difficult question, which I don't have the answer, I will point to somebody in the audience because you will know better than I do. So I want to start with some disclaimers saying I'm not an expert in mining. My comments are also not substantiated with academic and research rigor. All of you applied that, and when I looked at the list of research paper many of you submitted, I kind of was quite embarrassed to say, I'm going to talk about something which is not so rooted in the academic and research rigor. And if my comments seem absurd, I apologize in advance, but hopefully you will find something which will be interesting. And here I want to start with my first hypothesis, which basically is that unfortunately or fortunately, I don't know, whatever you will look at it, expertise will be nearly free. So in time to come, you won't be paying for expertise. It'll be available for free. I know it's for people like me who work for KPMG, it's going to be a difficult task because I will not get paid for the advice which I give. But the reality is that the outcomes will be expensive. So it's not going to be that you'll get paid for knowing the answers. It's about, how do you apply those answers? We've already seen the generative AI and many other models like OpenAI model, Llama, and many others actually can synthesize the world's best content which is available. So the expertise is nearly free. In fact, I've now started to consult with some of those specialized legal LLMs on the topic which I work. I think many of you also consult some of these medical LLMs when you are to figure out what's going on in your world, in your life, in your with your body. And trust me, those expertise is nearly available for free and maybe sometimes better than your own doctor. And therefore, I always say that, I'm not here to tell you what you should know about. I'm here to talk about what you already know, but how do you really apply to it? So the reality is that the majority, and it's not all, majority of the disruptions in any field are not imagined or powered by the experts. Now, however harsh and sad this truth may lie, it is a reality that the people who are experts in those fields are not the one which do disruption. I don't think that you would believe that the Uber was created by somebody who was in a taxi business, or was Airbnb created by somebody who were in a hotel business. Those are some really good examples. But I think even if you look around everywhere, the disruptions hardly come from people who are the expert in those fields because they're all conditioned, of course, with the exception of biotechnology. So the biotechnology disruptions are all largely created by the experts who are the expert in biotechnology. But from that, I also hear this question from most of the time when I talk to people saying, what could happen next in that industry? And the response I get many times saying that everything that could be invented has already been invented. I'm sure those of you who are doing research are also dealing with this phenomena saying, what should my next research topic be? Because, there's a lot of stuff which has already been done. But if you are struggling with that syndrome, I will tell you this very funny, very interesting story. The wheel was invented somewhere around 6,000 years ago. Of course, that wheel at that time did not look like this round wheel. There was a square wheel, there was a jagged wheel and all that, but the wheel has been in our life for nearly as much as 6,000 years. The formal luggage, when people started to carry luggage, not in their portleys, but in the real formal luggage, is also about more than 200 years old. So it's in 18th century, or maybe the advent of early 19th century, when we started to have formal luggage industry. But it wasn't until the 1970 when somebody felt that, could you put a wheel under the luggage and actually take away the stress of carrying it around the airports, bus stations, and everywhere else. So the fact that the wheel and the luggage existed independently for several thousand years and several hundred years doesn't make it very obvious for them to be connected. And that is the inspiration of my thinking, that there is so much more which we can innovate, which we must innovate, which we haven't innovated. And that's right in front of our eyes. And I will say that this is something which is hidden in plain sight.
So why we are talking about AI in mining? I'm sure you guys are all expert, but as an outsider, somebody who understands a little bit of mining, I do want to talk about this one big advantage the mining has is that it's got high volume of data, but the miners, people who deal with that data most of the time, all of them may not be high skilled. Of course, I'm not talking to this room, I'm talking to people who are on ground in the field and the mines. There's a significant disparity between the sophistication of data which is created by machines and the ability to utilize that data. The second thing is precision is profitable. If we could improve the drilling precision, if we could improve exploration efficiency, if we can improve the milling effectiveness by a small percentage, it adds dollars to the bottom line, if not in billions, certainly in millions. And the third one, which is really, is that the mining is highly dangerous. It's a very difficult activity. I'm sure you know it better than I do. And the last one is there's a huge sustainability squeeze, which I'll talk about right at the end, that we all are here to say that we must leave this place better than we found it, and we can't destroy it by doing irresponsible mining. So those are the four very compelling reasons saying why AI could be very apt to be applied in mining. And I want to tell you my own personal story, and this is my personal story of 1993, which is really takes you back many, many, many years. As you can see, nearly 30 years behind I've kind of gone in life. That's me in 1993 at the same college where I think many of you belong to. And I was taught in that time a formula which is called the Bandari's formula. I'm sure Professor Bandari is in the room here, and he would remember it better than I do. But I remember learning about this formula, and not just learning about this formula. I actually did a lot of field trials with him. I had the privilege of going with him, doing lots of different blast patterns, trying to analyze that, and then have a tiny looking seismograph to report the findings, say, what is the ground vibration I got out of it, what is the blast efficiency I got out of all. And I learned that nearly 20 years after possibly he had done that research and written that research paper. For the purpose of this presentation, I actually went back to find that paper, and I could find some excerpts of that where how the burden is calculated with a coefficient and an additional factor to say that if you apply this kind of thing where your burden is equal to about 0.024 into the diameter plus 0.85, that's a kind of constant, you will get optimal blast pattern. But is that the world which we are living in? The reality is in 2025, the world which we are living in is very different, and we certainly cannot just rely on the empirical models, and what the world could change is what I'm here to talk about. So what's changed? Of course, I'm not talking about what changed since then, lots have changed, but what's really changed in the world of technology is that we have moved away from the input primarily being a human entered data to computer vision. I think this is one of the most fundamental shift I've seen in technology. I follow technology intently for all these years. That one of the big challenges which we had at that point in time, that every input which went into computers was actually entered by humans. And that created a huge limitation, is what I'm going to talk about. And the second one is that at that point in time, I'm just guessing, I couldn't find the 1970s research paper, but that was done using a basic regression. But now today we've got multi-model data, they do auto fit. You really don't have to do all that computation and heavy assessment, assumptions, and so many field trials to get to that answer. And you can get really answers differently. And if I would talk about processing power, I really can't find a large enough scale to compare the processing power which existed in the past and what it exists today, thanks to the cloud and hyper-connected world. In fact, I fondly remember my trips with Dr. Bandari to go to several places. And I do want to call out, I think I must have told this story maybe 50 times to many of my people. His ability to intuitively identify which direction we are going. I remember he used to pick up the sand in his hand and actually throw it to say that, what's the kind of the vibration we are talking about. I think that kind of, you don't need to deal with those things which we did at that point in time. Fortunately, unfortunately, we have a lot of expertise now available through processing power and not just the human intuition which we had at that point in time. I want to give you some very interesting comparison. I went back to 1970s because that is the time when that particular formula, and I'm sure you're talking about saying, why am I talking about that formula? Because that formula is really ingrained in my head to say that how analysis was done, how statistics was applied to get some empirical outcomes. So in 1975, most people did not own a camera. Okay, but those who did, the average camera at that point in time was about 100 kbps or what's called the 0.1 megapixel in today's term. If you were to look at it today, the average camera, I'm sure most of you in the room have, would be about 30 to 40 megapixel. But the people who do really a lot of industrial work,
currently the camera which you're using is about 400 megapixel. So from 0.1 megapixel, we have now reached to 400 megapixel. That sounds like an exponential growth, we all know. But did you ever wonder what is the resolution of a human eye? Interestingly, the resolution of a human eye statically is about 50 megapixel. Of course, the dynamic resolution of human eye could be about 500 megapixel because we have a different eye structure. But the reality is that, a static human eye can measure up to 50 megapixel. And that's why it can hardly differentiate between a picture taken with a 6.3 megapixel camera and a 12.8 megapixel camera. And we are talking about industrial cameras which are hitting 400, 500 megapixel. So how could we say that we can continue to rely on human input, or the input which was measured, created, and generated by using human eyes? We have to move where the input is created directly from computer vision and it goes straight into the computer. And that will be the powerful outcome which we'll see. So today what we're talking about is that the high resolution and high speed cameras are far better than creating data input sources than human eye. So we don't have to limit to what it is. This, I gave you just one example of human eye, which is one of our big limitations. But if I have to compare everything, the human body, if I have to compare our brain with the computational power, we are highly limited compared to the TPU or GPU power which cloud computers have. Of course, the humans have a contextual memory with better recall, but still machines have now become so smart and capable to do recall, which is based on context. There was a thing where humans had thinking superiority. That's going away, fortunately or unfortunately, and we have machines. We can connect the dots, and if not think exactly or irrationally as humans do, they possibly can do rational thinking and many other things. Our nervous system, which transmits signal from my brain to my hand and my eyes and all of that, is actually much slower compared to the data networks which we all deal with, even on the wireless basis. Our ears are highly inefficient compared to the senses which we use in many areas. And of course, the touch and skin is highly subjective. So the point I'm trying to make is that the world is moving away where we have to rely on machine inputs and machine outputs, and hopefully we will just enjoy the benefit. I'm a huge techno optimist, and I remember some places I read that the future data centers will have only one human and a dog. So the future data center will just have one human and a dog. The job of the human will be to feed the dog. And the job of the dog will be to make sure that the human doesn't touch any of the computers. So that is the kind of world which we're living in, which will be autonomous, and hopefully will have better outcomes than what we are seeing. And my third promise is that English will be the most used programming language in the future. We won't have to learn the Java, the Python, the R, and all of those kind of things. Generative AI will make it easier, if not completely eliminating the use for programming language. So imagine if you could write, and English is just for an example, it could be Chinese or whatever, if you could write in your own native language to do the coding, why do you really need to do, and the speed with which a lot of things could generate. So what? If this all is going to happen, what will happen, the impact on mining? So therefore, I'm saying that, the classical regression-based model are now moving to AI-optimized models. So when it comes to blasting, why do we need to do empirical experiments only? That was the limitation which we lived in it. But how can we now do fully AI-optimized blasting? How could we take the benefit of the multiple variables? We don't even need to measure through human inputs. You can have high-speed cameras which can actually detect the blast efficiency and can provide the input without having any human in the loop. And I'll talk about, some of you might be thinking that, am I talking about sci-fi and all that, but I'll tell you some of these realities. So what we are already seeing right now is just with one simple thing, and I'll talk about 5, 6 examples. I'm sure many of you have seen many examples through the day. You could do a much better ore zone detection using hyperspectral cameras. So the hyperspectral cameras can see what a human eye will never be able to see. And how do you improve the efficiency of that? We could do the drill path optimization, which is not necessarily, so in the past, the drill path optimization worked on the classic technologies, but now it can do based on acoustic sensors. We have now developed science which says that based on the sound the drill machine makes when the drill bit hits a particular type of surface, that determines, are you fitting a fault zone? Are you hitting something which is dangerous? So all of those things can be done more automatic. And when it comes to milling, you can have a huge amount of efficiency improvement by just detecting what are the factors. And there's one project which I've been part of where how do you improve the mill efficiency using simple sensors. If I were to talk about across the value chain in mining, these are the 5 examples which I picked up. So on exploration, predictive targeting can reduce the cost of exploration by a factor of 5 or 6. It can improve the efficiency of the outcome. It can also reduce the human dependence on many factors.
When it comes to drilling and blasting, I already talked about the autonomous drilling systems. They don't need to depend on human inputs, and so is blasting. On the loading and hauling, we've got now, of course, automated haulage in many mines. We don't need to have humans driving around those big trucks. They happen to be truly autonomous, and that's going to happen in close to our world as well. And it will also do predictive maintenance based on the equipment health and will minimize the number of downtime and those kind of things. When it comes to crushing and grinding, you've got, again, autonomous control system using computer vision. We'll be able to say, you don't need to crush every kind of thing with the same amount of rigor and speed, depending upon the particle size, depending upon the various kind of thing, or yield. You could have very different crushing and grinding models. And the last but not the least in this one is beneficiation, which is how do you again use computer vision and enhance the flotation control and predict what is the metallurgical recovery of a particular ore processed, and you don't have to rely on the classical models, which take long time and are highly inefficient. Again, you could conserve a lot of water. You could also do many things about energy efficiency if you were to use it right thing. Now, this is where I come to saying that is our optimism well-founded? All the great things which I'm talking to you, is it all here? And if it is all here, why are we not seeing the value out of it? And I'll tell you, there are some of the things which are rooted in also some challenges which we deal with. My first challenge is that the more technology changes, the more it remains the same. And I will tell you this story. The last floppy disk, I'm sure many of you recognize floppy disk. I used it. In fact, I used punch cards when I was in MBM. The last floppy disk was manufactured about 10 years ago. There hasn't been a floppy disk manufactured on this planet in last 10 years. But you'll be surprised that there are a number of aircrafts flying in the air today. They cannot update their navigation database unless they use a floppy. There are trains, again, in developed parts of the world, including America, where the trains rely on the firmware upgrade only using a floppy disk. So the point I'm making that, as much as the technological development is happening, it is all getting pulled back also because of the infrastructural limitation and the life cycle of some of these things which you're talking about. If you're to build today a tunnel boring machine, I'm not going to build it for 8 years because that is the average cycle of a technology. I'm going to build a TBM maybe for 30, 40 years. What technology I put in that TBM today has to survive that time. So the things which the unfortunate reality is that the AI has shortened the life cycle of technology, but the physical world life cycles continue to remain very, very long. And if you thought that was the hardware limitation, let me tell you the software limitation. The programming language, which is today used one of the most, either it is Java or which is based on C++ to some degree. C++ compiler was created in 1972. So imagine we are building a most part of today's internet using a technology, a software programming language, which was written about 50 years ago. So as much as we will talk about the furthering and the forwarding of the future, there is a lot of it which is kind of holding us back. And therefore, sometimes the optimism can be unfounded because the speed of change isn't as fast as we think. I'll give you the next story, which is one of my fascinating learning, which I've had many years ago. This is again the Cold War. There's a big war going on between United States of America or USSR at that point in time. And there's a time when USSR has put Sputnik on space, and now America has to put a man on the moon and bring him back safe, and which is what the mission happened. And July 20, 1969, Neil Armstrong was one of the first person to set foot on moon. When this happened, of course, it costed in those days' time $350 million. And the US government was over the moon in literal sense. But the news articles at that point in time, if you were to pick up at that point in time, were all talking about predictions saying that in next 10 years, we will have moon bases. Lunar travel will be a thing of everyday travel. We'll have lunar colonies. We will also have intergalactic travel. All of those predictions were made saying that in 10 years, we will have so much of stuff happening on the moon. And guess what? What happened? The last person to set foot on the moon was just after 3 years in 1972, Eugene Cernan, which basically was the last person. Since 1972, no man has ever gone onto the moon. So the prediction we all made saying that, hey, it's possible to go onto the moon, but that doesn't mean that something which is possible doesn't mean should be done. The moon mission and many other things associated with this are absolutely not economically viable. And I see that a lot of AI presentation I sit through, a lot of AI presentation are also having overstated ambitions, and they don't fit the bill of does it make money, honey? And if it doesn't make money, it won't work.
So AI, in my view, in mining is not a technological problem to solve, it's an economic problem to solve. And every time when I see some massively long range predictions being made, I think about, the Apollo mission, which actually got shut down. I want to talk about something and I'm coming to the end of my presentation, is this man very, very less known. The name of this guy is Carl Norden. Carl Norden was born in Zurich. He was one of the 5 children, he actually wanted to become an artist, but he had the burden of his family being fed, so he actually turned an engineer. Long story short, after turning engineer, he actually landed up in the US and he was hired by the Navy in the US. And what he created is known as one of the fascinating things, because this is the time when the Navy was going through long range fight again between the friendly nations and others. And he created a device which is called the bomb sight. It's also known as the Norden bomb sight. So Norden bomb sight was initially developed for ship to ship airstrike. It's basically, you fire a missile or a missile equivalent from one ship to another and kill it. And when this program became so successful, the Air Force came to Norden and said, can you build an air bomb sight? And he actually, he's one of the best engineers at that time. He actually created what's called the Norden bomb sight, which was positioned to be saying that this is a bomb sight which can put a bomb in a pickle jar from 30,000 feet. So the precision of the device was so good, saying that you don't need to kill innocent civilians. Once you know the target, you can put a bomb flying an aircraft at 30,000 feet to go and hit a pickle jar. That was the kind of precision with which this bomb sight mission was. Project Manhattan, which I'm sure you all know, this is the second most expensive project at that point in time, the World War II. And a number of people were trained to do this. All they needed to do, the pilot had to feed in what is the flying direction, what is the wind speed, what is the ground difference. And once you say, you say, this is the time to shoot, and it'll go and hit the target. And it was considered to be one of the best devices the US made at that point in time. Reality, even after deploying the Norden bomb sight, not one bomb could actually hit the target directly. Most of the time, Norden bomb sight malfunctioned. The reason it malfunctioned is not because of the bad device. The reason it malfunctioned is that it did not take into consideration the environmental factors. Of course, the environmental factors that when you're testing it in the lab, you really don't know how the wind really works. You really don't know what the cloud cover is, what is the flakiness. And the worst part is that you really don't know how a human mind is working. At that point in time, when I'm flying at 2 or 3 Mach, is my brain working to get the bomb sight to work, which is quite complex. And that exactly is the phenomena through which I say that I see a lot of innovation happening in AI, especially in the high risk zones like mining. And people think that this is the silver bullet which will solve my problem, but do they really understand the context of being in a mine and thinking like a mining engineer and the mental condition thereafter? And that's really a part of skepticism which I have, saying that we can't take a technology which is built in the laboratories and not in the field, and that might just become another expensive Norden bomb site. So what does the future lie? And I'm trying to wrap up my presentation. In my view, the future miners will be the engineers who not only do what the usual mining engineers do, but they train the models and not just calibrate machines. They understand the data ethics. They also understand machine learning operations. They'll all be people which are geodata scientists, and they will really be working in a hybrid roles, which is being in the field and being in the lab. And of course, we will need a lot of emotional intelligence and ethical foresight to get the competitive advantage. And why I talk about the ethical foresight is because, in my view, again, I can be killed for saying this for all the room full of mining engineers. In my view, mining is the most selfish human activity. There's very little upside outside of humans becoming economically more superior. Mining really hurts a lot. It's like, in my view, performing an inefficient surgery on Mother Earth. Can we make that surgery far more efficient? And can we now talk about precision mining, where we don't have to just blast the whole thing off? Can we talk about digital twin mining, where we don't have to actually put people in the risky situation? Can we talk about the non-destructive mining and the growing field of chemical mining, where, like the fracking, where you to get the oil out, you don't need to drill those holes. Can you do the chemical-based mining? And of course, if the Apollo mission was really economically viable, could we mine the outer space instead of mining our own Mother Earth? So too far in my future, my optimism is that the next mining engineer will certainly be an algorithm. Maybe the best one will be those who collaborate with the miners as well as with the algorithm.
So in the world of thinking machine, the human edge lies not in the calculation, but in conscious. With that, thank you so much for giving me this opportunity. And I do believe that we are furthering the agenda of how we make mining a lot more responsible, sustainable, efficient, and economically viable. Thank you. Thank you, Mr. Akhilesh Tuteja Sahab. We are proud of you. I heard so many times about your name from Professor Sushil Bandari sir. Today we are fortunate you delivered a lecture in this conference. And as you suggested about the AI application in mining, as per the topic of this conference, high volume of the data in mining, but skills are on lower side. It's true. In mining, we have a lot of information, but that information cannot be converted as a useful purpose. So that's why without proper use of AI, we cannot say the actual use of this data. So even AI is also depend on the human intervention. Without giving the input, we cannot develop any AI system which is perfectly work. And this he elaborated very nicely, or even he said about the non-destructive mining, chemical mining, which will be the future of the mining. So I thanks on behalf of my and the co-chair, Bhairava Saab and Chandan Kumar Saab. Thank you. Now the next speaker, Professor Sushil Bandari sir. He will deliver the lecture. Sejal, kindly tell the topic of the Professor Bandari sir, I think, did not to say anything about his personality. Everyone is knowing him. Sir, hand over to you. Thank you, Akhilesh. You talked about Bandari formula. Yes, it was only a y is equal to mx plus c, which I did for my PhD in Australia. I said, let me do this, and that became Bandari formula, which I know is one of the 300 formulas which will give you about the same value of burden. But Akhilesh, from the beginning, I came back from Muscat after 4 years. I did not know him, but he used to ask me tough questions, and many times I said, I'll tell you tomorrow. There is no problem. But when I talked to him, and he was very close to me as well as Professor D.M. Surana, who incidentally is sick. He had his stunt, a lot of people are asking me. So when he graduated, his parents came, what should we do? He had got job with Hindustan Zinc, CMRI. He got admission in Kanpur, NITI. I said, if he goes to mining, he'll be ruined. Because we can recognize person, what is he suitable. This is what psychologically we can find out, because topper need not be successful in life. That is one thing clear. He was topper, of course, and he has reached this height, and very clearly he showed. But after that, how I have graduated, that I'll tell you. In 73 years, that's when I was doing card punching. And from card punching, I am trying to learn AI gradually, because people started with me. One group always used to do programming, C, C++. No, it was basic.
GW Basic, C, C++. Every year we used to go on adding something and some programming we used to do. Then by the time I finished in the university, I had reached VB and VB.NET. But now I'm trying to learn AI. And I will not go into all these stories, what are the applications. There are a lot of advantages which you will hear, you have already heard. My digital journey is 75 was card punching plus blasting, then student projects till 2005. And in 2001, I had gone to Australia and I saw everybody was using software. And I realized that this bench, second bench of the south side has got different rock than the other. So people, if he has left the mine, we are lost without experience. And it is still very much intuition, as he mentioned, because I had left him in Aditya Cement, and that joint, it was 6 powder factor. For years, it became 14, 13 powder factor, and which gradually increased in JK and Birla Cement and all this. So you have to understand the rock, and we used to do this. So my journey has been like this. Then with Australian consultant, we developed predictors for vibration, fly rock, and so on. And now we started, my son, that was with the younger son. Elder son, he was with Accenture and all this, IBM, Accenture, PwC. He said, let me sell your product. So beginning I sold to Aditya Cement, is where CP Pariyar, he used to work very closely with me. Sir, इसमें यहाँ पे ये आना चाहिए यहाँ पे. So industry से develop किया था blast information management system data. और आज मेरे पास में सिंगरेनी के 22,000 ब्लास्ट के डाटा हैं. कोल इंडिया में 7 माइंस में चल रहा है और मेरे पास खूब सारा डाटा है, पूरा डाटा है, वाइब्रेशन भी होगा, फोटो भी होगा, वीडियो भी होगा, all drilling parameters. But problem is the rock. We do not have information other than कि हाँ ये सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम. जब तक कि मेजरमेंट्स वाइल ड्रिलिंग वाला सिस्टम नहीं आ जाएगा, तब तक ऐसी स्थिति रहेगी हमारे प्रदेश में. और अब सॉफ्टवेयर कोल इंडिया में चल रहा है. 7 बड़ी माइंस दुनिया की, one of the largest mines है. Now last week NMDC, and there it was different way. In Coal India, culture is totally different. NMDC is going to be a really thing which I hope we can do much better what we have not been able to achieve so far. कई लोग सिंगरेनी में मेरे पास 22,000 तो डाटा तो 3 साल पहले थे, 3 माइंस का. जामुल में 7 साल से वो यूज़ कर रहे, डाटा हमारे पास में है, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, वाइब्रेशन, एनीथिंग व्हाट यू वांट विल बी देयर. सो डाटा था. अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है. कंप्यूटराइजेशन इन माइनिंग इज़ टोटली डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ ऑटोनोमस. तो वहाँ पर मैं PhD का एक्सटर्नल सुपरवाइज़र हूँ. और जब मैंने ये सारे डाटा मैं लेता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, माइन एक्सीलेंस स्टार्ट होने के पहले ही आदित्य सीमेंट, ये सारी जगह पे विक्रम में, उधर साउथ में, सब जगह जा चुका था और यूज़ कर रहे थे लोग. एक चीज़ जो पाई मैंने कि जब तक CP परियार वहाँ थे, इट वाज यूज्ड. द मोमेंट ही लेफ्ट, दे स्टॉप्ड. वही हाथ से लिखना या एक्सेल में डाटा रखना. तो आदमी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लीडरशिप क्या प्रोवाइड करता है, उसको किस में इंटरेस्टेड है. तो
अब ये डाटा मिल जाता है, रिपोर्ट्स बन जाती है, डिज़ाइन कर लेते हैं, एक्चुअल ब्लास्ट, ग्राउंड वाइब्रेशन प्रेडिक्शन, एयर ब्लास्ट प्रेडिक्शन, फ्लाई रॉक प्रेडिक्शन काफ़ी कर लेते हैं, सारा अच्छे से हो जाता है। उधर से आफ्टर ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग ये डिज़ाइन कर लिया, यहाँ पर सिमुलेशन कर लिया, फिर डिज़ाइन किया, ड्रिल मशीन को भेज दिया सीधा कि ये ड्रिल करो, ये पैटर्न है, या ड्रिलर को दे दिया। उसके बाद में एक्चुअल ड्रिलिंग विल बी डिफरेंट, जो डिज़ाइन किया है वो डिफरेंट है, तो QA/QC करना पड़ता है। मैं जब 2003 में गया था ऑस्ट्रेलिया तो पहली बार सुना कि QA/QC क्या होता है। मेरे को तो सब मानते हैं एक्सपर्ट है, इस देश में तो होता ही नहीं है। तो मैं जब भी जाता था सबको कहता पहले टेप ले लो, मेज़र कर लो, फिर GPS यूज़ करने लगे। अब कोल इंडिया में DGPS यूज़ करते हैं। और अब जो ड्रोन की बात आ रही है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू यूज़, 8 माइनिंग इंजीनियर्स वुड बी अपॉइंटेड, स्टार्ट हो गया काम। DGPS माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर से लिंक करना, फेस प्रोफाइलर, इनिशिएशन, एक्सप्लोजिव चार्जिंग, सब रिकॉर्ड एक kg का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू गो टू मशीन डायरेक्टली एंड अकॉर्डिंग टू आपके डिज़ाइन के हिसाब से चार्ज करेगा। इतना सॉफ्टवेयर हमारा बन गया। और लोडिंग और क्रशिंग और इसका डाटा आपको रखना है, और आपके पास में है, हर माइन के पास में ढेर सारा डाटा है सिस्टमेटिकली, कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। तो ये पूरा हमारा सर्कल है, हर एक किसी के पास डाटा नहीं है, लिमिटेड डाटा है। ब्लास्ट डिज़ाइनर, ब्लास्ट बिम्स, ड्रिलिंग का डाटा है, फ्रेगमेंटेशन का डाटा है, एनालिसिस हम कर सकते हैं, माइन इंफॉर्मेशन, ड्रिल इंफॉर्मेशन, एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, ये रूटीन में है। एनीबडी कैन गो टू आवर साइट एंड सी दैट डेमो, और गोविंद एंड भूपेंद्र आर हियर, दे कैन शो यू। और एडमिनिस्ट्रेशन के यूजेज हैं, तो ये नीचे वाले में सिमरन हमारी ग्रेजुएट, ऊपर पंकज हमारा ग्रेजुएट, जो कई लोगों का दोस्त होगा। तो ये लोग DGPS से पहले सेट कर देते हैं टोपोग्राफी एंड फेस प्रोफाइल, दे गेट, देन वी डिज़ाइन, वी सिमुलेट, देन कनेक्ट DGPS आफ्टर ड्रिलिंग कि कितना फ़र्क आया। फिर ड्रिल कोऑर्डिनेट्स कैप्चर्ड, पोस्ट ब्लास्ट डाटा, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, वो भी आपको रखना है, वाइब्रेशन रखना है, डस्ट कैसे जा रही है उस पर भी डिपार्टमेंट में था। तब DRDO के लिए प्रोजेक्ट किया था, बिरला सीमेंट एंड जैसलमेर में। तो ये डिज़ाइन 3D डिज़ाइनिंग कैन बी डन, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ होल्स। तो मैंने देखा कि अब तो AI आ गया, इतनी बात सुनते हैं, ये ड्रोन से प्रोफाइल लेने के बाद में हम पैटर्न बना देते हैं, पैटर्न आपका उसके हिसाब से लग जाएगा। एनीबडी वांट्स टू सी भूपेंद्र एंड गोविंद आर हियर। ये एक्चुअल कोल इंडिया का वीडियो है, ड्रोन उन्हीं की फाइल है। Anyway, so I can proceed. This is the way we can do it. ब्लास्ट डिज़ाइन के सारे पैरामीटर्स, KPIs सब रिकॉर्डेड है। आप ब्लास्ट करने के पहले एक्सीडेंट कर लो कंप्यूटर में, बाद में नहीं, इट इज़ पॉसिबल। आपको टेलर करना पड़ेगा अपना डिज़ाइन, कितना फ़र्क है। आपको जो भी करना है आप कंप्यूटर में कर लो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अभी मैनुअल कर सकते हो। नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न AI एंड ट्राइंग टू डू दिस। एंड ये जो आप वाइट शर्ट में देख रहे हैं बच्चे, ये सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के और AI और डाटा साइंस के बच्चे हैं, समर ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे पास, तो मैं इनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी फॉर एवरी ब्लास्ट, कोल इंडिया के ब्लास्ट में
ये अवेलेबल है हमको। हर एक ब्लास्ट का पूरा KPI देते हैं कि ये ब्लास्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट, फ्लाई रॉक, मकपाइल डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट। इसके लिए हमारे पास ऐप भी है, फील्ड में ही फ़ोटो ले लो, फील्ड में ही वीडियो ले लो, अपलोड हो जाएगा। एवरीथिंग यू कैन डू इन द ऐप, ड्रिलिंग का और इसका दोनों उसमें दिया हुआ था। अब मेरे पास में उस सॉफ्टवेयर ब्लास्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से मेरे पास में ढेर सारे डाटा है, जेंट माइन का है, ये 48 पेज है मेरे पास, बर्डन, स्पेसिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। अब मैंने इसको, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक PhD स्टूडेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, AI इंस्टीट्यूट, डीकिन यूनिवर्सिटी। ये सिंगरेनी के ब्लास्ट 22,000 ब्लास्ट हर वीक हम रिपोर्ट देते थे और अभी भी वो चल रहे हैं। कभी कोई यूज़ नहीं करता है इन्फॉर्मेशन को। इंडस्ट्री की दुर्गति ये है कि कोई यूज़ नहीं कर रहा। आपके पास ढेर सारा डाटा है, डाटा का कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन जब मैंने इसको, मेरे 2 पेपर पब्लिश हो गए उनके साथ, AI वालों के साथ। उसने PhD जो वेंकट है, इसने बोला कि सर इस आपके डाटा से तो AI काम नहीं करेगा माइनिंग में, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट। ये फार्मूला जो है, ये लाइमस्टोन माइन नियर कोयम्बटूर, 60 साल पुरानी माइन थी, आँख फूट गई किसी की। मेरे को बुलाया राजेंद्र सिंह राठौड़ और मेघराज वाज देयर, ACC का राजेंद्र सिंह राठौड़, कि सर आप आओ। माइन बंद, मिनिस्टर का घर पास में। तो इनका जब देखा, जब वापस प्ले किया, हाथ से तो सब डायरी में लिखा हुआ था, वो रो रहा था ब्लास्टर की, सर क्या हो गया, मेरे 20 साल की एक्सपीरियंस है ब्लास्टिंग में, मेरा एक्सीडेंट हो गया। 1600 गाड़ियाँ जाती है हाईवे पे और 1 घंटे में जा रही है 1600। साइकिल रिक्शा, केरला तमिलनाडु कनेक्शन है, तो वो 5 मिनट के लिए रोकते हैं बड़ी मुश्किल से, 2 से 3 के बीच में, और फिर भी आँख फूट गई। तो उनके तो 4 होल पीछे जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, पीछे के होल आगे भागे, तो वो तो फ्लाई रॉक हो ही सकता है, कोई ना कोई कारण है। तो रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, वीडियो है नहीं, आप कैसे असेस करोगे? सो आई टोल्ड ACC मैनेजिंग डायरेक्टर कि आपके पास तो हाथ से रिकॉर्ड है, किसकी गलती है? कंपनी की और DGMS की। रेगुलेटर्स, आपने तो अच्छा किया, IBM में सब पेपरलेस कर लिया, वहाँ तो अभी भी नए MMR और ये जो कोल माइंस रेगुलेशन में हाथ से ब्लास्टर को रिकॉर्ड रखना है। क्यों भाई, क्यों रखना है? अगर मैं पासबुक बैंक में प्रिंट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर भी रजिस्टर प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। इंडस्ट्री की दुख ये है कि रेगुलेटर्स को पता नहीं कि क्या करना है। मैं आज नहीं बोल रहा, मैं 25 साल से यही बोलता हूँ, मैं तो ओपनली हूँ, प्रोफेसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंडस्ट्री मस्ट लर्न दिस। तो मेरे पेपर पब्लिश हो गए, हमने आइडेंटिफाई किया कि ड्रोन की से मैं होल की लोकेशन ले लूँ, कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ है, बादल है, कौन से एंगल से ले रहे हो आप, ड्रोन से ले लो, कह दो कि ड्रोन से, लेकिन डिफ़िकल्टी बहुत है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। मेरे को मकपाइल का प्रोफाइल लेना है, मेरे को बैक ब्रेक लेना है, बट एवरीथिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज आप माइन के मैनेजर या फोरमैन है, आपको पता है कि मेरे इस बेंच में ये है, इस बेंच में ये है। उसी तरह से जो अखिलेश ने बोला कि जॉइंट 5 दिन में वाइब्रेशन, ठप्पा कंसल्टेंसी के लिए जाते थे कि आपको रिपोर्ट चाहिए तो ठप्पा लगाएगा प्रोफेसर, तो ठीक है, गलत है, सही है, कोई पूछता नहीं, और 25 साल तक चार्ज पर डिले वही चलता है और कुछ नहीं है आज तक। 25 साल पहले जो हो गया पूरी माइन का अरे रॉक तो चेंज हो रही है, मेरी साउथ की रॉक अलग है, थर्ड बेंच की रॉक अलग है, लेकिन रखेंगे वही। तो जब अब ये जो अब यहाँ पे करने जा रहे हैं NMDC में, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, जो मैंने वीडियो दिखाया वो डिज़ाइन करेंगे, लोग DGPS भी रखेंगे कि आज पॉसिबल नहीं है ड्रोन उड़ाना,
डाटा लेना, बिफोर ब्लास्ट, ड्यूरिंग ब्लास्ट, आफ्टर ब्लास्ट, सब चाहिए मेरे को इन्फॉर्मेशन। लेकिन उनके पास में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, शॉवल के रिकॉर्ड्स हैं, कन्वेयर के रिकॉर्ड्स हैं, तीनों क्रशर के स्टेजेस के क्रशर के रिकॉर्ड है, जो सबके पास में होता है। एनर्जी कंजम्पशन एवरीबडी कीप्स, बट उसको यूज़ करना है। ये पूरा प्रोसेस, ये जामर कोटरा में किया। हमने 3 महीने का प्रोजेक्ट दिया इन्होंने, और हमने दिखा दिया कि भाई आपका इतना थोड़ा सा चेंज करो। ब्लास्टिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, हर ब्लास्ट रॉक चेंज हो जाती है एक ही बेंच में, इट इज़ नॉट इजी। ये सब किया, रिडक्शन हुआ, लेकिन आगे तो माइनिंग इंजीनियर को कन्विंस होना है। वो सोचते हैं कि मैं प्रोफेसर साहब आके हाथ जोड़ूंगा, हम तो सेल्समैन है नहीं, कमर्शियल मैन है नहीं, सीधी बात ये है। लेकिन इंडस्ट्री को सोचना है कि मेरे को फ़ायदा क्या है। अब अंडरग्राउंड में अभी हमारी टीम साउथ अफ्रीका में, अंडरग्राउंड में डाइल्यूशन और आपका ओवर ब्रेक सीरियस प्रॉब्लम है। रिंग ब्लास्टिंग में रियल प्रॉब्लम है। गोल्ड माइंस में, हट्टी गोल्ड माइंस में कहते हैं जियोलॉजी के, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर IAS है, तो बोलती है कि 5% का फ़र्क है जियोलॉजिस्ट में और एक्चुअल गोल्ड में। गोल्ड में तो एक एक बूंद मेरे को ढूंढनी है, एक एक स्पेक। तो अगर ठीक से करें, अभी यू विल बी वंडरिंग दिस, 3 महीने का प्रोजेक्ट था, 2 माइनिंग इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, नया सॉफ्टवेयर बनाया अंडरग्राउंड रिंग ब्लास्टिंग का। ये आपका रिड्यूस डाइल्यूशन करना है, आपको वाइब्रेशन कंट्रोल करना है, रिड्यूस ओवर ब्रेक करना है, नहीं तो डाइल्यूशन होगा। मेरे को इसका सारा ध्यान रखना है। ये हमने क्या किया, ये गायरोस्कोप हर होल में भेजा, पुश किया गायरोस्कोप, तो उससे मेरे को होल के कोऑर्डिनेट्स, हर मीटर पे होल के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तीनों कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में ड्रोन उड़ाया अंडरग्राउंड में, स्टोव का सर्वे किया। यहाँ तो उड़ा था तो एक गया, रजनीश आल्सो कंफर्म दैट एक ड्रोन अंदर गया। तो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन कोई करने वाला भी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर हमको अब ये गए 1 साल तक उनको ट्रेन करना है। जो प्रॉब्लम मैंने कोल इंडिया में देखी, थोड़े दिन में तो ड्रिलर ब्लास्टर चेंज हो जाता है, उसको तो ट्रेनिंग पता ही नहीं, उसको यूज़ कैसे करना। GPS तो वो टोटल स्टेशन तो भेज दिया, और अब DGPS यूज़ कर रहे हैं कि वो इजी हो गया उनके लिए। तो टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो वो ओवर ब्रेक जब होल्स का किया, वो तो आउटसाइड ओवर बॉडी है, आपका सारा एक्सप्लोजिव बर्बाद, आपका होल्स बर्बाद। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये डिज़ाइन, और वो प्रॉब्लम है। दे वर सरप्राइज्ड। तो 3 महीने का उन्होंने, अब 1 साल तक आप हमारे लोगों को पहले ट्रेन करो इनको यूज़ करने में। अभी अपने देश में तो टाइम लगेगा सोचने में कि ये ऐसे होने वाला है, लेकिन उदयपुर में जब अमित ने प्रेजेंट किया था, संजय ने, तो इमीडिएटली जाम्बिया का आ गया कि हमारे यहाँ पर भी 3 महीने आप डेमोन्स्ट्रेट करो। तो दूसरे लोग जल्दी पकड़ते हैं अपने माइनिंग इंजीनियर्स। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपको इनको नई टेक्नोलॉजी बतानी है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे चेंज होगा। बहुत चेंज आया, डेडिकेटेड लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है। लेकिन दुनिया भर में माइनिंग इंडस्ट्री बहुत स्लो चलती है, न अपना चेंज नहीं करते, क्योंकि कब क्या हो जाएगा पता नहीं, वी डू नॉट नो। तो ये होल डेविएशन, एक्चुअल डिज़ाइन लेंथ और डिज़ाइन और डेविएशन इतना होल्स में आ रहा है, ये रियल रिंग का डाटा है। तो काफ़ी सारे फाइंडिंग्स थे। तो क्विकली मैंने एक आइडिया दिया, AI अब कैसे अप्लाई करूं। उसने तो मना कर दिया कि सर ये तो आपसे, ये तो माइनिंग में होगा ही नहीं। तो ये यंग बच्चों से मैं सीख रहा हूँ कि कैसे करूँ। तो
ये तो माइनिंग के लोग नहीं हैं, 1 महीना 1.5 महीना के लिए हमारे पास आए हैं, बट दीज गर्ल्स एंड बॉयज़ दे हैव डन वेरी वेल। तकलीफ आती है, इन्होंने जो मधुकराई का दिखाया था वेरी लो कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसने किया तो थोड़ा सा एआई अप्लाई करके किया। वो पॉइंट कुछ से, वो तो पूरा फिल्टरिंग करना पड़ेगा, डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, वो तो सब करना पड़ेगा। दैट वाज कंप्यूटर इंजीनियर हु वाज डूइंग दिस पीएचडी। तो इन बच्चों को फिर सॉरी जयंत के डाटा से भी नहीं होता है, दीपिका के डाटा से भी नहीं होता है, घेवरा के डाटा से भी नहीं। हमारे पास तो कितने सारे ब्लास्ट और कितना सारा डाटा होता नहीं है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत पुअर आता है। फिर मैंने सीएमआरआई की रिपोर्ट दी, आदित्य की, बिम्स की पुरानी डाटा थे, लाइमस्टोन में कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसने जो बच्चों ने किया, परसों ये प्रोजेक्ट कंपटीशन में पार्ट लेंगे, इंजीनियरिंग एआई इन इंजीनियरिंग का कंपटीशन कर रहे हैं अपन लोग, तो उसमें करेंगे। उसका ये ड्रोन का सर्वे था। तो इसने पीपीवी का ये फार्मूला अपन यूज़ करते हैं, पीपीवी निकालते हैं, एक ही फार्मूला, चार्ज पर डिले। लेकिन इसने जो इसको डाटा दिया, इसने बहुत सारे पैरामीटर्स किए। साइट तो है ही इजीली कि इसका पिट 1 पिट 2 का कर सकता है। उसने बर्डन, स्पेसिंग, एवरेज, एंड नाउ ही गेट्स कोरिलेशन ऑफ 80%। अभी भी मैं बैठूंगा साथ में कि ये डाटा नहीं लेना है, ये लेना है, बैठेंगे तो कर लेंगे। मीन्स अब आइडिया आ गया कि एआई से मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज़ कर सकता हूँ और क्विकली कर सकता हूँ। जो पहले से फ़र्क आया, हम तो पहले से ही प्रेडिक्शन करते थे, एआई को यूज़ करने से मेरा परफॉर्मेंस ऑफ द डिसीजन इज़ बेटर। जो प्रॉब्लम आई कि ये सब हाथ से भरना पड़ता था, चाहे लैपटॉप में या इससे ऐप से, तो एआई में ऑटोमेटिक करवाना पड़ेगा। दैट इज़ सेंसर्स और ये सब लगते हैं। और 2-3 जगह जैसे सुबह बताया था कि हिंदुस्तान जिंक में आगुचा और एसके माइंस में तो ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन्स है ही, और टाटा में ये वाला ड्रिल मशीन आया। बाकी इस देश में ट्रक्स भी नहीं है, ऑटोमेशन वाले अभी आए नहीं हैं, टाइम लगेगा। तो इससे बेटर आया, इसकी कर्व्स भी बेटर आई। वो जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो बोल रहा था, वो अभी तो पीपीवी वाला फार्मूला स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका 2 दिन ही हुए, इसने सॉल्यूशन निकाला, बैठूंगा, समझूंगा। सो एआई विल गिव मी बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइडेड डाटा इज कैप्चर्ड प्रॉपरली, देन इट इज़ पॉसिबल। अगर आप बिना सिखाए हुए आदमी को कह दे कि तू वाइब्रेशन मेजरमेंट कर ले, तो होगा नहीं, पता ही नहीं है। और कई बार मेरी रिपोर्ट, बाकी वहाँ पर तो हम प्लेक्सी बॉन्ड से करते हैं, यहाँ पे सब लोगों ने कहा कि नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीएमआरआई और बाकी सारी इंस्टीट्यूशन प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। आईबीएम ने मेरी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, ये एक ही जगह पे कैसे कर। अरे भाई, मेरे तो जिस बिल्डिंग को सेव करना है मेरे को तो उसी का वाइब्रेशन लेना है, बार बार थोड़ी चेंज करते। मोस्ट माइंस में या इंस्टीट्यूशंस वो वाइब्रेशन पॉइंट जब मन में आती है वैसा करते हैं, वैसा नहीं होता है। व्हाट आई एम मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक, और कुछ नहीं कर रहा मैं। अपन उसको बिल्डिंग पे ले जाते हैं, एक्चुअल में तो वी आर मेजरिंग ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। इसने फिर ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड कि मेरे को यही फ्रेगमेंटेशन चाहिए, ये मेरा रेस्ट्रिक्शन है, इसने पैरामीटर्स ट्राई करके ही इज़ ट्राइंग ऑप्टिमाइजेशन कि फ्रेगमेंटेशन ऑप्टिमाइज करना है या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये एआई से पॉसिबल होगा। दिस इज़ विच हाथ से तो मैं कर लेता हूँ एक्सेल में, ये सब डाटा एक्सेल में आ जाता है, हाथ से कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन एआई से, ये एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैं पढ़ते हैं तो जनरली अभी एक्चुअल में ब्लास्टिंग में बहुत ज़्यादा ये सब थ्योरी चल रहा है, एकेडमिक चल रहा है, प्रैक्टिकल अभी आया नहीं है। लिमिटेड एग्जांपल्स ही आती हैं इन पब्लिकेशंस में।
यूनिवर्सिटी तो कह देती कि हमने 10 किया या 15 ब्लास्ट किया, हमारा तो हो गया। ऐसा नहीं है, करना तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा रियल रिजल्ट से। तो ये ट्राई कर रहा है बच्चा, युगराज, तनिषा एंड एक और है, मैं तो अब इस उम्र में याद नहीं रहता नाम, ठीक है। तो ये बच्चे ट्राई कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ गैप्स, वी हैव टू ट्राई टू गेट बेटर डाटा, जो कि सारे लोग यही बात कर रहे हो, आप लोग सुबह से यही बात है कि डाटा होने से क्या, सही डाटा होना पड़ेगा। एंड मेरे को ये रियल एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं 2000 तक तो इस पे था, डिजिटाइजेशन जो इंडस्ट्री 3 चल रहा है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई को मैं कैसे अप्लाई करूँ। जो अखिलेश ने बोला कि भंडारी फार्मूला ऐसे बना था, उसके आगे काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है। थैंक यू। Thank you so much, sir. When Professor Sushil Bandari sir is presenting a paper and sitting as a chair, it is difficult to say anything. And when sir said, I started the use of AI in 1972-73, at that time I was not born. So, and मैं अपना कहूँ कि जब 98 में MBA में एडमिशन लिया, तो कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पे बैठने में ही हाथ घबराते थे। हमने तो MBA में माइनिंग में ताश के पत्ते सॉलिटेयर खेल के ही पास कर लिए। So it is a excellent presentation by Professor Bandari sir. Even I have a very small question, sir. As you said, AI application in mining, and one side you said कि for mining strata is changing frequently. So in that case, getting a feedback from AI is, I think, difficult because rock is uncertain. So in that case, नहीं, वो आजकल ड्रिल मशीन्स मेजरमेंट्स वाइल ड्रिलिंग स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नहीं, एक्सप्लोरेशन नहीं, आपका वाइल हर होल की वो रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे पेट्रोलियम में स्ट्राटा का आता है, वैसे ही पीपल आर यूजिंग मेजरमेंट्स वाइल ड्रिलिंग आ जाता है। आपको मोस्टली इंफॉर्मेशन देखो, अभी जैसे बताया कि सुबह भी बताया था मिश्रा साहब ने कि बहुत कम एनर्जी हम 15 से 20% करते हैं, बाकी सारा नॉइस, वाइब्रेशन, रिमेनिंग रॉक को डैमेज करने में काम लेते हैं और पाउडर बनाते हैं। अब हमारे इंडस्ट्री में ये जो फाइंस बना रहे हैं यहाँ पे जैसलमेर में 30 mm के नीचे, वो सीमेंट ग्रेड में जाता है या पड़ा हुआ वहाँ पर। अरे भाई, ब्लास्टिंग तो अब ऐसी है कि जो साइज चाहिए वो आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, और आप सोचो कि हम 15 दिन में जाके ब्लास्ट कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो ये टाइम लगता है ब्लास्टिंग में, बिकॉज रॉक इज़ नॉट फैक्ट्री नहीं है कि एक ही प्रोसेस है, एक ही मटेरियल है। यहाँ पे हर दिन हर ब्लास्ट चेंज हो रहा है। तो वो जो अखिलेश ने वहाँ पे 5 दिन छोड़ा था आदित्य सीमेंट में, नहीं इसमें इस ब्लास्ट के इस डायरेक्शन में करके देखो, और वही करते करते सीपी परियार 6 से 11-12 पिछले 7 साल का डाटा था। ही रियली अच्छे माइनिंग इंजीनियर्स मेरे को मिल जाते थे, इसलिए मैं सीख लेता था। कई लोग बहुत अच्छे माइनिंग इंजीनियर से जो ट्राई करने को तैयार हैं। सुथार साहब, सी सीमेंट के सुथार साहब, यस ही विल ट्राई। देयर आर लॉट ऑफ, मैं कितने नाम ले सकता हूँ जिनके ऊपर मैं सीखता था उनसे, और अभी भी सीखता हूँ। अब इन बच्चों से सीख रहा हूँ। तो रॉक का वेरिएशन आएगा, लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिले सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स। आज बिरला सीमेंट को बंद कर रखा है ब्लास्टिंग। अरे आपने डिटोनेटिंग कॉर्ड से ब्लास्ट करते थे, और हमने जब किया था तो
ऑटो चला के देखा, ट्रक चला के देखा, उनका वाइब्रेशन ज़्यादा था, लेकिन डिसीजन वहाँ है अपने देश में। एक्सपर्ट को नहीं पूछते, वकील साहब जाके ही बात करेंगे। बीबीसी में प्रोफेसर्स लोग जाते हैं एक्सपर्ट डिस्कशन, अपने तो यहाँ गाली गलोच हर शाम को कोई भी चैनल में चले जाओ, जिसको कि कुछ पता ही नहीं वो बोले जाते हैं। तो इसी तरह से एक्सपर्ट सबके ठप्पा लगना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठप्पा कंसल्टेंसी। और मैं नागपुर में आया था 20-25 साल पहले, तब से वो अब ज्ञानेंद्र प्रधान कहता, आप तो कहते हो ठप्पा कंसल्टेंसी। CMRI वाले बहुत नाराज होते मेरे से। और वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जिस दिन तक मैं नौकरी में था आई एम एक्सपर्ट, और जिस दिन रिटायर हुआ आपका रिपोर्ट नहीं चलती है। इंस्टीट्यूशन को मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, आदमी को नहीं करता। ये डिफरेंस है विदेश में और हमारे यहाँ पे। Thank you, sir. Bandari sir is a living legend, and still, whether ठप्पा is not working in the department, पर आपका ठप्पा सर यहाँ चलता है, हमेशा चलेगा। और we are fortunate, जिस झील से आज तक आप हमको गाइड करते रहे, फ्यूचर में भी करते रहेंगे। Thank you, sir. Thank you so much. Next speaker is Vipul Kochar साहब. He will present paper on AI understanding and interface for optimization in mining operation. Vipul Kochar Saab is graduated from the MBM Engineering College in 1992, and he is running his own company and a well-known figure in the computer industry. Presently, he is the chairman of the Alumni Association, MBM Engineering College. So, welcome, sir. Thank you so much. Just give me a second to set things up. Wonderful. So, Shri Ganesh करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, राम राम, जय जिनेंद्र। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी आप मुझसे ग्रीटिंग्स ले लें। आज हम बात करने वाले हैं AI की। मेरी आदत नहीं है खड़े रह के बोलने की एक जगह, बट ठीक है। AI क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि AI सब जगह लगेगा, लेकिन वो है क्या, हाउ डज इट रियली वर्क, मेरा फोकस इस पे रहेगा। मैं माइनिंग इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन धन्यवाद, लेकिन AI से पिछले 7-8 साल से वास्ता है। बहुत जगह पे बहुत सारी बात हुई अभी AI की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप सब इस बात को मानेंगे, अभी किसने बोला था, भंडारी सर ने बोला था कि वो वेरिफिकेशन वैलिडेशन या QC क्या होता है ये पता नहीं था। मेरी सारी ज़िंदगी QC में निकली है, 30 साल से मैं यही कर रहा हूँ। और AI के फील्ड में भी, माइनिंग की बात नहीं है, AI के फील्ड में भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम QC क्या होता है। तो हम थोड़ी उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि AI में कितने तरह का डेटा यूज़ होता है। अभी तक आप सुबह से सुनते आ रहे हैं कि डेटा है हमारे पास में, पर वो क्या डेटा है, कैसा डेटा है। तो आप लोग अगर अपना फ़ोन, अपना चेहरा उसको की तरह यूज़ करके खोलते हैं, तो आपका जो चेहरा है, यानी आपकी फ़ोटो से ली हुई इमेज जो है वो यूज़ होती है। तो एक ये डेटा है। बेसिकली आइडिया ये है कि जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो डेटा एक्वायर करती है। ठीक बात है ना, आँख से हम देखते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर्स के अंदर आप इमेजेस लेते हैं, वीडियो लेते हैं, वो डेटा हो गया। उसके अलावा सुनते हैं तो ऑडियो डेटा हो गया, लिखते हैं तो टेक्सचुअल डेटा हो गया, बोलते हैं लिखते हैं तो उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कि हम सुन के समझ सकें। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग हे सीरी और क्या बोलते हैं उसको, एलेक्सा, इन सबको यूज़ करते हैं, तो वो डेटा भी इसमें यूज़ होता है। उसके अलावा जो हम रजिस्टर में एंट्रीज़ करते हैं बहुत सारी,
वो आजकल कंप्यूटर में करने लग गए, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो भी डेटा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का डेटा है। ऑडियो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए हम आपने कितने बजे क्या देखा टेलीविज़न पे, कितने लोगों ने देखा, ये सारा डेटा कलेक्ट करके आप बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, आपकी नेक्स्ट वॉच या व्यूइंग क्या होनी चाहिए, तो वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वाला हिस्सा हो गया। कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम बात कर चुके। ये गेम्स वाला क्या है? गेम्स का ये सीरियस माइनिंग की कॉन्फ्रेंस से क्या संबंध है? तो इंटरेस्टिंगली गेम्स के थ्रू कंप्यूटर को स्पेशली स्ट्रेटजी के लिए, मूवमेंट के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर यूज़ किया जाता है, फिर देखेंगे उसको। तो जितना भी डेटा माइनिंग में कलेक्ट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डेटा टेक्स्ट की तरह से हो, टेबल की तरह से हो, एक्सेल में हो, वो डेटा ऑडियो डेटा भी हो सकता है। अभी तक किसी ने ऑडियो डेटा की इस पर बात नहीं की, पर अगर आप आई एम श्योर बहुत जगह से ऑडियो डेटा पिकअप करके और आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप में से कितने लोग कार इंजन्स के शौकीन लोग हैं? तो गाड़ी की ज़रा सी आवाज़ चेंज होते ही आप बता देते हैं। तो वो डेटा क्या है एक्चुअली? एक तो वाइब्रेशन डेटा है, दूसरा ऑडियो डेटा है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि ऑडियो डेटा भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एआई है कितने तरह की? एआई से आप समझते क्या हैं? तो बहुत से लोग बोलेंगे चैट जीपीटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस एआई का टूल तो चैट जीपीटी है। वेल, चैट जीपीटी से पहले भी एआई होती थी। उदाहरण के तौर पे जो हमने आज सुबह से बात कर रहे थे, गूगल मैप्स की बात की थी, तो इसको आजकल कन्वेंशनल एआई बोल रहे हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि एआई का फील्ड इतना तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है कि टर्मिनोलॉजी हर 2 साल में 3 साल में बदल जाती है। जो 2 साल पहले किंग होता है, वो 2 साल बाद धराशायी, कोई उसका नाम भी नहीं लेता है। मैंने 7 साल करीब अपनी कंपनी में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया और मैं बड़ा खुश था कि अब ये मैच्योरिटी पे पहुंच रही है, मेरा प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। और इतने में आ गया चैट जीपीटी और सबने उसकी ज़रूरत सबको है उसकी, लेकिन सबने बात करनी बंद कर दी, सब चैट जीपीटी पे मूव हो गए। तो ये हो गई कन्वेंशनल एआई और इसके उपयोग भी लिखे हुए हैं। जनरेटिव एआई का अर्थ होता है एआई अब जनरेट करती है। तो आपने जनरेट करती है अर्थात आप किसी का भी फेक वीडियो बना सकते हैं। बहुत से फेक वीडियो देखते सुनते होंगे, बहुत से नॉन फेक वीडियो भी एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो रील्स में बहुत जगह पे अवेलेबल है। तो ये जनरेटिव एआई है और ये वाकई कमाल की चीज़ है। इससे पहले हम बहुत स्ट्रगल करते थे कन्वेंशनल एआई में कि मनुष्य क्या बोल रहा है उसको समझने सुनने के लिए। वो किसी तरह से हम जो चाहते हैं वो करके दे दे। तो गूगल सर्च अगर किसी ने की है और सीरियस चीज़ के लिए की है तो आपको पता होगा कि कितना कुछ कहना पड़ता था उसको, तब जाके कहीं से कोई एक आध पेपर या एक आध आर्टिकल निकल के आता था और वो भी हमको समझना होता था क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आप चैट जीपीटी को जाके बोलिए मुझे ऐसा करके दे दो। फॉर एग्जांपल मेरी बड़ी इच्छा हुई कि आज की प्रेजेंटेशन मैं चैट जीपीटी से बनवा लूँ। अनफॉर्चुनेटली मज़ा नहीं आया तो मुझे खुद ही बनानी पड़ी। पर मज़ा नहीं आया का अर्थ ये नहीं है कि चैट जीपीटी अच्छा काम नहीं कर सकता है। ये मानिए कि आज चैट जीपीटी जो कर रहा है आने वाले 1 साल में उससे दुगना करेगा और 2 साल में 8 गुना करेगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एआई से कोई बचने वाला नहीं है। तो 2 एआई हो गई, कन्वेंशनल और जनरेटिव। अधिकतर लोग जनरेटिव एआई को जानते हैं। उसके अलावा आजकल जो चल रहा है वो उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई कुछ नहीं है, सेठ जी के बहुत से नौकर हैं और एक नौकर दूध लेके आता है, दूसरा नौकर उस दूध को गर्म करता है और उसमें से मलाई निकालता है, तीसरा नौकर सेठ जी को मलाई खिला देता है। एसेंशियली एजेंटिक एआई क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कुछ एआई वाले, कुछ नॉन एआई वाले और सब मिल के कोई एक बड़ा काम करते हैं और वो मनुष्य की आवश्यकता न हो, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, ये सबकी इच्छा है। तो शिवजी ने किसको वरदान दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्मासुर। तो हम अपने लिए भस्मासुर क्रिएट कर रहे हैं। वैसे भी आज देखें तो अधिकतर लोग अधिकतर टाइम पे रील्स ही देखते हैं। गलत कह रहा हूँ? तो जब आप रील देखते हैं तो आप फुल्ली एंगेज्ड हैं, आपकी आईज एंगेज्ड है, आपकी ईयर्स एंगेज्ड है, आपका ब्रेन देखने में एंगेज्ड है, सोचने में एंगेज नहीं है। तो सोचने की फैकल्टी हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है
और आज हम बोल रहे हैं कि एल्गोरिदम नेक्स्ट एआई माइनिंग इंजीनियर एल्गोरिदम होगा या नहीं होगा। वेल रोबोट तो इसको बोलते हैं एम्बॉडीड एआई। एआई जो खाली कंप्यूटर पे नहीं चलती है लेकिन कोई मैकेनिकल चीज़ के साथ चलती है। तो जो रोबोटिक्स में अगर एआई लगती है तो वो हो गई एम्बॉडीड एआई। अभी आज इसकी बहुत बात नहीं हुई है लेकिन माइनिंग में इसका बहुत उपयोग है। जहाँ पे भी हार्डशिप है, जहाँ पे भी जान का खतरा है, जहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको ह्यूमन से नहीं आ रही है, लगाओ रोबोट, और रोबोट में एआई है, वो अपने आप काम करके आएगा। ये विजन है, ये अगले 5 साल में हो सकता है पूरी तरह से न हो, पर ये कहीं नहीं गया। अगर सरकारें एआई पे रिसर्च बंद नहीं करेंगी तो 10 साल में तो निश्चित मानिए कि अधिकतर जगह पे आपको रोबोट्स दिखने लगेंगे। आज भी घरों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो गोल गोल रोबोट आता है ना, वो बैठ के अपना सब सफाई करता रहता है। आप उसका एरिया डिफाइन कर देते हैं, गया एक आदमी, राइट। अब उस आदमी को क्या चाहिए वो एक अलग बात है, उसके लिए हमको एज अ सोसाइटी गियर अप करना पड़ेगा कि हम सबको वैल्यू चेन में ऊपर लेते जाएं, सिर्फ मैकेनिकल काम ही न करते रहें। लेकिन वो किसी और दिन का विषय है। एम्बॉडीड एआई जो है वो नेक्स्ट वो है आपको ऑटोनोमस व्हीकल जो बिना ड्राइवर के चलता है, वो भी एक एम्बॉडीड एआई है, राइट। तो बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कब तक आ जाएंगी? नहीं आनी चाहिए तो कोई रोक नहीं सकता आएगी तो सही। अब जल्दी ही आ जाएंगी क्योंकि हम उस स्टेट तक पहुंच गए हैं। चाइना में बहुत जगह पे उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, तो आने वाली है। तो वो बाकी जगह रोबोट्स क्यों नहीं आएंगे, वो जरा सोचने की बात है। तो हमारी तो जिंदगी निकल गई, अब बच्चे संभालेंगे। अच्छा, तो एआई काम कैसे करता है इस पे तुरंत बात कर लेते हैं। मुझे 20 मिनट दिए गए थे, शायद 8-10 मिनट में खा चुका हूँ, तो जल्दी हम ये इसमें जो लास्ट कॉलम है उसमें क्वेश्चन मार्क है, वहाँ क्या आएगा? 64 कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला स्क्वायर किया हुआ है? मल्टीप्लाई भी हो सकता था। तो पहले आपने 1 और 1 देखा, बोले 1 और 1 का एक इनपुट एक आउटपुट बहुत तरीके से हो सकता है। इंटू 1 हो सकता है, टू द पावर 0 हो सकता है, डिवाइड बाय 1 हो सकता है, करेक्ट। स्क्वायर भी हो सकता है। दूसरा देखा तो पता लगा कि स्क्वायर है। उस रूल को आपने अप्लाई किया तीसरे पे, वो फिट बैठा तो आपने कहा बराबर चौथे पे लगेगा 8 का 64। अब जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा और जितना जल्दी संभव हो उत्तर दीजिएगा। लास्ट में क्या आएगा? बराबर 12/4 is 3, 24/4 is 6, 36/4 is 9, 52/4 is 7, 81/4 is 9। नहीं ना, तो कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसी को एआई बोलते हैं। एआई क्या करता है? पैटर्न्स ढूंढता है। आपने जितना डेटा दिया उसमें पैटर्न ढूंढता है, उसके बाद वो बोलता है मैं ट्रेन हो गया। आपने अगर 2 ही कॉलम दिए तो वो 2 कॉलम से समझेगा, 4 दिए तो 4 से समझेगा, 10 दिए तो 10 से समझेगा। तो इससे ये सिद्धांत हमको समझ में आता है कि जितना ज़्यादा डेटा देंगे उतना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा तरह का डेटा देंगे उतना अच्छा होगा। वो कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ये 7 हो गया तो इसका उत्तर कैसे आएगा? तो आप एक बार अगर नीचे वाला देखें, पैटर्न दिख रहा है कोई आपको यहाँ पे? 3, 6, 9, 7, 9, 6, आगे 3 हो सकता है, तो इसका आंसर 3 हो सकता है, किसी ने मना थोड़ी किया है। लेकिन अगर आप इन फर्स्ट नंबर जो इनपुट है उसकी डिजिट्स को सम अप करें, 1 + 2 3, 2 + 4 6, 8 + 1 9, 1 + 8, 1 + 8 भी 9। तो अब यहाँ पे संभावना है अलग अलग उत्तरों की। आपने डेटा इतना ही दिया है, अब वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा बेचारा, जो डेटा से सीख रहा है, एग्जाम्पल से सीख रहा है, राइट। एक बच्चा लेट अस से, उसके पिता जो हैं वो बिजनेस के लिए गए हुए थे, पैदा होते ही निकल गए थे, 7-8 साल बाद आए। तो माँ समझा रही थी रिलेशनशिप, माँ ने कहा देख बेटा ये तेरा मामा है, ये तेरा मामा है, ये तेरा मामा है।
फिर वो एक पति आया तो उसके लिए बेटे ने कहा ये भी मेरा मामा है, कि नहीं बेटा ये तेरा मामा नहीं है। तो यहाँ पे ये स्थिति है, 3-4 कॉलम दिए तो उसने मामा समझ लिया, 5वें कॉलम की भी मामा समझ लिया, लेकिन वो मामा नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो इससे ये अलग अलग तरह का डेटा हमको देना होगा जिससे एआई सीख सके। तो अब ये जो सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें हमने क्या किया, हमने इनपुट दिया और कहा इस इनपुट के लिए ये आउटपुट है। बच्चे को सेव दिखाई, बोला ये सेव, एक लाल दिखाई, एक पीली दिखाई, एक हरी दिखाई, ये सेव, ये सेव, ये सेव। बच्चे को 5वीं सेव दिखाई तो बच्चा क्या बोलेगा? सेव है। बच्चा सीख गया, यही मशीन लर्निंग है। अब उसको बेर दिखाएंगे तो क्या बोलेगा? छोटा सेव। मेरा दोस्त गांव से आया था, यहाँ उसको फर्स्ट क्लास में ए फॉर एप्पल सिखाया, बोला ए फॉर एप्पल। उसको पूछा क्या है ये? सब ओरियो है। तो तुम बहुत शैतान हो। अरे बच्चा शैतान नहीं है, उसने एप्पल नहीं देखा। हमको बेर भी दिखाना है, एप्पल भी दिखाना है, तो हमारी लर्निंग जो है एआई की अच्छी होगी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करती है कुछ चीज़। तो मैं आपको गुड डिजी यात्रा किसने यूज की है? सभी ने की है। तो हम डिजी यात्रा नहीं, हम कुत्ता बिल्ली का उदाहरण लेंगे। हमको कुत्ता बिल्ली में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे एआई का, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल। तो हम एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को हम सिखाएंगे कि कुत्ता ऐसा है और बिल्ली ऐसा है। अगर आपको किसी को सिखाना हो कि कुत्ता कैसा होता है तो कैसे सिखाएंगे? कुत्ता दिखाएंगे। तो हम भी मॉडल को कुत्ते और बिल्ली दिखाते हैं, ठीक है? ये क्या कर दिया भाई तुमने? Just give me a second, let me find कि विंडो कहाँ चली गई मेरी। नहीं सर एआई ने नहीं, ये तो इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की। HIS, वेरी वेरी ट्रू। एक्चुअली वो प्रॉब्लम यहाँ से आई है। तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? डॉग एंड कैट। तो ये मैंने बोला कैट, ये डॉग। अब हम बोलते हैं कि इसको कुत्ता दिखाओ, तो हम कुत्ता दिखाते हैं। बिल्ली दिखानी है तो बिल्ली दिखाते हैं। ये मैंने 3 बिल्लियाँ ली, इसकी इमेज दे दी इसको। अब मैं डॉग्स की इमेज लूँगा और वो दे दूँगा। अब मैं कुछ काला जादू करूँगा। वो काला जादू क्या है? वो मशीन लर्निंग है। और ये मैं कहूँगा कि भाई मॉडल, मैंने तुमको कुत्ते भी दिखा दिए हैं, बिल्ली भी दिखा दी हैं, अब तुम ट्रेन हो जाओ, तुम समझ जाओ। तो वो अब समझ रहा है। अब देखिए जो आपके सामने खड़ा है, आपको गलतफहमी थी कि वो इंसान है, वो 60-70% बिल्ली है और 30-40% कुत्ता है। तो अब हम क्या करते हैं? बोलते हैं चलिए छोड़िए, अब बाहर से कुत्ता बिल्ली लाके यहाँ कैमरे को नहीं दिखा सकते, तो हम अब इसको टेस्ट तो करना चाहिए ना हमें, QC, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम अब एक कैट इमेज लेते हैं और इसको बोलते हैं ये पकड़ो कैट इमेज। क्या बोलता है? 100% कैट। यानी हमारा मॉडल सीख गया है कि बिल्ली क्या है। क्या ये कुत्ता भी सीख गया है? लेट अस सी। 99% डॉग, 1% कैट। ये कुत्ता आत्महत्या कर लेगा आज। राइट, ये अलग टाइप का कुत्ता है। हमने बहुत थोड़ा डेटा दिया, बहुत तरह का डेटा नहीं दिया, हर तरह के कुत्ते बिल्ली नहीं दिए। ये बेचारा कुत्ता तो और भी ज़्यादा परेशान है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस हुई हुई है। पर आप समझ गए कि मॉडल कैसे बनते हैं, और ये मॉडल्स की प्रॉब्लम है। अगर हम सोचते हैं कि हमने डेटा दे दिया और सारे मॉडल ठीक बन गए, तो हम बहुत गलत सोचते हैं। किसी को टेस्ट करने की ज़रूरत है कि किन परिस्थितियों में ये ठीक काम करेगा और किस में ठीक काम नहीं करेगा।
बिल्कुल सर। सर आई एग्री कि ह्यूमंस सर्वाइव करेंगे, पर वो सर्वाइवल ही रहेगा, वो फ्लरिश नहीं करेंगे। पर उसकी हम बाद में डिस्कशन करते हैं सर। आइडिया क्या है, अलग अलग डेटा पे ये मॉडल आपका फेल भी हो सकता है, ये संभावना याद रखनी जरूरी है। मॉडल्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक का अर्थ क्या हुआ कि वो आंसर्स प्रोबेबिलिटीज में देते हैं। जैसे उसने बोला 70% लग रहा है कि कैट है और 40% या वॉट एवर दैट नंबर इज, राइट, प्रोबेबिलिटी में आंसर दे रहा है। इससे आप हर बार जब पूछेंगे, संभावना है इस बात की भी कि ये हर बार अलग अलग उत्तर दे, उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपको पता नहीं अगली बार जब मैं इसको यूज करूंगा आंसर वही आएगा या नहीं, आप उस सिस्टम पे आसानी से रिलाय नहीं कर सकते। तो ये एआई सिस्टम्स की प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि जब हम एआई सॉल्यूशंस लगा देते हैं, किसी का सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमको 4 सैंपल चला के दिखा देता है और हम बोलते हैं बढ़िया चल रहा है, क्या वो हर परिस्थिति में चलेगा? ऑन टॉप ऑफ दैट एक और प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एडवर्सेरियल अटैक। हैकर्स पहले पहुंचे हुए होते हैं, एक रैंडम बिट पैटर्न फॉर एग्जांपल ऐसे डॉट 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 कुछ बने हुए हैं, वो टी शर्ट पे कोई पहन के आया है। आपने कहा जी ये तो बड़ी जोरदार टी शर्ट पहनी है आपने। हाँ सर, टी शर्ट तो जोरदार है। कैसे जोरदार है कि जब वो फेस रिकग्निशन कैमरे के सामने गया तो उसने उस आदमी का नाम लेने के बजाय बोला ये तो कंपनी के एमडी साहब हैं, जाइए। ऐसे स्पूफ हम मॉडल्स को रिलेटिवली आसानी से कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की हम हिंदुस्तान में वैसे भी थोड़ी चिंता कम ही करते हैं। राम जी के भरोसे बहुत कुछ अच्छा अच्छा चलता है, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू आवर जॉब एंड डोंट ओवरबर्डन राम जी। सो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एक्यूरेसी, किन किन परिस्थितियों में वो ठीक से नहीं चलता है, ये सब हमें देखने की आवश्यकता है। चलिए वी गो बैक टू, तो आप समझ गए कि एआई काम कैसे करती है। थियरी समझ में आ गई ना आपको। मैथमेटिक्स चाहे नहीं समझ में आई हो, डजंट मैटर, एग्जाम्पल देते हैं और एआई उसको एल्गोरिदम को बोलते हैं भैया सीख लो इससे, और वो सीख जाता है। जितने अच्छे एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल, उतनी संभावना ये है कि मॉडल अच्छा बनेगा। लेकिन मैं इस बात को और डिटेल में नहीं जाता हूं कि क्या क्या कारणों से मॉडल खराब बन सकता है। वो फिर डेटा ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा ढूंढिए। बहुत डेटा माइनिंग में कितना भी डेटा हो, डेटा कभी ज़्यादा नहीं होगा। ये डेटा का मूल सिद्धांत है कि जितना भी लेकर आओगे कम ही पड़ेगा। आराम जितना करो उतना कम, राम का नाम जितना लो उतना कम, वैसे ही डेटा जितना ले आओ कम है। तो प्रॉब्लम नहीं है डेटा की। अब आपने जो देखा वो एक मेथड था जिसको बोलते हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ये एक सिर्फ नाम बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सुपरवाइज क्यों? क्योंकि आपने बोला कि इस इनपुट का ये आउटपुट है, तो वो सुपरवाइज्ड हो गया। आपने कहा या तो ये कुत्ता है या बिल्ली है, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। ये मैं किस लिए इतना डिटेल में बोला सुपरवाइज क्लासिफिकेशन? क्योंकि सुपरवाइज रिग्रेशन भी होता है। आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में यकीन करते हैं? सभी करते हैं, सभी खेलते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आजकल एल्गोरिदम्स आती हैं जो आपके बिहाफ पे खरीद बेच लेती हैं। या वेदर का प्रेडिक्शन होता है कि टेम्परेचर कल कितना रहेगा, तो वो तो क्लासिफिकेशन ही है ना। आप नॉर्मली ये तो नहीं बोलते हैं गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, आप बोलते हैं टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना रहेगा, शेयर का मार्केट का प्राइस कितना होगा, उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। वो कैसे होता है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप नंबर्स की बात करते हैं, इसमें भी आप पुराना डेटा देते हैं और बोलते हैं इस डेटा के लिए ये आउटपुट था। तो जहां पे आपको पुराना डेटा देके आउटपुट निकालना हो और आपके पास आउटपुट पहले से मौजूद हो, वहां आप माइनिंग की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां सुपरवाइज्ड टाइप ऑफ मॉडल्स बनाएंगे। फिर दूसरे मॉडल होते हैं अनसुपरवाइज्ड के, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप में से कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेजन पे कुछ खरीदते हैं तो नीचे उसमें रिकमेंडेशन आई हुई होती है, अब आप ये खरीद लें, इतने लोगों ने ये खरीदा, आपको ये खरीदना पसंद आएगा, नेक्स्ट ये देखिए। वो अनसुपरवाइज्ड है, उसके अंदर में कोई स्पेसिफिक आउटपुट पहले नहीं है, तो आप मॉडल को सिखाते नहीं हैं, मॉडल डायरेक्टली काम करता है उसके ऊपर। तो वो अनसुपरवाइज्ड तरह के
खेल हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी। उसके बाद में होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसमें आप डेटा ही नहीं लेते हैं। आप में से कितने लोग आग में हाथ डालने के लिए तैयार हैं अगर मैं कहूं तो? कोई नहीं है। क्यों? क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, हाथ डाल के तो देखिए आग में है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। करेगा कोई? क्यों? क्यों नहीं करेगा? क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है कि आग में हाथ डालो तो जलता है। ये इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप मॉडल को कहते हो जाओ तुम खेलो, तो वो कुछ भी करता है। जब वो कुछ गलत काम करता है तो आप उसको पेनल्टी दे देते हो, -10 पॉइंट हो गए तेरे, तो मॉडल को बोला हुआ है कि यार पॉइंट सबसे ऊपर रहने चाहिए। -10 मतलब ये काम नहीं करने का है। फिर वो कुछ और करता है, अच्छा काम करता है तो उसको +1 पॉइंट दे दिए, +10 दे दिए, जो भी, तो उसको लगता है ये ठीक है करने का। तो अब जैसे मैंने एक रोबोट बनाया, वो रोबोट चलता है और जाके टकरा जाता है, तो उसको -10 मिलते हैं। और वो सीधा सीधा चलता रहता है बिना टकराए या लेफ्ट राइट लेता है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से रोबोट चलना सीख जाता है, इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो ये लर्निंग इतनी मज़ेदार है और अभी लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं, लेकिन जो हम LLMs वगैरह ChatGPT देखते हैं उसके अंदर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काफ़ी हाथ है कि वो 4 आंसर देता है। कई बार ChatGPT आपसे पूछता है ये 2 उत्तर हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा आपको? हुआ है कभी ऐसा? अगर ऐसा है और आप एक चूज करते हैं, आप क्या बता रहे हैं? वो खराब है, ये अच्छा है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये वहाँ भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। अब हम LLMs की बात करते हैं, तो जनरेटिव AI और LLMs कैसे काम करती है इसकी मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ChatGPT को यूज़ करके जब उत्तर निकाल लेते हैं, प्रधानमंत्री के हिसाब से मुझको क्या भाषण देना चाहिए था, या प्रधानमंत्री ने ये बोला तो फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने कितनी गलत बात करी, हमको कुछ नहीं पता फॉरेन पॉलिसी का क्या है, तो क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए तुम बताओ ChatGPT। तो ChatGPT हमको बताता है और हम मानते हैं उसकी बात। तो क्या ChatGPT समझ रहा है जो हम उससे बोल रहे हैं? ये एक प्रश्न है। नॉर्मली हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हम सोचते हैं हमारे मॉडल्स भी वैसे ही सोचते हैं, लेकिन हमारे मॉडल्स वैसे नहीं सोचते, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, टाइम हो गया? वी आर रनिंग टू लेट। या श्योर, मैं दो ही स्लाइड बची हैं वैसे। तो इसमें जरूरी चीज जानने की क्या है, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है मतलब वो प्रोबेबिलिटीज ढूंढ रहा है कि मैंने 10 लाख अलग अलग किताबें पढ़ी थी, उसमें इस शब्द के बाद ये शब्द कितनी बार आया था, इस शब्द के बाद ये शब्द कितनी बार आया था। यही खेल है LLM का, और कुछ नहीं है। बहुत माने ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसका अर्थ क्या हुआ? मॉडल समझता नहीं है तो आपको उसको समझाना पड़ता है। तो जब आप LLMs ChatGPT से बात कर रहे हो, जितना क्लियरली उसको बोलेंगे कि ये डेटा है, ये करना है, ऐसा करना है, वो उतना ही अच्छा काम करेगा। हावेवर आने वाले 5-7 साल में आप पाएंगे कि ये मॉडल्स बढ़िया से बढ़िया होते जा रहे हैं और आपके साथ काम करते करते वो आप खाली 2 शब्द लिखोगे और वो समझ जाएगा और आपको सारा काम करके दे देगा। पर उसके बाद सवाल ये कि हम क्या करेंगे। AI इन माइनिंग पे मैं जो बोलना चाहता था वो ऑलरेडी बोला जा चुका है, और माइनिंग एक्सपर्ट्स ने अखिलेश जी ने फॉर एग्जांपल बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दी थी। तो इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना, मेरा सिर्फ जो आपको बताने का उद्देश्य था वो ये था कि अलग अलग तरह का डेटा है, आप अपना डेटा समझिए, कितना डेटा अवेलेबल है वो समझिए, उसका आउटपुट है या नहीं ये समझिए, उसके हिसाब से कौन सा AI का मॉडल बन सकता है वो यूज़ कीजिए। आज की तारीख में AI जिसको सिल्वर बुलेट बोलते हैं वो नहीं है। हर चीज़ में AI सक्सेसफुल होगी ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात हर जगह पे AI लगनी चाहिए ये भी कतई आवश्यक नहीं है। कई चीज़ें हमारी क्लासिकल तरीके से मैथमेटिक्स यूज़ करके, लॉजिक यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं। तो जस्ट बिकॉज somebody has said AI, don't really go by that. नमस्कार। Thank you so much, sir. We are running late, so question we can take in the tea break, sir. Sure. Thank you so much, sir. Even your field is not mining, but the way you presented, it is really nice. We know how to AI work
in the background what is going on that we come to know. Thank you, sir. Thank you so much. Our next speaker is Professor K.R. Chaudhary Saab, former head and professor and head Computer Science and Engineering Department, MBM University. Sir is presenting on AI methods and tools in mining engineering. I request to sir also, sir, we are running late, so we can conclude in 10, 12 minutes, 15 minutes. Thank you. Thank you all. This is the topic. I'm going to speak AI methods and tools in mining engineering. More about you can find in my website, where I keep all the information, past, present, what I teach to the students, other academic material, and so on. I'll keep the time limit in mind, but at the same time I'll try to make the things interesting. Machine learning is a field which is a lot of talked about, and how it is different from earlier programs, in the sense, in computers we used to program, and once it was programmed, then throughout its life it will be working in a similar way. No change, deterministic. You can predict the output before running the program. Only program did was automation, fast speed, producing a lot of data, giving the presentation in the graphical form and many different forms. And result of the computation could be directly input to some other programs and so on. The machine learning is, in the sense, useful because the machine learns, and as the data changes, it does a different adaptive work. For example, we drive the car, basic principles of car driving we know, rest of our entire life we keep on learning, and we achieve better and better driving capabilities. That happens in every field, whether you are teaching, whether you are managing, everywhere. This was need from the software, from the programs, and it was anticipated that the programming will remain mental job of the mind, and programmers will not be replaced. Everybody used to go for programming because it was a fantastic career for them. But now it is by the programmers, computer scientists or computer fields, they have created the field of artificial intelligence and machine learning, and by which they are maximum affected. Because as the AI is coming very fast, almost 50% programmers will lose their job. And
clerks 80%. Railway reservation windows, they have totally disappeared. And many of the fields like that. So one of the most serious way the AI is looked upon at is about the careers. And those who do not change themselves, they will be laid off by the AI. This is the most serious talk about the AI. But anyway, we are not going to talk about that. We would talk only those things for which we are curious. So, the machine learning is field of the AI, and in that the machine learns rather than doing the same thing, so that as per our requirement changes, it becomes adaptive. Okay? See, for example, what we mean by the learning. We got a lot of mails, spam mail, fake mail, so many, and we want that the computer automatically should decide that this mail is fake, this mail is spam, and this is not spam. So the mail which is useful, that our mailing system, mail receiving system puts in the, which is genuine, put in the input folder, and which is spam puts in the spam folder. Most of time it is correct, but sometimes we go into spam folder and we find that there is useful mail in the spam folder. It makes automatically, as it becomes adaptive. And it becomes more useful if what mail we have found in the spam folder and we found that it is useful, we just remove the category and put into useful, it will come to know, yes, the mail system will learn it. So it learns from our input. We need to provide a lot of data. So by the data it learns. And once the learning takes place, it may work on what it has learned, and if it further keep on receiving the input, and further it may learn. Now in that learning process, there are two ways. Either we label all the data, that this data belongs to this category, this belongs to this category. If there are two categories, this is spam, this is not spam, this is spam, this is not spam. We classify, we put the label, and over the time, it will, for the remaining new mails also, it will be able to identify that this is the spam and it's not spam. That is basically the conceptual difference. Okay? But we are also interested, is there a simple way to understand how it works? But it's not mail, it works everywhere. So what data, okay, the data which you put to train it, we call it training data, and as many data we put, it becomes better and better learned. The ChatGPT came in 2022, and it has learned huge amount of the information which is on the net, which is on the book, in the novels. And whatever is free material available, the learning has taken place by that. It can produce a text, it can produce the memoir, it can produce the novel, it can produce the article. Lot of things it can do. Now the question arises that if the input data exhausts, all the learning has taken place, then what will happen? Then it will not be able to further learn. There will not be further quality of improvement. So it has been said, people have found out through the research that between 2026 and 2030, somewhere, any time in between, all the machine algorithms which exist in the world, wherever it is, they would have learned everything what exists in the world. And after that time, it will not find further improvement. Okay? Then what will happen? It will be saturation. Unless the new data is generated, it will not anything new. It will not produce anything new. So therefore, as long as new data is available, learning will continue. So we need not to, there is a practical limitation, how much it can learn.
if we read a book, and through that book, if we try to learn, we can learn only the thing what is in the book, maximum, if we do not go beyond that. So for that, the entire data set which is available globally, and once the learning has taken place through that, there is nothing more to learn. So it is not infinite. In a certain survey, it has been found that some 80,000 research articles which have been published. Many of us know that in the research article, there is a limitation of about 250 or 300 words for the abstract. Then paper which is 40-50 pages, how to produce an abstract of 250 words. So what they do, in the AI, OpenAI, and many of the models, there is a provision to make a summary. You just simply cut paste the entire paper of 50 pages and ask the ChatGPT, OpenAI, or the Gemini to produce an abstract. It produces exactly 250 words abstract. That abstract you submit. That abstract is not research. It is abstract of your research. And it has been found, based on certain facts, that there are few, realm is one word, delves is one word, and there are two more words. Those words found in those abstracts, based on this, it has been found out that 80% of the abstracts which are produced in the research paper were produced using the ChatGPT in the research top journals. How they found out that? 75,000 content in the YouTube, in the Facebook, many of the places, they consisted these words. And from that, learning has taken place. And because those learning exists in the language, it has used those words. So it is not that it's not difficult. You can make out very easily. Even I myself have tested that those words are reproduced once it generates the text. So it's not a complete solution. So how can we process the learning? The process of learning takes place, and how we evaluate the success. There are certain points. Generally, AI and machine learning, these are interchanged. Artificial AI is the complete field. Machine learning is 4 categories: supervised learning, unsupervised, reinforced, and deep learning. Deep learning is a new field. And other fields of AI are reasoning, natural language processing, planning, which means robotic planning, and so on. I'll skip some of the parts for which some discussion has taken place already. So basically, supervised learning is the one in which you give the data, labeled data. For the data, there is a label. Yes, it is this category, that category, this category, that category. But from where to get the data? From where to get the label? You have huge amount of the literature available, material available, which blast has been successful, which has not been successful, which thing has been successful, which has not been successful. Category, if it is not available everywhere, in that case, that data is much larger in number. That data is much larger in number, and that is used maximum for the purpose of learning, which call unsupervised. My main discussion is about the predictive modeling, which I'll demonstrate some example in the mining. See, consider there is a graph, and you have this side. We consider
height, and this side you consider the weight. Okay? So, let us consider this is height. So if the height is low and weight is high, we say it is overweight. This is overweight, this is overweight, this is overweight, this is overweight. Whereas if we say height is high, then it is not a overweight, not a overweight, not a overweight, not a overweight, not a overweight. Okay? We are given 10 data, and those which are people having much more higher weight, but height is less, they are marked cross, and those which are having weight is less, but height is more, they are not overweight. So we have, once we put these things which are labeled data, then we have separated these data on the graph. Then if you are asked to draw a separating line, we say this is a separating line. Okay? Then we say, if exactly something come on the line, we say there is a guard line. Okay? A supporting line. So now if anything new comes, if somebody's weight is this and height is this, then we take over here, we say this is not overweight. If somebody's weight is like this and height is this much, then we find over here this is overweight. Okay? So once we have plotted the data like this in the 2 dimension, this is weight and this is height, and given those label that this is overweight and this is not overweight, we have given the n and x, and we have n and x for not overweight and not overweight and overweight. Then after that we draw the line, we have separated. Okay? So we call this is support vector, because there are support vectors and it is called support vector model for separating. Now give any data of weight and height, we'll say we are able to monitor, we are able to declare that if it is coming above the line, we say it is overweight. If any weight and height coordinate such that it comes below that, we'll say it is not overweight. So this is a classifier. This is basically how the classifier works once it is separated. So kindly conclude, sir. Difficult to stop for a professor, but please. Okay. So I'll quickly, once it is done, then we have 2 dimension x1 and x2. If you are having 3 dimensions, then it becomes x1, x2, x3. Up to 3 dimensions we can visualize. But if there are more parameters, ChatGPT uses 3 into 10 raised to power 9, 3 billion parameters, 3 billion dimensions, 3 billion directions. Still it is able to classify the things. Even 15 billions has been used. Deep learning and the ChatGPT, they use such a large number of parameters. Though more than 3 dimensions do not exist, but the billions of dimensions, when they are used, mathematically it works. So, for classification, I have used a model where I have used the 10 data of the dust and pH water. There are 10 dust value and dust
10 pH values and to find out whether a open mine is compliant or it is not compliant. For 10 data, I have given the values, it is compliant, not compliant, compliant, non-compliant for this data, and then I have plotted this. Okay, I have written a program in Python, and then I have plotted through the SVM. This is the beginning, rather how it has been plotted. The negative, the minus says it is not compliant, which are 0. Okay? And the red and blue says it is a compliant. And this is the line which separates these. After that, any new data which is given, it will identify whether that particular site is a compliant or it is not compliant. The value used here are only the two values of water pH and the dust level. If there are 100 values to find out whether mine is a compliant or not, we can, through this method, we can find out. Even if there are thousands of parameters, we can find out. So this is how the classification works. I use 3 data. Okay, one is water pH, another is a temperature nu and the dust level. Then I have plotted a 3D graph in which in 3D there is no line, 3D there is a plane. So the plane separates the data. So it says this is not compliant, this is compliant, and new data it says this is not compliant. So you can use it for the mining. Okay, so various applications for the mining of machine learning. There are enumerate algorithms. They can analyze the geographic data, automated equipment and autonomous vehicles, predictive maintenance, process optimizations, environmental monitoring, predictive maintenance, environmental monitoring compliance, process optimization. Then for the safety security. So number of applications where you can use these predictive models in the mining engineering. Natural language processing for the reports, then for the document, for the compliant generations, you can use all of these. So this is where you can find the applications. So you find that all things are data dependent. Unless we have the proper data, we have the genuine data, you cannot do much. Data has to be, they have to be correct, that has to be ensured. And if the data is not correct, nothing works. That is essential. And of course, as it was mentioned, even computers are rarely used. It is necessary. The why people are not using computers, why not they are not using computerized methods, the reason to me it appears is the top people, they do not know. And unless the top people know it, they cannot pass on to the lower level people to adapt to those technologies. Therefore, it is necessary that everyone should learn at least what is the AI, what are some minimum. The knowledge is necessary for every person associated from top to bottom. Then only they can appreciate. Otherwise, just saying that let us use AI, let us use AI, let us use machine learning, who will use it? The lowest level people, if they use, the topmost people will not be appreciating. As Professor Bandari said, I am learning from the students. If that kind of attitude is there, then everyone would learn and they will pass it on juniors. When I first designed my microprocessor-based systems when I was scientist in BARC for 7 years in 78 to 85, my boss spent number of days to understand from me that how the microprocessor-based system works, which I used to put for certain application in Cyrus reactor, from which the plutonium used in Pokhran was extracted from making the bomb, and many of the applications. So I found there is no difference, the top and bottom. They are all, everyone is learning from everyone. So that should be environment. So once everyone learns that, then definitely it can be a useful area and it can be beneficial to all. Thank you. Thank you so much, sir.
You gave an insight on the AI methods and tools. Many mining engineers may not able to connect with you, but researchers may easily understand the value of your lecture. Thank you, sir. The next lecture will be delivered by Abhinav Sen Gupta, PwC India Associate Director, on the topic Strategic Imperatives of Artificial Intelligence Adoption in Indian Mining Industry. I request you, sir, please conclude within 10 minutes. Now we are running one whole session delayed. Thank you. Okay, sure, I will complete within the time. First of all, thank you everyone for giving me this opportunity, and specifically MEAI. This is really overwhelming on my part to be in front of such an august gathering. And I'm a mining engineer and almost 14 years of experience in mining and metal sector. And much about this AI part has been already spoken about by previous speakers. I'll try to cut it short within the time limit, but I'll touch upon certain key areas that where the AI can play a role, though there will be a lot of similarities we already had heard, but let's try to understand this from a 101 perspective. Okay, so I'll be talking about the AI, why India is at that inflection stage when you need AI at this juncture. We also spoke about how the data is getting generated in the mining and metal sector, specifically in the mining part. Then we'll all talk about the few promising trends, and then where the application is. Then how for the academics, like what they need to study in order to gain the knowledge and expertise in the AI, and then there is some way forward. So as you already aware and already spoken about, that we are at an inflection stage. As you can see on the screen, that what has changed. Earlier in general sense, we used to have the paper logs, Excel-based methodology for calculating the data. Now we have the data through sensors. We also changed from reactive mode to a predictive mode. Earlier we used to wait for certain incident to happen. Now we are changing towards the predictive mode. We also have the workforce which is already skilled. Compliance has taken a very front seat rather than a back seat in this sector. But why this is happening all of a sudden, all these things happening as of now? Why it is happening? Because of, you can see that there is a falling cost of AI infrastructure in place. Like your data center cost, your cost of IoT, handheld devices, all has come down significantly. You can see the generation which is coming up in the sector are now well aware of the Gen AI, well aware of the basic tools of the computer. That is something is happening. ESG has taken a very important role. The importance of safety has been gained. It has been given a much more importance as compared to the previous years. And also there is, a younger workforce getting into the sector. The Alpha Gen Z and Gen Zs are getting into this mining sector. So because of all this, the primary objective of AI, which is basically to improve the productivity, reduce the cost. It helps. It is an aid to a human being, so that it can help improve the overall process. So that's the overall objective. And this objective is being sacrosanct. That will definitely help on the safety aspect. It will help on the automation. It will help on the fast tracking. It will help on the efficiency role. But we need to understand that what is the genesis of that entire thing, which already being spoken. That the data. The data is basically the brain of the entire AI. If you can see that AI has a brain, then the data is basically the code, the gray matter in that. And you can see in this graph that the data generation in the mining sector, if you can see this value chain on the graph, the data generation in the mining sector is very sporadic. The frequency of generation of data, you can see that for the geological data, it covers from yearly and monthly. And if you go progress toward the mining execution part, where you can see the data generation on a very real-time basis, like from a daily to shift to even hourly basis. These kind of data is getting generated. And lastly, for the logistics parts also, we can see the data generation are also in a very quantum manner, like you have weekly dispatch, you have monthly dispatch, and then your quarterly and all. So this is the generation of data. This needs to be very much, it is very important for us to understand that this is the nature of data, and that's why we have to aware. I'll come back to this slide again. So already being spoken about that what kind of AI technologies are prevailing. Like in my previous speakers already spoken about that which kind of AI tools are, what exactly they do. So there are certain nuances, certain examples they already set forth. I'll try to explain this in a very simple manner. So there are 5 total in general parlance for the mining sector usage. So there are total 5 number of technologies that can be deployed. So as of now, currently we are using for RAG based technology, just like a retrieval.
So many of you must have had already used Power BI, where you have a Power Query kind of thing. You put the data, you upload the file, and you simply ask what is the average of particular area, what is the average of something, or what is the median mode. Basic question you ask. So it gets into the data, it retrieves it, and it gives you answer. It's a basic AI. If you move forward, then there is again you have AI-based robotics. Already previous speaker already spoken about it, like AI-based robotics. You need, autonomous haulage. Autonomous haulage is something which is now going to see the light of the day. So in underground mine, if you could see that there is a LHD is going on in underground metal mine, and it knows its path. Like if it encounters any kind of roof fall or any kind of interventions, then it knows how to maneuver its path. So that is again, self-learning AI-driven robotics. Then third is the autonomous agent. Now, this is something which is very critical. This is something which is very critical, and this is the heart and the brain of the entire AI system. And this is going to see the light of the day. Now it is coming up where your entire system will learn on its own, and it will take decisions. So it's just like a project manager in your mind, which will understand and estimate and also will calculate what needs to be done. For a simple example, like in a mining phase, in any mining field, let's say one of the haul roads get impaired or it gets damaged. So automatically this agent will quickly maneuver that this particular haul road is damaged. I need to maneuver my trucks to other haul roads. And quickly there is a change in plan, there is a change in the pattern, everything will happen. Automatic decision without human intervention, it will take. So agentic AI will play a very important role in any sector. So that is something going to be important. Now the fourth part, if you could see on the screen, is basically the self-learning AI models, which already been spoken about, that AI is learning on its own. So like on the way, if you see on the go, the ore field predictions, like in order to understand the target drilling, where you want to drill on the real-time basis, that basis on the certain lithography or certain spectral image, it understands, it learns, and it tries to decipher. So it is self-learning. So self-learning kind of system will happen. And this will again, we'll see in next 5 years, you will see that your usage of this self-driven AI models will be there. And lastly, if you could see, is basically the AI enhanced sustainability. Now this is you can consider it as in a mine, a chief compliance officer which is automatic. I mean, which is taking care of everything, a plethora of data, like a weather data, reserve resource estimation, manpower, shortage, the production hours, everything, and automatically design the mine that what should be his daily target, which area it has to mine, how it has to proceed, everything will be calculated. So we are progressing from this RAG-based AI to more towards the AI enhanced sustainability. So this is going to see the light of the day in next almost 5 to 6 years, if not early. Okay, I already spoke about this. Now we can quickly see that earlier I spoke about what it will do. Now where it will do, which already we have a lot of use cases we have heard. So I'll quickly summarize it again. I'll summarize. First most important is basically used in exploration, subsurface exploration. For the coal logging and reading is one of the more, I would say it's a tenacious task which requires a good amount of precision as well as a human intervention. It's a time-taking process. Now with the help of an AI, with the help of a ready-made data tool, databases, it will read the data, it will read the lithology, it will quickly help in coming out with a certain amount of predictions. So that will fast-track your overall objective. Second part, if you could see, for the subsurface, like geophysics, like you can see that AI integrated geophysics, where to drill, where to find that my likelihood of a particular mineral body will be there or not. In that cases, with the help of AI and definitely the previous past data, you can able to pinpoint that this is the area where you should drill. It will reduce your human intervention, and it will also improve the accuracy. Now all these methods which is happening in the exploration, it will aid a geologist. It will not make him redundant, but it will definitely help him, which already we know that what a human eye can read and decipher. Secondly, we are also aware that now critical minerals are something which is there in this, as of now it is very much prevalent. Now finding this mineral, specifically in a metal mining, these geological occurrences are in the form of veins and lodes. Now it is very difficult for naked eye to decipher whether it is occurring in a particular manner or not. So how that effectiveness can be done? You can take an example of a lithium in India. At one point, your lithium finding in the Jammu Kashmir has a different mineralogy, something found in the Chhattisgarh has a different mineralogy altogether. Now how precise can we without drilling? Because drilling is a cost. Now we have to, I'm not saying we have to avoid the cost, but we have to be rationalized on the cost. So for that purpose, we will use this kind of tool. It will help with the help of predictions, previous data, images, it will come up with a particular, and it will give a prognosis that yes, there is a mineral or there are no mineral. And lastly, we already spoke about the smart mining.
So that is something which is, as you already spoke in the data generation table, that a lot of data is getting generated in the mining execution on a daily basis. Let's say a plant on a mineral processing plant as well as on the mining basis. Now, based on these data, how a particular mine can become a smart on its own, like whether it's taking its own decision, like even a small equipment area like a procurement of a particular part, spare part, all these important decisions can be taken up with the help of AI. When you have entire thing integrated, like from drilling, blasting, loading, hauling, dumping, processing, as well as the procurement part. If entire things get integrated, it will complete as a AI in a smart mining ways, and this will going to come very big role. As of now, we are doing it on a silo basis, but this will take an important role. And lastly, the safety, which cannot be forgotten, because with the help of AI, at least one thing which we have started gaining ground is safety, like fatigue monitoring checks. These kind of fatigue monitoring checks are also, there are certain data, again, it's a data set. So based on certain data sets, the AI tool will give you an idea that in underground mine, that these are no-go areas, are unsafe working, or some roof fall is likely, or subsidence is likely. So we can help it protect our tools, equipments, and machineries and manpower. So this is a very important role in the mining. So these 6 cases you could see, precisely 5, they are all gaining ground. But in Indian context, people are actually doing it on a silo basis. So there's no common integration. Kindly conclude, sir. Kindly. Yes. So what we need to do, so this is for the academic purpose, this slide is. So here we have number of tools, as you can see. As you can see on the screen, that what exactly it requires. There's a data, there's a mathematical modeling, there's a Bayesian theorem. I'll give the presentation, you can look into it. And lastly, for Indian mining sector to basically evolve in terms of AI, first it has to come up with a proper governance. A governance method needs to be there, because a lot of data is there in the cybersecurity as well as governance. And pilot expense needs to be converted into a scalable project. So in next 3 to 5 years, we can see the scalability of AI data, and AI-based expense needs to be there. And lastly, you can see a proper ecosystem of AI-based generation, where you have a proper coding of AI standards. You have a skilled manpower who can use and actually can deploy on the field with this kind of tools. And lastly, I would like to conclude that innovation is a continuous process, but innovation with responsibility it will help you gaining that sustainability in mining. So one has to be very responsible in any kind of innovation. So with this, I would like to conclude. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your excellent presentation. Now our next speaker, he will present in online mode, hybrid mode, Dr. Srinivas Padmana Bhuni, visiting faculty IIT Tirupati, Bangalore, Karnataka. He will deliver on test decide data for Agentic AI. Meanwhile, I say sorry to speakers for cutting the time, but because of the, we are already lagging too late, so kindly bear. Hello, am I next? Hello. 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 Hello, you are audible, sir. Hello. Hello. You are audible, sir. Please start your. Sir, you can start. Hello, am I next? Yes, you start your lecture, sir. Can somebody put in the chat if I am next? Am I audible? Can you please confirm? Am I audible? Okay.
Okay, so thanks for this opportunity. I will be brief. I am going to speak about an upcoming area of AI, which is primarily, some of you have alluded to. It's called Agentic AI. The whole idea of Agentic AI comes from the fact that whatever advances in AI have happened till now can be made more autonomous and more goal-oriented with Agentic AI. So what exactly is AI? We all know, we have seen tons of presentations before that, the ability of machines to mimic human-like intelligence for learning, decision-making, and problem solving. But what is not known is the different waves of AI. What has been the waves of AI? The waves of AI started from using about 30, 40 years of rule-based expert systems where ability of using rules to automate. Then came ML, which had ability to learn from experience. And then came Gen AI, which is basically the ability of AI to create data. And finally, now we have Agentic AI, which is capable of kind of, you can say, independent functioning, planning, tool use, and multi-step reasoning. So what I'm going to talk about is primarily in the context of testing Agentic AI. So what is Agentic AI? It's basically AI systems that autonomically make decisions, plan actions, and execute tasks with minimal human intervention. So why do you think we need to do testing of generations of AI? Across generations of AI, we have seen inevitable failures, some catastrophic, including some in the generative AI scenario where ChatGPT invented multiple legal cases that did not exist. Or in case of Agentic AI, Replic's AI coding agent, which went rogue and deleted an entire database. So the idea is that whatever be the wave of AI, there always has been failures. And the reason why we see this failure is due to lack of rigorous AI testing. So what is the needing for testing? Testing needs to be done for any AI system to address corner cases, address complex situations, address compliance issues, address security issues, data privacy issues, testing for ethical issues like bias, and assuming holistic coverage. So exactly what is software testing? We all know it's basically to assess quality of software so that we reduce the possibility of failure. So as we saw, there are several AI failures. So to prevent failures from happening, we need to have some way of doing comprehensive testing, whatever. Now, whenever you talk about AI testing, it's basically you need to understand that AI is not always a standalone. It's part of a larger system. So we need to look at AI testing, which includes the testing of the corresponding model or the agent or the Gen AI LLM. Then we have integration testing of integrating that with the remainder of the system. So we need to have integrated testing for AI systems. Now, what exactly are the considerations when we talk about agentic AI? Primarily, we're looking at these aspects. We need to test the new quality attributes for AI which have emerged because of more autonomy, more human-like behavior. Then we should have appropriate evaluation techniques, evaluation metrics. Then, because of the black box nature of many of the AI technologies like Gen AI and vision and deep learning, we need to have explainable and interpretable AI. Then the more important application of agentic AI is autonomic decision making. So we should test for autonomy. Then from social perspective, we need to be able to test for bias, ethics, and fairness. And then from actual operation of any AI agent, we need to have some way of accountability. Then we need to also test for security and agent security to prevent any kind of potential hack. Finally, we need to worry about testing for privacy in AI because you cannot just build an agentic system or an LLM without safeguarding the privacy of PII of citizens. I'll go through some of them in a bit more because others are similar to other areas like LLMs or similar like ML testing. But primarily, if you look at from agentic AI perspective, we need to look at the fact that agents are not
rocket science. They are built as autonomous interfaces, autonomous software modules, which are usually interacting with the end user, either on a web or with an API, etc. So you need to make sure that when you have web interface, you cover the ground of the web testing. So whatever you do in web testing, including things like cross-site scripting attacks, etc., penetration testing, or testing usability of the site, etc., those become important. Then API, when you are working with APIs to access the underlying LLM or underlying ML model, we need to know that API testing becomes important, because ultimately API testing will tell functionally whether it's giving perfect for different input, the right responses, or is it giving the right response scores, or is it secure, etc. Then comes the important thing. Today we don't have the scenario that a single function, a single implementation is going to guarantee you the output required for an agent when it is given a task. The agent may spin off multiple subtasks, and each of the sub-agents may again go back doing the work, and then you can orchestrate them to create the actual agent. So orchestration testing becomes very important. So when you're testing agents, web testing, API testing, orchestration testing becomes primary. It's not like they are new wine, it's old wine in new bottle, but they don't go away, because agents are a different way of offering software, whether it is an LLM or whether it is a web application or a rule-based system, but in an autonomous manner to the outside world. Then comes the whole concept of what do you test agentic systems for? That is where functional metrics come in. What can be the metrics? Like if you have a task, is it completing end-to-end? Efficiency, how much time or resource it takes. Autonomy, can it complete the whole task autonomously without human intervention? Right kind of robustness in terms of if there's an error, can it recover from it? Then how relevant is the output? How functionally relevant is what you gave it as a task and how it adheres to the task? So evals for agentic AI talks about functional testing of agentic systems. Then comes testing for autonomy. What is testing for autonomy? As I said, autonomy is about automatically working without human intervention. So when you want to test an agentic AI system for autonomy, it includes testing for a system that really requests a scenario where you can continue to work without human intervention. So you need to create those scenarios. So you should create scenarios where you can test in the limit, where it can continue to work without relinquishing human control. So autonomy testing includes testing for triggers where intervention can be required, or if you have edge cases where it can take extremely long time, you need to simulate them. Then comes the whole concept of explainable AI, which also helps in agentic AI. In agentic AI, we need to have tools which can explain how the agents have functioned. It could be in form of action traceability, like plan, act, react framework, or give a hierarchy of decisions. What are the agent policies? What are the different policies that are enacted? How they have been composed? Or you can use techniques like chain of thought reasoning, where it provides step-by-step logical explanation of how the whole agent has been taking decisions by looking at previous step. Or you can have knowledge graphs, which gives you the actual graph of flow of the knowledge, which is guiding the path of agent. And then in terms of agents, we also need to understand that agents also need to be behaving in an unbiased, unethical manner. So we need to test these agents for unbiased behavior. So you can have bias in terms of training data, you can have LLM bias, you can also have privacy bias, where agents may act without explicit user consent. And then you may have a goal drift bias. That's very important, where you started with some goal, but actually started going away from that. So you need to be able to simulate all these agents. Then from accountability perspective, testing is about ensuring that people who are responsible for actual malfunction or its correct functioning, they're answerable, how these systems operate. So I'll not go details of how they're implemented, but let me give you the most important thing is having audit trail from data to decisions. The typical process dimension could be like having RACI matrix for agent operators. Then from security perspective, we need to understand that in agents, there can be several kinds of agents like web attack profile, or agents exposed the API, which can be subject to some kind of a XDOS attacks or DDoS attacks,
or sometimes you may have a breach in one agent causing propagation to other agents. So you need to have appropriate security testing mechanisms for AI agents. So security testing of AI agents is important. So security testing to minimize security attacks is a very important part. Then comes the whole concept of privacy, which is basically again an important part, where important thing is you need to be very careful about especially two categories of data, PII and sensitive PII. When you talk about this, you need to make sure that agents which are actually using any PII are explicitly doing with informed consent of the user. Otherwise, this may be subject to loss of the land. Like for example, even in agents where they are operating with collecting data of individuals, there should be care taken that right kind of permissions are provided as part of the data collection process. Like India is coming up with a new law, which is called Digital Personal Data Protection Act. So everybody in the value chain of use of data is now to be using this act as a guide of how you will deal with PII. Then what kind of techniques you can use? You can use techniques like homomorphic encryption, you can use differential privacy, you can use federated learning, etc. And then comes the last one, which I'd like to wrap up my talk by saying that in case of any AI system today, worldwide, there are regulations coming up which actually are talking about making sure that the AI systems which are especially used for public consumption are subject to new kinds of regulation which will ensure a responsible, safe, ethical, transparent, and privacy-preserving AI. So test for conformance or compliance to emerging laws becomes an important part of the whole aim of testing AI. So that's all I wanted to talk about, and it was a short, but I would have loved to talk in detail, but thanks for the opportunity. Thanks to Dr. Srinivasa. Now, question session is not possible in this online mode, and we are moving to the next speaker, Mr. Siddharth Dwivedi and Surbhi Gupta from Marksoft Technology Private Limited, Lucknow. They will present on iCheckGate AI-based smart enforcement system. I again request to the speakers kindly conclude in 10 minutes. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, a very good evening to each one of you present here. I am Surbhi Gupta, co-founder for Marksoft Technologies. Marksoft is a leading IT company delivering artificial intelligence, machine learning, AI, IoT, drone, VTS, all innovative solutions under one roof for the mining sector with real-time outcomes. It's indeed our pleasure to be here today and render our presentation on our project, iCheckGate. It's an AI and IoT-based system, a smart enforcement system to curb illegal mineral transportation. First and foremost, I would like to extend, though he is not there, our gratitude to Sir Deepak Tanwar, Director DMG Rajasthan, for providing us this opportunity. We are thrilled to showcase our most awarded project that has been successfully implemented in the states of Uttar Pradesh with 57 active check gates and functioning smoothly, and over 45 check gates in Uttarakhand for a greener and cleaner mining ecosystem. Best part, iCheckgates have generated a revenue of 800 crores for the government of Uttar Pradesh till date. We look forward to implement this concept, of course, in Rajasthan, Punjab, and Maharashtra, and Jammu Kashmir as well. But before I begin, I would request your attention to a very short video which exactly depicts the components, the concept involved to run this structure, the implementation technology, the API integration with Vahan app, and else. This video will exactly provide you a better and a deep understanding of how iCheckGate works. So let's get started and explore India's first unmanned solution
for the mining sector, none other than with our AI tech lead, Mr. Siddharth Dwivedi. Siddharth has been instrumental in shaping the technology behind iCheckGate. The dais is all yours and the video is here. Please have a look. We are building the future, reducing manual intervention and increasing productivity. Introducing iCheckGate, the state-of-the-art smart enforcement system automating traditional check posts. In 2021, we launched India's first 24/7 unmanned iCheckGate for the mining sector in Uttar Pradesh to curb illegal mineral transportation and create standardized legal regime. What is iCheckGate? iCheckGate is a revolutionary smart enforcement system designed using artificial intelligence and the Internet of Things to enhance transport surveillance and combat illegal mining. It seamlessly integrates a command center and decision support system operating 24/7 to monitor mineral transport, detect fake transit pass, overloading, and other violations with minimal human involvement. Customizable to meet various government regulations, iCheckGate tracks suspicious vehicles, collects evidence, and alerts authorities through its decision support system and mCheck mobile app, ensuring fair, transparent, and efficient enforcement. The science behind it: vehicle type identification categorizes and identifies vehicles ranging from commercial trucks to light motor vehicles, LMVs. ANPR, automatic number plate recognition, reads vehicle number plates, including high security registration plates, HSRP, and regular English number plates. RFID reader, smart device equipped with features like data acquisition, processing, and transmission with wireless communication and ultra-high scanning, UHF scanning, reads RFID tags. Mind tag, varifocal cameras, captures high-resolution images of minerals and other objects transported in trucks. Edge computing processes data collected by devices locally and transmits it to the central command. The system highlights its capability to work both online and offline. RFID handheld reader with mCheck app. Smart device equipped with features like data acquisition, processing, and transmission with wireless communication and ultra-high scanning, UHF scanning, passively reads Mind Tag via mCheck app, and department officials can issue e-notice during spot inspection from the device. This is how iCheckGate operates. A story of transforming mining in Uttar Pradesh. iCheckGate, delivering transparent governance using technology. An initiative by the government of Uttar Pradesh in line with our Chief Minister's vision of transparent governance. iCheckGates are deployed across 26 plus districts with over 60 plus active iCheckGates and 20 plus more in process. It scanned 1+ crore total vehicle passed via iCheckGates, 50+ lakh mineral carrying vehicles passed, yet monitoring over 1.95 plus Mind Tag equipped vehicles. The system has issued over 1.5 lakh e-notices amounting to almost 620 plus crores, with penalties worth over 400 plus crores. And 75 plus districts equipped with handheld device. The presence and performance of iCheckGate are transforming the landscape of transport enforcement, ensuring transparency, accountability, and significant financial recovery, and has received very favorable media coverage. The iCheckGate Smart Enforcement System was the winner of Platinum Award, Digital India Award 2022, Gold Award, National Conference for E-Governance 2022, CSI E-Governance Award 2021, ET Digitech Award 2023 for innovative use of technology in e-governance for digital transformation. Technical Sabha Excellence Awards 2023 under the category Artificial Intelligence. Scorch Award 2021 for its simple, transparent and efficient technology. जो गाड़ी आपने ऑटोमेटिक चेक गेट से देख रहे हैं, उस चेक गेट से जो होके आती है, इन दोनों रोडों के माध्यम से ही आगे जा सकती हैं, बिना इसके ही निकल सकती हैं। तो उनकी भी उनका पेपर क्या है, एसटीपी उनका सही है, डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, वो सारा भी यहीं पर चेक हो जाता है। यहाँ पर एक डिवाइस है, स्कैनर रखा हुआ है, उसके रियलिटी स्कैन कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप पर डिटेल आ जाता है उसका ट्रांजिट पास का क्या क्या है। रास्ते में जो चेकिंग करनी होती है अपना हैंडहेल्ड स्कैनर से स्कैन करके देख लेते हैं।
The iCheck Gate has the potential for expansion into various departments, enabling data sharing to maximize its utility and benefits. This extension could include collaboration with the mining department to curb illegal minerals transportation, transport department, assessment of overloading and other offences, goods and services tax, GST, raise important alerts to curb tax evasion, forest department, to curb illegal transportation of forest products, excise department, curb royalty pilferage and illegal transportation of excise goods, and district administration, city surveillance. Transport and GST department has also taken initiative to set up iCheck Gate at strategic locations in the state with the help of Microsoft to control overloading and tax evasion by checking bogus e-way bills. iCheck Gate is an integrated automatic check post that detects and prevents overloading by utilizing a weigh-in-motion system. The system not only curbs overloading offences but also increase enforcement by scrutinizing every vehicle passed through the checkpost. iCheck Gate, empowering smart enforcement. The future is here. Ready to take enforcement to the next level in your state, district? Connect with us today to know more about iCheck Gate. Join us in building a digital future for India. To know more, visit iCheck Gate website www. Hello. So good evening, everyone. I think the video was quite precise and actually told you what exactly we are going to present here. Now, a lot of speakers have been here, and this evening and in the afternoon they were telling a lot about how AI can be used in mining, what are the AI techniques, and other aspects of artificial intelligence. So let me take you back to 5 years back. And we did all this, and we are standing 5 years after this. We have implemented everything, the AI, whatever the people have been talking about in the concept, it is running. We can show you, we have showed you on the video. So that's how what we have done in the iCheck Gate. It's a small story. Let us take you back in 2020. Early morning, 3 o'clock in the morning, a small town, Banda to Fatehpur, a small town, Banda and Fatehpur, which is very critical in the mining industry. A truck is going with mineral loaded, and nobody is there to see it. Even if it passes through a manual checkpost, there are 5 policemen who are standing there 3 o'clock in the morning, hardly interested in seeing the transit pass. Maybe they check, maybe they don't check, is the luck of the driver. And probability is that only 10% of the vehicles are getting scrutinized at the checkpost. That is where we came in and we solved this problem. We solved the problem of the manual checkpost. We solved the problem of scrutinizing each and every truck which is carrying mineral across the state to ensure that it has a valid transit pass, it has the interstate transit pass, it is carrying, if it is carrying mineral, it is even within the permissible limit of the load, and these are the checks that we have been doing for last 5 years. Since last 5 years, if I tell you the numbers, you will be pretty much, it is a shocking number for everybody. We have scanned 70 lakh mineral vehicles. I'm not talking about other mineral vehicles. I'm just saying 70 lakh mineral vehicles that we have scrutinized through our automated check gate. That is what iCheck Gate give it to you. See, the main problem with the mining industry or with the transportation is the royalty evasion, bogus transit pass, manual intervention of the scrutiny of the transit pass. That is what is happening. And lack of 24/7. How many of the checkposts, we all know that how many of the checkposts are running 24/7? None. It is barely at the time, either it is a random squad which goes and check, or it is sometimes enforced. When the top official enforcement is there, then all the transport, all the trucks are being checked. Otherwise, they just pass. They kept on passing, they kept on passing. And if you see the numbers, and you multiply those numbers with the 22 states and all the districts, you're talking about a royalty evasion of 18,000 crores. Yes, that is the number we are talking about. And to
to ensure that this number is not gone. This is a flood. This is not a leakage. This is a flood. This is the flood of, the royalty is being evaded. So to ensure that we are not losing that money, we ensure that iCheckGate works 24/7 for you, on behalf of you, and to ensure that every transit pass is scrutinized, every vehicle is being checked, every route is being mapped. There are a lot of questions about the route mapping, and I will not go into the detailed presentation because we have less time. The video was quite elaborative to show what the technology is all about. But I'll address certain points which have been there in the minds that we have been discussing offline. There are people who have been asking the question, what happens if there are, you put up a check gate and there is a alternate route that has been created and the truck uses that route or the transporter uses that route to bypass the check gate. No, it can happen once or twice because the check gate is smart. That is what the people have been telling, that you give the data to the AI, it will train the AI. Yes, we are giving the data to a AI. Our check gates get smarter day by day. Every day we scrutinize, we figure out the pattern between the pit mouth from the place where the transit pass is generated, and on that route how many check gates are actually using, identifying the vehicle, and based on that we identify where the pilferage is happening, where we need to put in a lot of new gates. So just to give you a small example, the project started with just 5 check gates in UP, and in the phase 2 we installed for a smaller district like Mahoba, which is a very critical district in mining. In Mahoba, we installed 3 check gates initially, but within 3 months, the data from the check gate actually pushed the district magistrate and the key officials of the mining that there are multiple routes in Mahoba that the transporters are using, and we identified those routes and we installed 6 check gates there. So that is how we are improvising. The system is improvising, system is identifying every loophole which is there. And that is why I say, can we go to that slide, the smuggler slide? So that's why we say, we are smarter than the smugglers. We are beating smugglers every day. So they are coming up with the new routes, new identities, new ways to deceive us, and we are just capturing that. Please, sir. Yes, sir. Time, conclude, sir. Sir, I'm just concluding it. I skipped a lot of things, so just concluding it. So that's how we are deceiving these smugglers. We are ensuring that there is no forged ETP, there is no truck which is moving without transit pass. And to give you an idea, that wherever we have installed the check gates, all the districts, those districts and all the mines in that district have seen a significant increase in the transit pass, have significant increase in the royalty, which basically proves that whenever we install a check gate, we see a drastic result in terms of increase in the royalty, increase in the transit pass from the mines associated in those areas. So this is a proven case study. We are not talking about anything that can be done, what we will learn, what we will not learn. It is all learned. We are giving the data from other states as well. Now the data is being trained on the Uttarakhand data. So we are catering to more check gates, we are catering to more places, and we are training the data every day. So a simple process, if I tell you, so what happens in our back office, what happens in the command center, every image that we are not able to identify, we give that image to the training data and we reinstall the training data, we regenerate the training model and we redeploy that training model, and the next time, any truck which is passing through and we have a similar image, we issue a challan to it. And that is what the numbers, if you see the statistics, the kind of numbers that we have delivered, if you can see how many notices that we have issued, how many recoveries we have done, it's a profitable project. If I say we have delivered the ROI within 6 months of the investment, and not only on the part of a system integrator or the product owner, we are giving it back to the department, we are giving it back to the state, wherein they are increasing, there has been increase in the royalty, there has been increased
in the challans that they have issued, and there has been reduction in terms of the forged transit pass. So that is all iCheckGate is all about, and I will take last 5 minutes for answering your questions. The presentation can be given to you. Yes, sir. Sir, cost is, it's a very descriptive question. If I ask you how many lanes we have to monitor, is it so it depends upon 5 years or 6 years. It's range between 80 to 1 CR for one check gate. But this I am telling you on a very broader way. Yeah. Sir, एक ट्रक पे अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, अमरदीप, कैन यू गो बैक देयर? आई जस्ट कैलकुलेट इट फॉर यू, सर. So you can multiply, Amar, can you do the calculation for me? You multiply 60 check gates into 80 lakhs, and then you divide by the total number of trucks that we have evaluated. We'll get the cost. Sir, so we've presented the use case to Director Sir, and Director Sir was very, I wanted to thank you, sir, because you took the burden off my shoulder. You actually explained the concept much better way. So can you elaborate on the pure illegal mining? Yes, sir. I'll answer that. It's a very good question. I'll answer that. So what happens is we are correlating the data of all the transit paths that are being generated at the mine site and the data that we are capturing from the check gate. So let's say, for example, you have a truck or you have a transporter who just got an ETP issued, right? But he's not moving the truck. He's stationed there, correct? And I can see that the ETP is getting generated on that mining point, but I'm not able to capture that data on my check gate. Third day, I will flag the issue. Sir, जहाँ पर mining Third day, I will flag the issue. It does not matter, sir. Even if RFID is not there, we are using ANPR also. सर ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर माइनिंग एरिया नहीं है, जिस क्षेत्र में वहाँ से इलीगल हो रहा है, तो उसको ओपन से कैसे कोरिलेट करेंगे? Sir, there are three checkpoints. Like, sir, am I right? Yes, sir. You're definitely. So there are 3 points in that. First, we check whether it is a truck or not. After that, we capture the vehicle number. Now, vehicle number is mapped with the mine tag also. So I check both vehicle number and the mine tag. If both are correct, it's a use case. It's a perfect use case. Let's say, for example, I have a truck which is covered, which does not have a number plate, and the mine tag is not working. A possible thief, I will say, correct? This is the kind of truck we raise. We send the alarm immediately to the local enforcement real-time basis with the exact location. And it is not only to that area. So it is geography. See, all my gates are geotagged. So I know if somebody is passing to a X location, I know where the nearest teams are and what are the possible routes. So all those people on those routes will get an alarm that this is the image of the truck which is passing by, which is a classic example of a thief. I'm not able to see anything. I'm totally blind here. No, it's all covered. No number plate, no mine tag, correct? And my way in motion says that the truck is loaded. So that is a classic example, and we give it to the local enforcement immediately, and they can intercept the vehicle either at the toll plaza or at the manual check post which is already available. Sir? Yes, sir. Sir, mineral को ऊपर cover करते ये
ये सवाल जो है हम लोग 2020 से हर डिस्ट्रिक्ट में देते आ रहे हैं, मैं इसका जवाब यहाँ भी दे दूंगा। आप एक गाड़ी यूज़ कर रहे हो, उस गाड़ी की एक हिस्ट्री है। मैं आपको एआई के लॉजिक से बता रहा हूँ कि हम कैसे इसको देखते हैं। एक व्हीकल है, लेट्स से उसका एक नंबर है UP32 ABC ब्ला 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 एवरीथिंग। अभी वो व्हीकल माइनिंग में यूज़ होता है बिकॉज उसने एक बार कभी अपनी लाइफ में ट्रांजिट पास कटाया था, तो मुझे पता है वो मिनरल व्हीकल है। फर्स्ट थिंग, वो पास होता है, वो कवर्ड होता है, उसका कोई ट्रांजिट पास मेरे को नहीं मिलता, मैं नियरेस्ट उसमें फ्लैग कर देता हूँ, क्योंकि दैट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट ही इज कैरिंग अ मिनरल एंड इज नॉट कैरिंग अ ट्रांजिट पास। इससे पहले वाला केस मैंने अभी आपको आइडेंटिफाई किया कि अगर व्हीकल कवर्ड है, उसका नंबर प्लेट नहीं है, उसका माइन टैग नहीं है, उसमें लोड है, तो मैं वैसे ही लोकल इन्फोर्समेंट को तुरंत बता देता हूँ कि सर दिस इज अ सस्पिशियस व्हीकल। अगर उसमें मिनरल नहीं होगा तो कुछ और जरूर होगा। So even if it is covered, based on the old data, based on the machine learning that we have been discussing in this event, based on that data, we can accurately or we can predictively say with a possibility of 60-70% that it is carrying a mineral which is not issued legally. Yes sir. नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको टोटल नोटिसेस 1.6 लाख नोटिसेस हैं, इसमें मेरे जितने भी चैलेंज हुए कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव द एग्जैक्ट एविडेंस, वी कीप द एविडेंस, इवन इफ द कोर्ट केस इज पेंडिंग, वी कीप द एविडेंस टिल दैट टाइम। वो 5 साल तक कोर्ट केस चलाएगा तो मैं 5 साल तक एविडेंस रखूंगा, और वो एविडेंस है। बिकॉज आई विल टेल यू सर, मॉर्थ ने रूल्स चेंज किए हैं। अगर जैसे हमारा सीट बेल्ट का चालान होता है, हेलमेट का चालान होता है, सो वो फोटो में अगर क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कोर्ट में, सो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है एज अ डिजिटल एविडेंस, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। सो दैट इज वेयर व्हेन वी टेक द फोटोग्राफ, इफ आई से अमर एक वो वाली स्लाइड खोलना जिसमें हम लोगों ने इससे पीछे वाली। जयपाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छा बताया है, इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो तिरपाल से ढका हुआ होगा, नेचुरली मिनरल है, कोई कंटेनर में तो ले जाएगा नहीं, तिरपाल में ढक के ले जाएगा, कहीं ना कहीं तो बिल फ्रेज हो गई, बजरी झलकती हुई दिख जाएगी आपको, या माइनिंग थोड़ा सा पत्थर भी दिख गया आपको, एआई कैमरा इतना है उसका, चारों तरफ से उसको एक कण भी मिल गया, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिनरल, ये गाड़ी ये लेके जा रही है, तो उसकी अपने को वो जरूर 99% केसेस में आपको मिल ही जाएगा। कहीं थोड़ी सी झलक मिल गई एक मिनरल के, उसको मिल गई तो उससे कैप्चर कर लेगा। सर, टू आंसर योर क्वेश्चन सर, सब्सिक्वेंट आंसर आई टेल यू। जब हम कोर्ट में एविडेंस पेश करते हैं, सो मेरा एविडेंस पहला होता है, ये एक इमेज होती है जिसमें मैं ट्रक दिखाता हूँ, दूसरा मैं उस गाड़ी का नंबर दिखाता हूँ, तीसरा मैं उसमें मिनरल दिखाता हूँ क्या था, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसके पास ट्रांजिट पास नहीं होता है, तो मैं उस एविडेंस को दिखाते हुए ये कोर्ट में सबमिट करता हूँ। One more question. I am more interested that monthly reporting for mineral production from any lease or any mine, is it integrated with your software? Yes, sir. So monthly production can be directly linked to the transit pass. No, it is mandated to report this monthly reporting to state government as well as central government agency. So no, sir. Right now, if I say, we are not responsible in giving that data to the state government or the Directorate of Geology and Mining in Lucknow, but we do give the data for the correlation purpose. So what do the correlation means is, whatever transit pass we are capturing through our check gate, we give that data back to the stakeholder of NIC. No, I mean to say that suppose one lease is producing say 1 lakh per month. Yes, sir. And that particular lease also transporting the particular material which is produced from that particular. Correct, sir. Through your this. So is there any integration? That's what I was telling you, okay, sir. Let's say, for example, one lease is issuing a transit pass for 1 lakh cubic meter, for example. 100 cubic meter, let's say, for the sake of saying. So one lease is producing excavation 100 cubic meter and issuing the transit pass of 100 cubic meter. Now those 10 transit pass will be captured through my iCheck gate. So we will report that data saying that we captured these many transit pass. Now these transit pass has the owner of the lease. Lease details are already mentioned in that. So what happens is they correlate the data that 100 cubic meter was being transported. Now
as an exercise on the surveillance, I will say, is that the Department of Geology and Mining in Lucknow, what they are doing is, they are doing periodic survey, drone survey of the lease areas. So based on that, they do the volumetric analysis, and based on our data and the transit pass data and the volumetric data, they try to find out if there is an illegal excavation or not. No, sir, it is not integrated. It is the data we are purely sharing from CheckGate is on the data analysis and to identify the theft. Thank you, sir. Ansari Saab. Ansari Saab. So one more, sir. I'll take the last question, sir. Continue. हाँ सर, इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हम लोग को दिया गया है दैट इज 6 months, हम 6 months तक रखते हैं चालान का. अगर जिसका चालान सबमिट होता जाता है, जो ट्रांसपोर्टर अपना चालान सबमिट कर देता है, वो डेटा हम पर्च कर देते हैं. जो पेंडिंग चालान है या जो ऑनगोइंग लिटिगेशन है, वो जब तक लिटिगेशन ऑन रहेगा तब तक वो डेटा रहेगा. सेम वीडियोस एंड पिक्चर्स. सर वी आर कवरिंग, सो प्रिडोमिनेंटली यूपी में 45 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती है. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द माइंस आर नाउ कवर्ड बाय आवर CheckGate. Thank you, Siddharth sir. Uttarakhand. Sir, we can take the question sir, of the dice also. I will be there to address any questions. Or the maximum queries came from the DMG department only, because they are the हैंडहेल्ड का बता दिया आपने? नहीं सर, हैंडहेल्ड वाला 2 मिनट हैंडहेल्ड वाला बता दो, ताकि मूवमेंट में हम ट्रांजिट में हमारे ऑफिसर कैसे चेक कर सकते हैं. यस सर, उस पे प्रेजेंट. सर एक हैंडहेल्ड डिवाइस हम लोग और देते हैं अपने एमओस को. सो उसमें क्या होता है कि जस्ट इन केस अगर गाड़ी हमने कहीं चेक पोस्ट पे रोकी है, जो चेक पोस्ट हमारा CheckGate नहीं है, सो दे हैंडहेल्ड दिखा देना. सो वो सर वो उसमें एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस शुरू हुआ था यूपी में, मे बी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ होगा या और स्टेट्स में भी हुआ होगा. उसमें क्या था कि जो ट्रांजिट पास बनता था वो फोर्ज होता था, और वो इतना इस ब्यूटी इतने उससे वो लोग फोर्स करते थे इसको कि आप उसको स्कैन करेंगे तो वेबसाइट भी जो खुलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा. जैसे हमारा SBI का जो फिशिंग होता है बिल्कुल सेम उस तरीके का था. हाँ, सो सर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि हमें बात ही नहीं करना है, वी विल नॉट टॉक टू द ड्राइवर. मेरा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो ट्रक की तरफ पॉइंट करके बस ऐसे करके गन को क्लिक कर देगा, और यहाँ पर मोबाइल ऐप में यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वेदर इट इज अ वैलिड ट्रांजिट पास और नॉट. दैट्स इट. आई डोंट नीड टू आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट. सर ये हम लोग का एक टैग हम इंस्टॉल करते हैं ट्रक पे. इस टैग को अगर आप वहाँ से भी रीड करेंगे तो ये टैग रीड हो जाएगा, और इस टैग में आपका ट्रांजिट पास का सारा इन्फॉर्मेशन होगा. सो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो केवल यहाँ से देख के बता देगा कि ट्रांजिट पास लीगल है कि नहीं है. वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगना है इसको. सो वो केवल ये चेक करेगा मिनरल है, माइनिंग से चेक करेगा, ट्रांजिट पास चेक करेगा, चालान करना होगा तो चालान करेगा, आगे जाने देना होगा तो आगे जाने देगा. सर मैं आपके साथ बैठता हूँ. I'll answer all your query. Thank you, Siddharth sir. Thank you so much, sir. This session we had a total 7 different presentations. We started with the basics of AI, and then detailed about the AI, their background mechanism, and we concluded with this CheckGate, its application in the industry. Thanks to all 7 authors, and I have a sincere apology to the authors for cutting their time to maintain this session timings. Now I hand over to Sejal and Prachi for this momento presentation.
I also thanks to my co-chair Chandan Kumarji and Berwa Sahab. Thank you. I would request our session chair, Professor R.P. Chaudhary, sir, to present mementos to all the speakers of the session. Vipul Kochar, sir. Professor K.R. Chaudhary, sir. Abhinav Sen Gupta, sir. Siddharth Trivedi, sir. Professor Sushil Bandari, sir. एक सेकंड, पूरी टीम, चेक गेट्स की पूरी टीम आ जाए भाई. हाँ सर. Okay, I would request Professor Sushil Bandari, sir, to present mementos to our chair and co-chair for the session. We now begin with our second technical session. May I request Dr. Anupam Bhatnagar, Shri D.P. God sir, Shri Kamleshwar Baragama ji for next session, please. आशीष सबके साथ में बोलो. हाँ, सबके एक साथ बोल दो. These are the authors. Be ready for the presentation. The authors for this session. Purohit sir, वो The authors for this session would be Mr. Ashish, followed by MD Shahid Anwar sir, CP Dadid sir, Sudhir Bhatnagar sir, Ankit Tripathi sir, Mitesh M. Umaria sir, and Jaya Maheshwari. Kindly be ready. Good afternoon, everybody. Thanks to organizers for inviting all of us on the dais, for convening the session. Without too much, without any delay in time, I first invite Mr. Ashish for his presentation on the
on the topic of application of artificial intelligence transforming the future of the mining industry. Please, Mr. Ashish. I request all the speakers to have a sanctity of time, because all of you know that the time is very less. So you conclude your presentation in 5 to 10 minutes. Okay. Good evening to all. Respected all the dignitaries on the dais, off the dais, my colleagues and my industry friends who have been sitting down here. And it's been a long time and good managed by the DMG staff and DMG sirs. I respectively thank to Tanwar sir to giving an opportunity to speak on a little bit of light on the how the application of artificial intelligence will be helpful in the mining industry. A mic there. So this is my topic. I am Ashish Kulkarni, working as a mining person in industry from last 19 years. And coming down to the artificial intelligence, it's just a new beginning for an era in the mining industry. So coming down to the topic and coming to the first slide. So just one of the motivator speakers, I can say our PM, whose vision is also how to, where to give a mining a chance of getting an AI in the industry. So I'm not going into this one speech. I'm directly going to this crux of the things what PM also has been involving that key. Yes, in mining industry we got a potential how to implement an AI and make a maximum use of the AI. So the capabilities and all sort of thing, it's been in the mining and how to put the things in right manner in AI. This is the vision, and to grow in a prosperous and competition world, it's been very important that we should practice a little bit, or we should have something in our hand in the mining industry as an AI tool. So my agenda is, I will not stretch these agendas. It has been already been spoke in the early on the statement, starting from the morning. Everyone is speaking on the AI. Just a little bit of view on AI in mining, how the AI will be used in mining, what are the applications, main applications for the mining, and what are the benefits of the AI in the mining, and what are the limitations and challenges that will be in the mining when we are using for the AI, going for the AI. So this is an overview of the AI in mining. So what we can say that, what exactly is an AI? AI isn't always talking that key human being intelligence putting down the data into a machines, and that machines can procure and give the output. So once again we are coming down to the data, how the data and where to data and what exactly data has to be done in AI. So this is how we are putting down a global mining. In global mining also what we are saying that it plays a vital role, means transformation of energy, influencing energy production and putting down into a sustainable thing. So this is the main agent of the AI. So one of the critical slide is how the transition to be done in AI when we are going for the enable in the mining. So these are the 5 major steps. When we going for the mining, when we go to start any sort of mining project, there are a number of things, going for the auction, then going for the feasibility studies and all sort of thing, and getting the block into an operation. So in the same, how AI can be basically come down and make us use in a proper, in our industry. So what's the basically thing is basics. Explore the maximum possibilities. When we are saying about basics, how basics, exploring the possibilities. When we are working for any sort of thing or any project, we encode a number of the possibilities. If is there, not is there. Then put the possibility basics into experimental form. That is called a foundation pillar. That is the second level. Then after taking these two both and integrate both, means possibilities as well as experimental.
And after that, of course, when everything goes in the right manner, then we have to take a decision on a supported manner. And absolutely, an organization where everything has to be put down in a manner and where the money impasse is there, then it depends on the automation. But one thing can be totally said that every transaction in every organization is very different, because right now we are working in every industry, in cement industry. There might be possibilities how coal can be inaugurated and go in this manner. So these 5 things are the basic rules how we can implement the AI in the mining industry. So my major focus will be how the AI can be introduced in the mining. There are 7 to 8 parameters. Dear partner, sorry to interrupt you. We want to have a live application which you are using. Because Sir, this is the basic that only we have, sir, basic. Yes. Right now we are using only 1 or 2 things that I can say verbally. Sir, basically I can just go to benefit instead of going on presentations. Ashish ji, the introduction about the possibilities of AI in mining is everybody has covered. I am saying the practical thing now. Just for the sanctity of time, you just come directly to the point of your USP. Yeah, definitely. Going with the experience and going with the positive impact of how we are going to use the AI, and practically we are use it. A simple thing is preventive maintenance. We are seeing that AI been used and it can be used in every sort, and that can save the time. So one example is that now industry is going with the biodiesel. Instead of using HSD, now we are going with the biodiesel. In biodiesel, what is the basic criteria is that after 48 hours, where it is been every HEMM, you have to check the filters. And checking the filters in 48 hours, if it is not been done, that can seize the engine. That is a major loss. So right now what we have done in our industry, we have made that check plans. Instead of putting that forms in SAP and all sort of thing, we have taken the help of AI, we have put a data in AI, if this machine or this particular HEM is not been fitted or it has not been checked after 48 hours of putting the HSD, biodiesel, it will damage the machine. 2 cases were there in practical, we lost our engine, sir. I can say practically, it was a loss of 2.5 crore. It was in Dalmia, I was working in Dalmia, we lost 2.5 CR. But after implementation of AI, putting the data in a very simulation manner and all sort of thing, right now what I can proudly say that in our field, in HEMM, we got 10 machines. We are using 100% of biodiesel without any disturbance of the engine. So this is one of the applicability and check where I have saved the cost and impacted the preventive maintenance, sir. This is applicability particularly in reference to the maintenance of the vehicle. Maintenance, preventive. But what you are doing in practice regarding mining, yeah, that only. Using technique, have you in presentation? Yeah, that only. It was not in the presentation. It is not in the case. But this has been practically used in Kadapa. I can say you can check the data, sir. We are using Kadapa, and we have set companies near about 2.75 crores, sir. For that, we got an innovation award also. So this is one of the applicability. Other applicability is that when we are using the things in SAP, we got a preventive maintenance, and there are n number of things. I am talking about the HEMMs. So what happens? There are n number of things where most time we left that things, but when we use a data, prolonging each and every activity in a proper manner, we came to know that how we are working and what are the exactly break and all sort of thing. So this has been a practical thing. This has been working, because what happens in SAP, we feed it by our hand, but when the AI comes into tools, you have no escape. What exactly the check get and all sort of we are talking, the same thing we have been implemented. So now the preventive maintenance, I can say definitely whatever 2 or 3 things we have done, it has been practically worked out. So this is what in mining industry we can work it out. Other than that, one thing we can, I am just saying on the case study, when we go for the drillings and everyone was telling about how the core is been done. One thing we can give to our environment is that how can we save the water? Because right now we are going with the drillings and all sort of thing. We ensure that we go with the G1 or G2 level, all sort of thing. We take a sustainability, we do a planning on SARPAC or any sort of thing. When the things has been put down in AI, when we put a data in an integrated manner, I can assure that particular thing where it can be used, means where is the mineral waste, where is the mineral ore. If we are going with that particular thing, we will not only save the machine or HM, we can also save the atmosphere and water. This is one of the things which can practically today we can implement, sir.
So these 3 or 4 factors I can broadly say, instead of going in the presentation, this has been done in my AI and we are practically implemented. So broadly I can say that these are the things we can do it and we can make it the world. So once again, instead of going, I can say conclusively, AI is very good tool, no issue at all. Everyone said pros and cons and everything. But how and when and where to extend that tool with the right manner, it is the thing we have to think as an engineer or as an owner, we have to go with that. Thank you. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, Ashish ji, for your nice presentation and specific example about the HSD. Now I would like to give the mic to my co-chair, Mr. Godsav, to invite. Our next speaker is Mohammad Shahid Anwar. He is manager mining in BCCL Dhanbad. He will be delivering a lecture on monitoring of subsidence due to oil and gas mining using SAR and global navigation satellite system. Please. समय का ध्यान रखिएगा सर. Change the slide, I'll tell. A very good evening to all the dignitaries here. My topic is little bit different from the theme of this conference, but I ensure that I will try to deliver a good presentation. So it's a pleasure to be here. I'm Mohammad Shahid Anwar, presently working as a manager in Bharat Coking Coal Limited. Today I will be speaking on the topic optimization of subsidence monitoring in hydrocarbon reservoir, where a comparative study of geodetic, geotechnical and geophysical methods have been drawn. I will look forward to share insights and would be happy to take queries after the session. So I'd briefly touch upon the topic. Subsidence at ground level is a significant geomechanical phenomenon which is often associated with the extraction of hydrocarbons. So the spatial and temporal evolution of subsidence is because of the 3 factors, namely rate of production, mechanical and petrophysical properties of the reservoir rocks, and geotechnical properties of the overlying strata. It poses a significant risk on the infrastructural damages, ecosystem disruption, and may lead to water resources issue. Thus, its accurate prediction and continuous monitoring becomes a sine qua non for sustainable resource management. So we all know hydrocarbons are formed due to the organic debris being laid upon by the stress of overburden. They rearrange themselves according to their densities like oil, water, and gas. Now these reservoirs are prevented from coming up by two types of layers. Number 1, seals, which acts like a cap and impervious layer, and traps, which are structural deformation that caps in the oil and gases. So the reservoir properties that really determines the subsidence are firstly the reservoir compaction magnitude, the reservoir connectivity, and the presence of aquifers, which potentially prevents the subsidence to certain level, or even on the extraction of hydrocarbons. So monitoring techniques which we have in our hand is INSAR, the acronym for Interferometric Synthetic Aperture Radar. Basically, it sends signals of different wavelengths, and the reflection of the phase difference of the reflected signals are monitored to measure the rate of subsidence. Now, global navigation satellite system, at a particular reference point, we fix a reference point, and on the other where we need to calculate the subsidence,
We measure the differential on those two levels through via the aid of satellites like GPS, GLONASS. Leveling surveys, we all know, which is the gold standards of conducting subsidence. Now, tilt meters and extensometers, which measure the references of ground level depth and angle based upon a reference point. Microseismic activity, it try to warn us before any type of subsidence occurs due to reservoir extraction. Now, these methods, as an individual, how good they seems, but are marred with several defects. Like interferometric synthetic aperture radar may give us wide area coverage and has a high resolution spatial data, but the atmospheric conditions really impact its efficiency. Global navigation satellite system may give us point-based data and continuous monitoring, but the problem is the highly complex infrastructure we need to lay for measuring the relative differential subsidence. Leveling instruments, we all know how tiring and labor-intensive this exercise can be. So what I propose is the amalgamation and optimization of these techniques and how we need to combine them to get the best handy approach. So, as per me, optimal combination of methods for measuring subsidence is INSAR plus GNSS, because it gives a wide area deformation tracking, and also this INSAR issue was corrected, this INSAR problem was connected by GNSS in terms of fault areas, because INSAR gives you upper ground level overlying strata's subsidence. Now, INSAR and leveling, in the Wellington oil field, discrepancy of less than 2 millimeter per year was being observed, which was accurately corrected by the leveling instrument. Now, microseismic activity, if we measure before conducting INSAR and GNSS, we will be getting an early warning system of the subsidence. So, and tilt meters and extensometers will provide us a localized high-resolution monitoring. Thus, I would like to propose that these complex systems needs to be amalgamated so that improved accuracy and cross-validation of each other's software techniques and subsidence monitoring can be validated. Further, early warning system through tools like microseismic activity can be measured, and it will provide us a comprehensive insight to the deformation mechanism of the subsidence. Future directions could be like these, could be fused with the artificial learning and machine learning. This makes them cost effective, and our standardized integrated monitoring protocols can be established with the aid of government. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अनवर। आपने जो कोल माइंस के बारे में, कोल माइनिंग के बारे में जो सब्सिडेंस के में एआई सपोर्टेड सॉफ्टवेयर वगैरह के यूज़ के लिए जो बताया, उसके लिए वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। नेक्स्ट मैं हमारे को चेयर को देता हूँ। Next speaker is CP Dadich. In this session, they deliver, the topic of this presentation is Artificial Intelligence for Mineral Exploration, Perspectives on Further Directions from Data Science. So I invite they summarize there and start presentation. CP Dadich ji is also a critical mineral expert of the department. शुरुआत करते तो आदरणीय निदेशक महोदय श्री दीपक तंवर साहब और प्रोफेसर भंडारी साहब और डीएमजीआर के सभी सीनियर्स और जूनियर ऑफिसर और एमईआई के ऑल मेंबर्स, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द एआई यूज इन दादिश साहब आपको 5 मिनट में मिनरल एक्सप्लोरेशन. Actually, mineral exploration is a very tedious task to stabilize a resource and reserves of any metal or any mineral. So, if
AI, much not using that time AI in mineral exploration, but in future we will more acquire knowledge and adapt to mineral exploration. The geologist job is some tough job in old days when जियोलॉजिस्ट फील्ड में रहता था, वो कैंप लगा के रहता था, बट अब थोड़ा जियोलॉजी एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स इस्टेब्लिशमेंट में न्यू टेक्निक्स आ गई, जियो फिजिकल हो चाहे एयरबोर्न सर्वे हो, तो इससे क्या होगा कि जो वर्किंग होती है, जो पहले बहुत टाइम लगता था रिसोर्स इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन वो कम हो रहा है. तो अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पे इसका यूज कर रही है. अभी हमारे निदेशक महोदय के निर्देशों में अभी एआई के लिए 2 जिलों का किसी हैदराबाद की कंपनी है क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर, उसको प्रोजेक्ट दिया था, पायलट प्रोजेक्ट. फर्दर अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो वी प्रोसीड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. वैसे मिनरल वेल्थ में राजस्थान इंडिया में टॉप मोस्ट माइनिंग सेक्टर में लीडिंग स्टेट है. यहाँ पे वेराइटी ऑफ मिनरल्स 82 टाइप्स ऑफ मिनरल रिपोर्टेड. Out of 82, 52 mineral mine out. I am not taking much time about AI. मेरे पूर्व वक्ताओं ने AI किया होता है कि कब आया, ये सब बता दिया है. मैं शॉर्ट और स्वीट में बता देता हूँ कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में ये राजस्थान का जियोलॉजिकल मैप है. यू कैन सी द राजस्थान जियोलॉजी इज surprised geology in all over India, where we getting Archean to recent blown sand, like in BGC. Like in BGC in Bhilwara and Badmer, Jaisalmer, where we get blown sand, that is a recent. The AI is a simple thing. Last line is showing the science and engineering of making machine. That is called AI. And in the Department of Mines and Geology, both are very experienced, science, geology, and engineering, mining engineer. So we already have AI. That's okay. AI का मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज कैसे हो सकता है, क्योंकि नाउ डेज सेंट्रल गवर्नमेंट और एनीवेयर द डाटा शेयरिंग पॉलिसी ना हो, तो अब क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कितनी भी एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो लाइक MECL, GSI, AMD, तो सबके डाटा एक जगह गैदर्ड है, तो उनको यूज करके अपन मिनरल एक्सप्लोरेशन में अच्छा इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. Some stages of exploration, first geological, and that is the planning for to scale up project. Yani each and every step a very hard work for all reserve estimation modeling. So we wish that AI will more helpful in mineral exploration. This is a flow chart. First we data collection, processing of normalization, feature extraction, model building, and that is thing. This is a flow chart. How can we data acquisition from geological data? The main mineral exploration data के लिए geological का reliable data चाहिए, otherwise input zero हो जाएगा. AI क्या करेगा? AI तो जब उसको results अच्छे होंगे, एक reliable data provide होगा, data set है, reliable होगा और field truthiness होगी, तो कहीं जाके एक अच्छा मॉडल बनेगा और वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज होगा. अभी दिस मैप आई एम गेटिंग फ्रॉम GSI, दे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा द commodities वाइज मिनरल डिपॉजिट्स दे मार्क ऑन द जियोलॉजिकल मैप ऑफ राजस्थान. This is a derivated map where geophysical, geochemical, airborne, geomagnetic, all data used, and the middle of the part, north to south, this is the Badmer Graben, where in Shivana Ring complex, where we stabilize more deposits of HRE, and in Dandali, Sarnu, Kamtide, where RE deposits in carbonatite. So this map is indicating the all combined data, and it's a hybrid map, derivated map. Like this is showing the Shivana Ring complex.
So this map is generated by much of data, geochemical, geophysical, airborne. So in future we can in a short duration establish new mineral resource in Rajasthan. Recently I got this book. GSI ने अभी इसका AI का यूज करते हुए लगभग 200 प्रोजेक्ट्स स्टेबलाइज्ड in all over India. So the much data, much accuracy, get very fast exploration and establishment of resource. Challenge भी है इसमें, needs for standardized data formats, skill development among geoscientists, annotated data for training modules, much more. Future roadmap, establish AI task force in DMGR. Some geologists will prepare for this work in future. Collaboration with IIT, ISROs, tech partnership, and many more things. Recently, the NGDR data, where all India's data in a one platform, this is created by Geological Survey of India, where we get reports, maps, and all things which from established GSI to till today. The AIL ML transforming DMG mineral search operation efforts underway across multiple domains. Thank you. थैंक यू वेरी मच सीपी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है इसमें एक्सप्लोरेशन में राजस्थान में क्या नए स्कोप खुलेंगे, ये इसको यूज़ करने से आप क्या संभावना मानते हैं? बाड़मेर और जैसलमेर एरिया सैंड कवर्ड है, ठीक है, 70% एरिया सैंड कवर्ड है, तो सैंड ड्यून्स के नीचे भी मिनरल्स है। इन फ्यूचर वी प्रूव्ड इट and that's new resources developed with the help of new integrated data. Thank you very much. Thank you, Dadi sir. Now I would like to invite my friend Sudhir Bhatnagar, senior geologist, retired from DMG, application of AI with remote sensing in mineral exploration. Sudhir ji. Good. अच्छी बात की है, सही। Yes, Sudhir ji sir, please start. Good evening. Very simple and very modest presentation on a very complicated topic, but I will try to make it simple. And this is all about, I will continue with the practical work I have done in the field of AI and machine learning and remote sensing. पीपीटी कौन चलाएगा? पीपीटी कहाँ है? आपको दी थी ना? तो बताना पड़ेगा कौन सी वाली?
Sorry, there was a little glitch. So, very simple and this modest. Next. Now, I am not taking the introduction part. I am first taking though it is all about remote sensing. Why we use remote sensing in mineral exploration? This is the benefit of mineral exploration through AI power remote sensing. Now, I am not going to discuss about the machine learning and predictive modeling anomaly. I am directly going to practical aspect. So, what are the data used? I have mentioned here. Mic chal raha hai? नहीं मेरे को ये पॉइंटर चाहिए So, first I am taking the machine learning and the flow chart for the machine learning in the identification of limestone. This is the flow chart. First we have to download satellite data. ये नहीं चल रहा है क्या? First we have to download the satellite data. Then satellite data need to be, we remove the noises because raw data have lot of noises. Then we do the layer stacking. Then we extract the area of interest, selecting training classes, and then training classes of limestone, amphibolite, and what are the classes of the lithology. Next, this is the process, what I have, according to the flow chart. This is the satellite data. Satellite data look like this. This is the area from where it is belongs to the satellite, and this is the area of interest of the area of interest of the steady area. And now the steady area is extracted like this because segmentation is a part of this machine learning. Large data will give the error in choosing the training classes. So, in the first stage of supervised classification, I have selected the training classes for, this is the mining. Mining used to be seen very bright in color and white in color. Amphibolite is red in color in the band number 741, and blue is typically limestone. And this red and blue mixture is calc silicate, an impure limestone. And this is the frequency and wavelength ratios of the individual mineral. Now, on the using this spectral signature and training classes, how the image is classified into limestone, amphibolite and granite, I have demonstrated practically. This is the original image, and this is classified image according to the training classes. In the limestone, calc silicate, amphibolite, granite, and mining pit. It has done beautifully, because as if you go in the field, we will never see the demarcation between the limestone and calc silicate. It is all one. So, and next part is for the classification is the field visit. We have taken the sample from all these locations, and all the sample are found chemical grade and non-chemical grade were put in the calc silicate. Next is how to identify base metal. See, similarly, the one project I have done in the Nepal for the base metal, and image was downloaded like this. Because the mineral was the epigenetic type, so I have mapped all the lineaments from where the possible hydrothermal solution flows, and these are integrated. By integrating all this layer, I have made the prediction of this where the identification of the favorable locale of the mineralization of base metal. So,
field team has gone there and found it is a Gosan, malachite stain and oxidized sample of the base metal. Next is a demonstration of unsupervised classification in the machine learning. This is the flow chart. And how it is done, I am going to demonstrate. First, like my fellow colleague has said, NGDR and NGCM. This is the NGCM data. I have downloaded from NGDR. This is the geochemical data. GSA done geochemical mapping. This all one dot represents the 1 kilometer apart. In the grid pattern, they have sampled for 63 or 68 minerals. So in this case, for the demonstration purpose, I have taken the lithium mineral. So I have plotted this data for the concentration of lithium element. So we have found anomaly at this point and this point. And from NGDR itself, they have OGP, they provide a OGP layer. This is in black color, which for the lithium mineral. So at this end, if this end is OGP, then the distal end is also OGP for the lithium mineral. So how to correlate this thing? So this is the OGP layer superimposed on the satellite image. So we can see one band is running like this. So we have to map this band for the lithium mineral possible source of lithium. So in the first step, contour map has been produced for the mineral having 40 ppm concentration of lithium. Now this respective satellite image is classified in unsupervised, classified into 20 classes, and smaller pixel are being sieved and then vectorized. Then in next step, what is done? The vector layer superimposing the possible source of lithium is superimposed on the image. And these yellow spots are the possible source of lithium. So for qualifying, since the sample are from the stream sediment location, the stream is an important element. A favorable local of lithium deposit must qualify having source of mother rock in the upstream and the lithium concentration in the downstream. So we have to plot streams also. For plotting the stream, this is the DEM of the area, and from DEM, stream of this area has been located, because from the stream only all the sediment from where the lithium samples has been collected. So this is. Sudhirji, please. Those slides are. So this is the composite map in which we can see here. Here is a lithium concentration, lithium containing more than 40 ppm, and this red all the spots which are connected with the stream and going down to the yellow spots are the lithium bearing channels, and red spots are the possible source of lithium mineral. So we can go in the field. This is another project I have done for Brazil. This is a lithium lease, somebody's lease, and I have made the potential area for this. This is a land cover map. I have used a supervised classification. This is the leasehold of some area, and I have trained these classes and get this classified. This is the change detection map for the given period of time between the two set of different set of data. Thank you. Thank you, Sudhirji, for nice presentation. Now I would like to invite Mr. Ankit Tripathi, Head Digitalization of SK Mines, Hindustan Zinc Limited.
on AI in mining at HZL. Good evening, all. Myself, Ankit Tripathi. I am representing Hindustan Zinc, and I am very thankful for MEIA to help us to present our case in this form. And once again, good evening to all. So myself, Ankit Tripathi, I am heading digitalization at SK Mines, Hindustan Zinc. So I will quickly go through what are the work we are doing with respect to digitalization and artificial intelligence at HZL. So with respect to overview, if you can see, you already know that these are the areas where Hindustan Zinc is present across Rajasthan. So these are the processes of Hindustan Zinc that we are into mining, then smelting and zinc ingot and diverse application with respect to zinc and lead and silver. So coming to the digitalization journey, so we have started our journey in 2018 from very small 4-kilometer of Wi-Fi network. Through that we are taking Wi-Fi communication at RAM. We were monitoring health parameter of machines. Then slowly we have moved down from 4-kilometer to right now at 60-kilometer of Wi-Fi network and as well as leaky feeder communication network for safety people. Then we have moved to, in 2021, we have moved for the first phase of digital transformation in which we have opted the optimized solution of Sandvik so that we are, whatever data we are getting from Wi-Fi, this being communicated to this platform and then to the optimized server where we can get the result of this telemetry or then we have moved into the tele-remote operation of loader, drills, surveillance, then again advanced hauling, and now right now we are focusing into the centralized operation of mill and mines. So these are the some operation where we are majorly focusing. So I will quickly go through a very simple architecture what we are doing. So if you see at the beneath, these are the underground vehicles which the underground vehicle data is being communicated to multiple Wi-Fi access point of Cisco in underground. And then these data is being transmitted to Cisco core network. And then from Cisco core network, it is going to optimized server. And from optimized server, we are taking the vehicle, we are doing the vehicle tracking, we are doing the people tracking. We are getting all Sandvik fleet telemetry data so that we are monitoring each and every vehicle health parameters. Then we got the last 24-hour alerts, and now we are into the remote drilling. So we are doing the drilling operation during smoke hour. So through that we are utilizing the smoke hour period for the drilling. So these are some example of telemetry data of what we are getting into the solution. So these, again, we have taken all the data into a OSI platform where we can store all the data and do the further analytics so that each and every person across the mining can see the data over mobile. Then these are some graphs where you can see that what is the vehicle, at what time he is operated, at what time it is idle, and at what time it is non-operational. Through that, we can track each and every vehicle utilization. And then we can track idle time so that we can talk to the operators that why this much time period it is idle. We can talk to the OEM business partner, how many time machine was idle or on the down period, so we can track the breakdown hour also. Then this is one of the use cases of artificial intelligence in mining, where we are exploring, we are sending all the
drilling data into the solo directly from surface through Wi-Fi network we have. So this is the solution of Drill Connect, Sandvik. So we can, we are solving that many times we do the drilling into a stop, many of the material goes in vain and we will not able to recover that. So there is a major challenge for the stop recovery. So through that we can track plan versus actual drilling, and then we can plan for a optimized blasting. Then this will help. So now this will help us in improving our stop recovery and then not losing the precious metal into the earth. The major challenges here, that is that we have to implement Wi-Fi network across the mine. Then this will lead to high implementation costs. And again, which we have discussed here, this precise planning, it is very much required for this kind of jobs. Then again, with respect to similar to the production drilling, so there is a major challenge in the production development drilling also, where we are losing on the overbreak. We are overbreak, then we are having we have to improve our drill accuracy, how we can achieve our optimal blast, and how we can reduce the underbreak and increase the rate of advance. Here we are referring to the pull per blast. So through this technology, we can improve our development drilling also and reduce waste generation. And again, we have implemented predictive sensor in all our mines and mill equipment. We are tracking almost 102 vehicle equipments daily. Through this, what we are doing, we are having a predictive analysis of each and every equipment. In case of failure, they alarm us so that we can reduce the maintenance time, and in thus that we can improve our production. Again, these are some example of tele-remote operation. So this is one of the example where we have operated, or we are operating our loaders from surface. So this is at SK Mines, and you can see that the person is operating the loader from surface. Again, this is again example of loader remote loading operation we are doing at Rampura Agucha Mines. And you can see that there are multiple camera through which operator can basically help us to operate safely. And then we have implemented virtual reality in our training part also, where we can train our shaft operator, skip and cage operator, so that they can train beforehand before they actually goes into the real applications. So this is made on the real scenario, and each and every shaft, skip, interlock is being embedded into that, and they can feel that at which speed they have to operate, at which speed this skip will be automatically stopped, so that during the operation that can work safely. Again, this is the same thing. So this where we are implementing AI in safety supervision. So this we have worked in collaboration with the Detect Technology, which is one of our Spark vendor. So if you see, there is an example that this one person has came without helmet in the underground. So the AI has quickly detected that and reporting to the observation in the dashboard. Similarly to the almost 10 to 15 types of safety alerts and safety standards has been implemented into the solution, and through that we are regularly receiving the observation, almost 300-400 observation we are getting daily, and which is being acted upon by the area in charges. So we are mainly focusing into the safety triangle, where we can more and more detect the unsafe act and unsafe conditions, so that we can ultimately reduce the fatality at the operations. These are some new cases, upcoming cases where we are working, like underground traffic management, how we can predictive model for mining process, which will be completely integrated, how we can add collision avoidance system inside the mines, where we can make place more and more safer for people as well as equipment.
Then we are thinking of a Wi-Fi blasting so that the person can blast from the surface. And drone scanning of the stove. Right now we are doing through the CMS, where people has to go and do the scanning, and many part of the stove got missed, and we are not able to do the proper planning. So drone scanning will help us. So there we are looking into that. Then we want to do a more and more VR-based training module, and then AI enabled advanced supervision. So these are, and more or less geology, geotech. These are the use cases where we want to do more work. So thank you all. Thank you for your patience, and thank you for allowing us. Thank you. Tripathi ji, I am asking you one question. Yes, sir. ये AI का यूटिलाइजेशन करने के बाद में इसमें कितनी कॉस्ट का रिडक्शन आया है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में? So basically, sir, in case of solo, if we see that last year our target was to drill 9,000 meter per month, where we have achieved almost 7,000 against 9,000 target, which is around 104 crores saving. अच्छा, ये जो आपने एक बात बताई थी कि हम AI का यूज़ करके वेस्ट प्रोडक्शन में रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप ये जो एक प्रीशियस मेटल्स का भी आपने बोला था, तो उसको कैसे आप सैम्पलिंग करते हैं और किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग और डाटा लॉगिंग करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं आप. Sir, right now sampling is completely manual, sir. So what I was discussing with respect to the solo. So how we are doing that, if we do plan versus actual track, then we can optimize our blast accuracy. Then we don't have to extra blast to get the unrecovered metal. And sometimes many of the stop only get recovery of 95%. So 5% we stop, we have to again, the 5% of metal got in vein, and we have to backfill because we are doing the pillar mining, so we have to backfill again. So that in that, if you see that whenever we are mining silver, zinc and lead, silver comes with it. So I am referring to the loss of silver. Loss of silver कैसे? So if we suppose 5% of metal got left in that, so that 5% metal having a zinc, lead and silver, so that I am referring to, sir. Because we are not able to do again blasting in that phase, and that is already marked. So we have to do again filling, and then we have to take the parallel. So then that. It means there is no result-oriented issue by AI in recovery of the overall ore resources. So that area, because this was previously it was happening, sir. Right now, what we are focusing, if we adopt this technology, we can achieve more stope recovery. From 95%, we can go up to from 98%. So that we are not 100% again. So this. Right. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now our next speaker is Mr. Mitesh Umaria, DGM Mines Lignite Project, Rajpardi. His topic is 5 transformational use cases of mining AI. Please be in short within 5 minutes. Thank you. Good evening all. मेरा नाम M.M. उमरिया. I am from GMDC, and thank you very much for the hosting. आपने इतना अच्छा जोधपुर में मुझे वेलकम मिला, और इतने अच्छे माइनिंग के लोग हैं यहाँ पे है, मुझसे काफ़ी सीनियर्स है, काफ़ी जानकार है, और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट है जो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे के गए. बेसिकली मैं 27 साल से माइनिंग में ही काम करता हूँ. मैंने कोई एकेडमिक ऐसा कुछ है नहीं, मगर मुझे कुछ ना कुछ सोचने का, समझने का, ये सब नई टेक्नोलॉजी सुनने का और देखने का मन होता रहता है. जब ये टॉपिक
AI जब सुना ना तब से मैं सोच रहा था, जब चैट जीपीटी आया ना तब से मैं देख रहा था कि माइनिंग का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग को AI के साथ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ हो सकता है, ये सब मैं देखता रहता था। मैंने अपने बॉसेस को भी बताया, ये लोग बताते थे कि ये सब नहीं हो सकता है। मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि अभी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और माइनिंग, जैसे BL थरेजा मैंने पढ़ी थी, मेरे सीनियर ने भी पढ़ी थी, और आजकल के बच्चे को मैं पूछा तो BL थरेजा को ही पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा देखा गया है, मेरा मानना है कि माइनिंग जो यहाँ के जितने मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है उसकी जननी माइनिंग है। मेरा मोबाइल माइनिंग का देन है, मगर बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर या फिर माइनिंग टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स एंड डंपर की टेक्नोलॉजी से आगे और नहीं बढ़ पाए। एम आई राइट और नॉट? बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, मगर सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ यही है कि एक्सकावेटर एंड डंपर कॉम्बिनेशन। हम लोग बेसिकली माइनिंग इंजीनियर, एज ए मैनेजर मेरे पास में बहुत सारी चीज़ माइनिंग के सिवा भी बहुत करने की रहती है, और जब मैं देखता हूँ कि बेसिक मेरे अंडर में जो काम करने वाले वर्कर्स है वो सेफ रखना जो मेरी बेसिक ड्यूटी है उसको मैं कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता हूँ। तो माइनिंग में किस तरीके से कर सकता है, तो उसको मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछा। उनकी छोटी छोटी कंपनियों में उसके सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए बहुत सारा वो लोग एडवांसमेंट करके रखे थे, मगर माइनिंग में मैं नहीं कर रहा था, मेरी कंपनी नहीं कर रही थी। तो यही चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से सॉरी, मैं ज़्यादा कोई टेक्नोक्रेट नहीं हूँ ये सब चीज़ों में। तो ये सब आज मैं विजन AI के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड को मैंने पूछा जो AI का बहुत अच्छा जानकार था, बोला कि जो कैमरा में आप कैप्चर कर सकते हो और आप दिमाग में सोच सकते हो उसको AI को दे दो, वो आपके लिए करके देगा। तो विजन AI यही है कि उसको ट्रेनिंग दो, एज डिवाइस पे देखो और फिर या क्लाउड पे उसको ये करो, एक एप्लीकेशन बनाओ और आपके लिए सॉल्यूशन करके देगा। कैसे? ये कैमरा कैप्चर करेगा, इसको प्ले करो ना। एक छोटी सी इंडस्ट्रीज में है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 आदमी लोग है, एक विदाउट हेलमेट है, दूसरा हेलमेट निकाल दिया, इसके शूज को मैं कैप्चर कर रहा है, जैसे हेलमेट पहना तुरंत आ गया इंडिकेशन। अगर बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर या एक मैनेजर को ये चीज के लिए आइडेंटिफाई से हो जाएगा तो एक मैनेजर के लिए ये हो जाएगा कि भाई ये चीज तो इसके निकल जाएगा कि भाई ये तो मेरा एक पार्ट टेक्नोलॉजी कवर कर रहा है। ये शूज का ये है, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है, उसको भी हाँ, वो कोडिंग किया। ये जो जोन 1 में अगर आया, इसने हेलमेट निकाल दिया तो ये हो गया। वहाँ की वो इंडस्ट्रीज में, यानी कि वेल्सपन करके इंडस्ट्रीज है, उसके बस में कैमरे लगा के रखे हुए हैं। जैसे ही 1 घंटा पहले उसके बस में जैसे आदमी लोग चढ़ते हैं उसका इमेज कैप्चर करके ले देता है और मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर के पास में पूरी की पूरी मैन पावर लिस्ट आ जाती है और वो मैन पावर लिस्ट के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन भी कर देते हैं और वो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता है। तो बीइंग ए इंजीनियर या शिफ्ट इंचार्ज के लिए ये बहुत ही इजी चीज हो जाता है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि माइनिंग एक बहुत ही हजार्डियस इंडस्ट्रीज है। छोटी छोटी बातों पे, छोटी सी ना जैसी चीज़ों पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक माइनिंग इंजीनियर के लिए वो हैंडलिंग करना
वो सबसे डिफ़िकल्ट है। और इसको कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे प्लीज़, ये मोटर ग्रेडर है, उसको कैमरे के साथ में उन्होंने LND में इंटीग्रेट कर दिया है। पीछे में गाड़ी है, उसको तुरंत सेकंड अलार्म एक्टिवेटेड। बस 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 भाई। नेक्स्ट कितना। तो मैंने वहाँ पे अपने क्या क्या यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि माइंस में बहुत सारी चीज़ है, जैसे सम्प एरिया रहा या फिर कुछ मूविंग या पार्ट रहा, उसको अगर कैमरे के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाए और AI की मदद लिया जाए, तो कोई भी आदमी अगर डेंजर जोन में इंटर करता है, तुरंत माइन मैनेजर को या फिर इसके सुपरवाइज़र को अलर्ट मिल जाए, तो एक पार्ट उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आदमी को भी जान बच जाएगी और मैनेजर भी बच जाएगा। माइंस एक इतनी बड़ी चीज़ रहती है, वो एक छोटी फैक्ट्री नहीं रहती है, बहुत बड़ा एरिया में रहता है और उसमें डीजल रहता है, स्क्रैप यार्ड रहता है, बहुत सारी मटेरियल, प्रीसियस मटेरियल रहते हैं। अगर वहाँ पे अगर ये कर दिया, एक मिनट ये इसको प्ले कीजिए। Mr. Umaria, please. Yes. We are running short of time. Thank you. ये तो आदमी तो गिनते हैं, मगर जैसे जैसे ये एक टैंक जाती है, तुरंत इसमें कितने कितने टैंक्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक मैन्युअली भी होगा और मशीन के थ्रू भी हो जाएगा। तो एक माइनिंग इंजीनियर के लिए या फिर एक माइंस के लिए डीजल चोरी करना या फिर स्क्रैप पे या ये सब के लिए भी। नेक्स्ट। एक सम्प माइंस में, जैसे माइंस एरिया रहता है, सम्प एरिया बहुत ही बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है। सम्प भर जाना, सम्प टूट जाना या फिर ट्रेलिंग वेस्ट, अगर उसमें लीडर बेसिस पे अगर किया जाए तो माइंस में या फिर कोई भी ट्रेलिंग ये है गेट है, ट्रेलिंग वेस्ट है, उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे कि माइंस में ओर और डंप दोनों को अलग अलग बहुत नज़दीक जगह पे किया जाता है। अगर कोई डंपर को इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए तो ओर वाला डंप ओर में जाएगा और वेस्ट वाला डंपर वेस्ट में जाएगा, ये भी हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्टली बेल्ट कन्वेयर, जहाँ से माइनिंग का पूरा लोड आता है, अगर उसको वाइब्रेशन और ऑटोमेशन किया जाए तो कितना मटेरियल आया है, बेल्ट की कितनी लाइफ है, क्या उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग AI के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूज केसेस ऑफ माइनिंग जो हम लोग कर सकते हैं एज ए माइनिंग इंजीनियर तरीके। थैंक यू वेरी मच फॉर दी लिसनिंग टू मी। Thank you, Mr. Umaria. Thank you. Now I would like to invite Ms. Jaya Maheshwari of BE Computer Science of MBM University on the topic of integrating AI and drone for safer and optimized. आगे कुछ है नहीं. It is misprint now. Please, Jaya, finish in 5-7 minutes. Thank you. Good evening to everyone. I am Jaya Maheshwari, third year CSE student from MBM University. Today, my topic is integrating AI and drones for safer and optimized mining operations. We all are aware of the operational challenges that mining industry is facing right now, like inaccurate terrain, risk to human surveyors, delay in analyzed results,
and regulatory audits which are provided to the government officers, which has to be done by any company. So how can we use drone with AI to make the automation in our mining industries? Like weekly or daily scans which has to be done can be done through the drones. Surveillance can be done from it. LiDAR imaging can be used to create the 3D maps, which can be used for digital twins and all, and to detect the slope, and also for the detection of overdigging and underdigging. Along with drone, AI can be used with the combination, obviously, like fragmentation analysis can be done after the blasting process, and volume calculation can be done using the LiDAR system. Prediction can be done through the historical data, and detection of machine idle time and its capacities. Like drone and AI, when combines, it gives a vast change to the mining industry. So the question is, why AI and drone in blasting? Like right now in traditional method, manual blast design is done through the empirical formulas, which can be replaced through the prediction, and safety risk in pre-blast and post-blast can be done using the drone surveillance. Inconsistent fragmentation can be reduced, and delayed feedback loops and lack of real-time data problem can be solved. In open pit blasting, there are 3 phases like pre-blasting, during blasting, and post-blasting. For pre-blasting, it can be used to create the heat maps and to create the 3D terrain models. For during blasting, flying trajectories can be identified, and the dust ejection can be noticed. And for the post-blasting, fragmentation and mud pile detection can be done. Same for the underground, AI and drone is so much useful, as for pre-blasting, we can detect the map cavity. For during blasting, drone can be used for like surveillance and also for the sensing of vibrations. And for post-blasting, it can be used to detect the overdigging and underdigging of rock. So by my suggestion, how can we implement it in the real mining? Like identifying one mine zone for pilot only, and then train the staff for the drone and dashboard. Then we can combine the outcomes and scale to other pits. Like we can scale it to the other areas also. And then the model will be trained on that historical data. And the data that is collected will be used for more optimized results. Dashboard can be created for the managers, which can be in the offices used for aerial imageries, 3D model, alerts, which will be live on the dashboards. Daily summary report can be analyzed, and mobile access for on-site manager will be helped to increase the efficiency. Decision making powered by live and historical data, which is the main part of collecting the data. For safety and environmental purpose also, we can use drones to detect gas leaks, smokes, fire zones, etc., to monitor the worker distribution and risky movements, and also ensuring the blasting zones are cleared in real time. Automated logs are complemented with it. Now, what is the return on the investment? We can use the drone and AI to increase the operational efficiency, reducing the cost, improve the worker safety and reliability, and clear digital trails which will be not biased. For the future scopes, there are 3 points, like autonomous drone for underground also, and the mapping for the open pit also. Expansion to multi-mine, like combining the data of the multi-mine can help us to get more valuable insights. And integration with digital twin models, which will be used for the simulation in real time. So that's
that's all about me. And I really thanks Sushil sir. He guided me for all this process, and Mind Excellence team also for like resource and tools. Thank you. Thank you, Jaya. Now, we concluded with this paper, we conclude this session. There were 7 papers, and all were very nicely presented. So I hand over the mic to Jaya, the the host of the ceremony, to further deliberations and further events. I request all the speakers to please come up on the stage and take their mementos from the panel. I wrongly announced the name. Ashish, sir. Sejal is there. Thanks. CP. And Sejal, very nicely you are organizing these things. A big clap to these fellows. CP Dadid sir, Sudhir sir, Mitesh sir, Shahid sir, Jaya and Ankit sir. अरे ठीक है, लास्ट कुछ नहीं है। बोला है, बोला था मैंने तुमको। एक और ये भी ले जाओ। I now request Deepak Tawaser to kindly present the memento to our panel. अरे ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। With this, we formally conclude the session. We extend our sincere gratitude to all the distinguished speakers, dignitaries, and attendees for their valuable time and enriching contribution. We now request you to kindly proceed to the dinner venue. Thank you.